આરોગ્યનું વરદાન આપતા ભગવાન ધન્વંતરીનું મહાપૂજન ધનતેરસને દિવસે કરવાની પરંપરા અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે. આયુર્વેદ અને યોગનો પ્રાચીન વારસો આખી દુનિયાને ફાયદો આપે તેવી જહેમત પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઉપાડી છે. આ દિવાળીથી ધનતેરસની ઉજવણી રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસ તરીકે કરવાની જાહેરાત થતા દિવાળીના તહેવારમાં ઉજવણીને નવું કારણ મળ્યું છે. આયુર્વેદ ભારતનું પ્રાચીન જીવન વિજ્ઞાન છે. આધુનિક સમયમાં અનેક એવી બીમારીઓ છે જેનો ઈલાજ મેડિકલ સાયન્સ પાસે ઉપલબ્ધ નથી. આવા સમયમાં ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહર કહેવાતું આયુર્વેદ લોકોને નિરોગી અને તંદુરસ્ત રાખવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બની રહે છે. ત્યારે આયુર્વેદને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલય દ્વારા દર વર્ષે ધનતેરસના દિવસને રાષ્ટ્રીય આયુર્વેદ દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ વર્ષે 28 ઓક્ટોબરના રોજ આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. ભારત સરકારે જ્યારે આયુર્વેદ દિવસ જાહેર કર્યો છે ત્યારે આપણે એક સુંદર શરૂઆત કરી આયુર્વેદ દિવસની, અને એ આપણે એક દિવસ માટે કરી શકીએ, અઠવાડિયા માટે અથવા આખા વર્ષ માટે થોડો સમય આયુર્વેદને આપણે અનુસરણ કરીએ અને એના ફાયદાઓ લઈએ. આજે આપણે ચિકનગુનિયા, મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ આ બધા રોગોથી ખૂબ પીડાઈએ છીએ. સ્વાઇન ફ્લૂ જેવા ઇન્ફેક્શન્સ થાય છે. પણ એ થાય છે શું કામ? કારણ કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ, જેને અમે આયુર્વેદમાં બલ કહીએ છીએ, એ ઓછું થાય છે અને એના કારણે આપણી ધીરે ધીરે રોગો સામે અથવા તો વાયરસના લડવાની ક્ષમતા ઓછી છે. આયુર્વેદમાં એવા રસાયણ તત્વો છે, એવા દ્રવ્યો છે કે જે આપણને એનાથી બચાવી શકે છે, જેમ કે ગળો છે, તુલસી છે, આદુ છે, ફુદીનો છે. આ બધા દ્રવ્યોનો નિત્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણે એનાથી બચી શકીએ છીએ. મને આજથી 1 વર્ષ પહેલાં પેશન્ટ જોતી હતી, એમાં સ્ટ્રેસ રહેતો હતો. ઘરનું બધું મેનેજમેન્ટ કરીએ એમાં પણ સ્ટ્રેસ હતો, એટલે થોડો અનિદ્રાનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હતો. મેં હેતલબેન પાસે શિરોધારાની ટ્રીટમેન્ટ લીધી. ટ્રીટમેન્ટ લીધા પછી મને મારું મન એકદમ શાંત થઈ ગયું, નીંદર સરસ આવે છે અને મન પણ પ્રફુલ્લિત રહેવા માંડ્યું. અને સાથે સાથે મેં મેડિટેશન, સમર્પણ મેડિટેશન કર્યું. એનાથી મને ઘણો ફાયદો લાગે છે. આજે આરોગ્યનું વરદાન એ વિભાગમાં આપણે સમજવા માટે વેચીએ કે એક તો છે ને એવી આત્માઓ કે જેના માટે મા અને પિતા બંને તૈયારી કરી હોય, એટલે કે એ એવી આત્માઓ કે જેને આમંત્રિત આત્માઓ કહેવાય, જેના માટે જેમ મેડમે કહ્યું કે ગર્ભધારણાના 6 મહિના પહેલાંથી તૈયારી કરે. હવે એના આધારે એમાં થોડી આધ્યાત્મિક તૈયારીઓ પણ એમને કરવાની હોય છે કે જેનાથી એના વિચારો શુદ્ધ રહે. જેમ કે જ્યારે બાળક જ્યારે માના ગર્ભમાં હોય અને જ્યારે એમ કે ને 4 મહિનાનો હોય ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે જીવ પડ્યો. હવે જ્યારે બાળક માના ગર્ભમાં આવે છે એ સમયે જો માએ એવો વિચાર કર્યો કે અત્યારે તો હું ખૂબ વ્યસ્ત છું, અથવા અત્યારે મારે આની જરૂર નહોતી, હજી મારે ઘણું બધું કામ છે, એવો કોઈ પણ નકારાત્મક વિચાર કર્યો તો બાળક તો શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે, એને તો કોઈ વિચાર નથી એના સુધી. માનો સીધો વિચાર એ બાળક સુધી પહોંચશે અને બાળકની સફળતા ત્યાંથી જ રૂંધાઈ જશે. એટલે કે માએ ખૂબ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે કે મારે ત્યાં એક પવિત્ર શુદ્ધ બાળકનો જન્મ થઈ રહ્યો છે, તો મા પણ એ સમયે સકારાત્મક રહે, મા પણ એ સમયે ખૂબ એક સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા રહે અને બંનેની તૈયારીઓ કરે. બંને જો સાથે મળીને તૈયારીઓ કરે તો એ થયા એ આમંત્રિત આત્માઓ થઈ. મેં કીધું ને, વાતાવરણમાં બંને પ્રકારની આત્માઓ છે. તો આપણે જો ઉચ્ચ કક્ષાએ હશું, આપણે સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા હશું તો આ સારી એનર્જી આપણે ત્યાં આવશે ને. આપણે જ જો સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા નહીં હોય તો પછી એ આત્માઓને આમંત્રિત નહીં કરી શકાય. એક વસ્તુ એ થઈ, એક પાર્ટ એ થયો કે એ સારી અવસ્થાએ સારું ધ્યાન કરીને બંને પોતાની એક સારી અવસ્થા બનાવી રાખે. બીજું કે એ લોકો છે ને વાતાવરણમાં એક ઉચ્ચ કક્ષા પર છે, એ કક્ષાએ એમને પ્રાર્થના કરવી પડે. મા અને પિતા બંને પ્રાર્થના કરવી કે અમારે ત્યાં એ લોકો આવે, પ્રાર્થના કરે, એમને ઇન્વાઇટ કરે. એટલે મેં કીધું આમંત્રિત આત્માઓ એમને ઇન્વાઇટ કરે ત્યારે એવી આત્માઓ એમના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે, માતાના ગર્ભમાં. એક એ પ્રકારની હોય છે. એક જે કહીએ છીએ કે એ મહેમાન આત્માઓ, જેમાં મા અને પિતા બંનેનું સંજોગોવશાત મેરેજ થયા પછી બંનેની ગર્ભધારણા થઈ, એટલે એમાં મા અને બાપની કોઈ તૈયારી નથી, એટલે એમની ત્યાં જે આત્મા આવી એ મહેમાન આત્મા. એમની કોઈ તૈયારી નહોતી, એમનું સ્તર એટલે કે એમની તૈયારી નહોતી અને એના આધારે પછી એ નોર્મલ બાળક જે રીતે જે હોઈ શકે. તો જો આપણે કોઈ શ્રેષ્ઠ આત્માની તૈયારી કરવી હોય તો મા અને પિતાએ બંને પણ પહેલેથી જ તૈયારી કરવી પડે. અને આના સંદર્ભો આયુર્વેદમાં પણ મળે છે. આયુર્વેદમાં છે ને બ્રાહ્મકાય, તામસ પ્રકૃતિવાળા, રાજસકાય, રાક્ષસકાય, આવી બધી આવનારી આત્માઓની કેટેગરીઝ આપેલી છે કે એમાં
એના સબ્જેક્ટિવ પેરામીટર્સ કેવી રીતના આપણે નક્કી કરી શકીએ આપ્યું છે કે જેમ એમણે કહ્યું કે આમંત્રિત આત્મા છે એટલે ઉચ્ચ કક્ષાની પવિત્ર ઉર્જાવાળી આત્મા છે, તો એ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હશે ત્યારે માતાને પવિત્ર સ્થળોએ જવાની ઈચ્છા થશે, માતાને એવા હોમ યજ્ઞ કે કોઈ પણ પવિત્ર દાન કરવાનું એવા બધા કાર્યો કરવાની ઈચ્છા થશે. માતાની ખુદની જ પ્રવૃત્તિ એ તરફ થશે કારણ કે એના ઘરમાં એક ઉચ્ચ કક્ષાની આત્મા આવેલી છે. અને બીજું જે તમે કીધું કે મોડર્ન સમયમાં શું કામ આવશ્યકતા છે, તો અત્યારના સમયમાં આપણે બધું ડિઝાઇનર જોઈએ. વી વુડ લાઈક ટુ ગો ફોર ડિઝાઇનર વેર્સ, ડિઝાઇનર એ વિભાગ Jai Baba Swami, very warm welcome to all the guest participants and host of today's session. This is Samarpan, where we take you through the history of Samarpan meditation as witnessed by first generation sadhaks, and we will get to know about their journey and evolution of Samarpan meditation in various parts of the world. The video that you just saw was of Hetal and Mohit, who are our today's guests, and how they have changed lives of many through Ayurveda and also carried on Swamiji's mission. So we will get to know about more those things during the session in the interview. But going further on this interview session and introduction, it is an interview of the souls by the souls to connect with the super souls through the collectivity of souls. This is समर्पण के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है. यहाँ हम समर्पण ध्यान की पहली पीढ़ी के साधकों द्वारा समर्पण ध्यान का इतिहास जानते हैं. ये पवित्र आत्माओं का साक्षात्कार है अन्य पवित्र आत्माओं की सामूहिकता में, जो हम सबको परमात्मा से जोड़ती है. In this one of the most awaited session, this is Samarpan today, we are blessed with two divine souls, Mohit ji and Hetal ji. We will witness their priceless contribution to the society and also how they became instrumental in some very important roles in Samarpan meditation at this very young age. Let's hear their inspiring story, but before that, a few house rules. Dear guests and co-hosts, please put your phones on silent and WhatsApp calls on mute. Please turn on your audio, video until the interview begins. We will announce and invite you to speak. If you get disconnected and join back, please message one of our teammates personally. We will make you co-hosts and you will have privileges to mute and unmute. For audience, we request that please turn off your videos so we can have a better bandwidth to enjoy the program. And दर्शकों से निवेदन है कि कृपया अपना वीडियो बंद रखें ताकि हमें बेहतर बैंडविड्थ मिल सके और हम इस प्रोग्राम का आनंद ले सके. We are going to have this interview in Hindi and English, and this session will be summarized by Hitendra ji in English later for our Western audiences. Thank you, everyone. And now we will start the next part of the session. For that, I would like to invite Utsav. Hey, Baba Swami. So before we move forward to this beautiful program, I would like to read the disclaimer. The only objective of this Samarpan is connecting all living beings of present times. The information and opinions shared here by anyone are personal views of the speaker and are not officially associated with any social, religious, cultural, political, educational, or other organization. We are here to be inspired on how to go back to our original nature of pure soul or Holy Spirit. By no means we intend to offend someone or to hurt anyone's emotions. We support understanding of any subject based on our own experiences rather than relying on any online or bookish knowledge that encourages baseless ideology or superstitious beliefs. Please accept our soulful love for Atmiyata and disregard any information that you don't agree with. With this, now I would like to invite Aishwarya. Jai Baba Swami. Thank you, sir. Now I would like to read a brief about Samarpan meditation. So the foundation of this beautiful program is Samarpan meditation. It is an authentic and simple meditation practice based on Guru Sanskaras or values of Guru. It has been practiced since last 800 years in the Himalayas by the yogis, ascetics, and sages, and was first brought into the society by Sri Shivakrupanand Swamiji in 1994.
for the benefit of the common people like us. By the grace of those Himalayan gurus, today Samarpan meditation is practiced by millions of people in more than 50 countries of the world. Surprisingly, Samarpan meditation is offered totally free to anyone without any barriers of nationality, religion, race, gender, color, caste, or language. Samarpan meditation is made of two words. Samarpan means letting go of negativity of the ego, of thoughts of the past or the future, and any expectation or attachment. Meditation is naturally allowing our self-consciousness to merge into universal consciousness without any effort. Samarpan meditation helps us to live life in a very balanced state of mind and optimal body health to achieve overall progress while growing spiritually. You will also hear us saying Jai Baba Swami or Jai Atmeshwar. When we say Jai Baba Swami, it reminds us that we all are like pearls bonded through an unseen thread of our master Baba Swami. And by saying Jai Atmeshwar, we bow down to the soul inside you. Thank you. Now I would like to invite Zarika ji. Thank you, Aishwarya. Now for our listeners, I would like to give a short introduction to one of our pioneers of Ayurveda, Dr. Hetal Acharya. So Dr. Hetal Acharya is MD in Ayurveda Panchkarma from Gujarat, India. Dr. Hetal is not just the first person representing Ayurveda at United Nations, but also the only person from the field of Ayurveda felicitated by Honorable President of India, Mr. Pranab Mukherjee. She was also selected among 100 Women Achievers of India by Indian Ministry of Women and Child Development. Dr. Hetal has also established a unique center of Ayurveda called Guru Katha Hospital and Research Center as an effort to establish Ayurveda at global level. Dr. Hetal has been practicing Samarpan meditation for over 15 years and always been very active in Gurukarya. She played a key role in various Gurukarya activities like creating a team of youngsters for various Gurukarya activities and shibars. She has also conducted many sessions on Guru Shakti Ahvan, Ayurveda, and Samarpan meditation, many of which are actively followed by respected media outlets. And now I would like to invite Vireshji to introduce Mohitji. Jai Baba Swami, and thank you, Jurikaji. Jai Baba Swami and Jai Atmeshwar, everyone. We just heard about Dr. Hetal Acharya from Zurikaji. I will try to briefly introduce Mohit Kacha ji, which is a difficult task to do it in a brief way. Mohit Kacha ji is a divine ocean of feelings, or bhav as we call it. As well, we all know Mohit ji conducts wonderful Guru Katha sessions to awaken our true love and devotion for Sadguru. However, very few people know that Mohit ji has been a successful RJ as well as a composer of during his career. And he has also written and directed about 300 plays, 300, not a small task. Mohit ji is qualified expert in leading meditation and energy-based yoga practices. Mohit ji has studied the life stories of different masters and their methods of awakening, and he has finally found a simpler way for which he is now constantly raising awareness through his lecture series and seminars, workshops, and discourses. His fundamental views are shared through many print as well as audio, video, media outlets. Once we Google, we'll find several of them. With this brief introduction, I now call upon Hitendra ji to start the introduction without further ado. Jai Atmeshwar. On behalf of
Sri Shiv Krupananda Swami, and global Samarpan family, I would like to invite our today's esteemed guest, Dr. Hetal Acharya and Mr. Mohit Kacha. Padaro, suswagatam. Thank you. તો આપણે ગુજરાતી એટલે સૌથી પહેલા મારો પ્રશ્ન એ જ હશે, કેમ છો? Without this, Gujarati conversation cannot start. And I think we are very blessed and lucky to have both of you. I want to tell our audience that we have been running behind this couple, busy couple, for more than a year. And today, with all this busy life, they have committed and allocated this time for us. So I want you not to leave this program halfway. Make sure you enjoy everything, because there is so much to learn, if not for you, for your children or great grandchildren. So there is so much to learn from this young couple, and without losing much time, we are going to jump into the interview itself. But I will say that every human being has a desire to do something unique and something very valuable in their life. And even after completing our master's and doctorate, even after having multi-million-dollar businesses or success in the material world, that person feels incomplete. That person feels that something is lacking in my life. But there are very few lucky souls in this world who feel that what you need to have in your life, they have received it in very young age, and this cannot happen without any blessings of parents, of teachers, or gurus, and our good karmas in this or past life. Okay, so I think there is a noise going on for some reason. Could be a radio frequency from somebody's system. I think it's a network issue from India. Okay, no problem. As long as it is not from any other attendees, I want volunteers to make sure that this noise, if coming from other sources, you can mute those people. Okay. आइए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. मैं मोहित जी से हिंदी में बात करूंगा और हेतल जी से अंग्रेजी में बात करूंगा, ताकि हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन और इंटरनेशनल ऑडियंस दोनों को न्याय मिले. And to start with the first question, मोहित जी, आप अपने जीवन की व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में हमें बता सकते हो? समर्पण ध्यान में आने के पहले आपका जीवन कैसा था? आपका बचपन कैसा था? मैं बचपन से ही घर में एक आध्यात्मिक वातावरण था. घर में मेरी मम्मी जो थी, मेरी माँ जो थी, वो एक समाधि गुरु से जुड़ी हुई थी. तो उनके कारण मेरे जीवन में पहले से, जैसे स्वामी जी बोलते हैं ना, वो पायदाने रहती है 1 2 3 4 ऐसा करके, मुझे सीधा ही मेरी मम्मी के कारण समाधि गुरु तक का जो सफर था वो वैसे ही कट गया मेरा. और उनका जो डेडिकेशन देखता था समाधि गुरु की तरफ, उनको देखकर मुझे लगा कि हाँ, गुरु के प्रति ये भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति ये डेडिकेशन होना चाहिए. तो वहां से मुझे ये बैकग्राउंड मिला है. पर मेडिटेशन मेरे जीवन में एक टीचर के माध्यम से आया. वैसे मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे जीवन में मुझे जो गुरु मिले, किसी भी फील्ड के हो, मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले हैं. तो मैं एक विषय में कमजोर था, तो मुझे लगता था कि मैं उसको किसी भी तरह वो पास आउट नहीं कर पाऊंगा. पर फिर वो जो मेरे टीचर थे, उनसे वो भी एक गुरु मार्गी थे, वो समाधि गुरु से ही हम जुड़े हुए थे. मेरी मम्मी ने मुझे उनसे मिलवाया था. तो उनसे बात हुई और वो मेडिटेशन करते थे. तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मैं तुझे सिखाऊंगा तो सही, पर एक बात और है
कि तुझे साथ साथ ध्यान करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ध्यान मेरे जीवन में इंट्रोड्यूस किया, और उनका बिहेवियर, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनकी बोलने की बात, उनका जो गुरु के प्रति समर्पण, वो देखकर मुझे लगा कि उन्होंने मुझे कुछ ज्यादा अट्रैक्ट किया, और वहां से मेरी मेडिटेशन की यात्रा हुई। हाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि तू मेडिटेशन कर, तेरे लिए अच्छा है, तेरे को अभी से अच्छा मेडिटेशन लग रहा है। तो मुझे कुछ उस वक्त पता नहीं चलता था, बस मेडिटेशन करना अच्छा लगता था उनके साथ। तो वो आनंदी माँ का एक मेडिटेशन था, आनंदी माँ करके, जिनका डिकोरा के पास आश्रम है। वेरी ब्यूटीफुल। हम देख रहे हैं, अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आई थिंक आपकी मम्मी जी के जो गुरु थे वो रणछोड़ दास जी महाराज थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, रणछोड़ दास जी महाराज। स्क्रीन के ऊपर हमें दोनों गुरुओं की, गुरु शक्तियों की फोटो दिख रही है, और हमें पता चल रहा है कि जैसे एक पेड़ होता है, ट्री ऑफ लाइफ, उसमें पहले बीज बोया जाता है, और बीज के फिर अंकुरित होने पर उसकी जड़ें जमीन के अंदर ही रहती है। फिर जब वो मजबूत हो जाती है तब जाके थोड़ा सा पेड़ बाहर निकलता है, प्लांट बाहर निकलता है, और फिर बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो मुझे आपकी स्टोरी से इतना पता चला कि जैसे मैंने कहा ना कि हम कई जन्मों की आराधना के बाद ऐसे माँ बाप और ऐसे गुरुओं से मिलते हैं जहां पर हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो आपके जीवन में जो बीज डाला गया वो आपकी मम्मी जी के द्वारा, रणछोड़ दास जी महाराज के द्वारा समाधि गुरु का ज्ञान मिला, संस्कार मिला। उसके बाद आपके जीवन में जो शिक्षक आए उनके द्वारा हमें थोड़ा बीज अंकुरित होते हुए उसको पानी दिया गया, ऐसा लगा, और आज वह बीज वृक्ष बन के समर्पण ध्यान के मार्ग में एकदम फलीभूत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहुत ही सुंदर लगा। आई वॉन्ट टू टेल अवर ऑडियंस दैट द स्टोरी दैट मोहित जी हैज एक्सप्लेन इज लाइक व्हाट आई वाज सेइंग, दैट there are many people who want to progress in the life with the total contentment. Success, material success is secondary. Total contentment requires the tree of life to grow in such a way that the seed was planted of spirituality while he was in the childhood with brought up with her mother, who was worshipping or who was devoted to Ranchod Das Ji Maharaj, the Guru. And then he met a teacher in the school who helped him to progress and pass the exams in the subjects that were difficult for him to advance in the studies. So it became a condition help for him that that teacher helped with the condition that you will have to meditate. Because even today, somebody comes to me with the problem, I will say that if you are ready to meditate, then only I can help you, because every problem in my life is solved with meditation. You have to be inside, person from introvert from inside, and this seed was nurtured or watered by that teacher with meditation, and today life is blooming like a full-fledged tree. So that life, tree of life, is beautifully growing in that life. That is what we can see. And मोहित जी, आपके जीवन की कुछ अचीवमेंट भी रही है समर्पण में आने से पहले, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मैं नेशनल यूथ फेस्टिवल में 3 बार विनर रह चुका हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो नेशनल यूथ फेस्टिवल की फोटो है। कौन सी एक्टिविटी में था? वो स्किट, माइम और मिमिक्री थी, जो शॉर्ट रहती है, स्किट, माइम वगैरह। तो उस वक्त मुझे ड्रामा लिखने का शौक था, मैं ड्रामा डायरेक्ट करता था, तो स्किट भी लिखी थी, माइम भी तैयार किए हुए थे। तो वो अलग अलग एक्टिविटीज में मुझे 3 बार नेशनल तक जाने का अवसर मिला है। और उसके आधार पर, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से हमारी यूनिवर्सिटी लगभग मेरे ख्याल से 10 या 12 साल के बाद नेशनल यूथ फेस्टिवल तक कोई पहुंचा था।
ये तो बहुत ही सुंदर है। और आपने तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। मैं नवसारी में जब पढ़ता था तो मैं भी युवक महोत्सव अपना जो स्कूल में से रिप्रेजेंट करते थे उसमें पार्टिसिपेट करता था। मुझे कविताएं पढ़ना अच्छा लगता था, ड्रामा में एक्टिंग करना अच्छा लगता था। तो आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि हमारा ड्रामा जो था वो पूरे नवसारी शहर में नंबर 1 रहा और मुझे सेकंड प्राइज मिला था एक्टिंग के लिए। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं and it is beautiful to witness that. But I also see the first Indian TV channel Satyam Shivam Sundaram. What is this? दूरदर्शन। ये यूथ फेस्टिवल में मेरा रैंक आया तो सभी न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़ चैनल में उसको दिखाया गया था। तो उसके आधार पर उस वक्त सन चैनल करती, जो सूर्या टीवी करके है ना साउथ का सन चैनल है, सन एफएम में, उन्होंने मुझे एज ए आरजे कम कंपोजर के लिए इनवाइट किया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। So this is beautiful success from very young age that you were exposed to media, national level media while you were very young. So this is beautiful success, and I apologize to our audience. They have 2 young kids, and of course this is the Guru energy that is trying to intervene in our program. Don't be disturbed, but we will continue the program further. Very beautiful success. Hetal ji, I would like to ask you about your personal and spiritual journey before coming into Samarpan meditation. Exactly, I was born in such a family that there was no religious pressure, though we were meditating since childhood just because of my parents. And my parents, they were fortunate enough to meet many Sadgurus at that time. And it was quite open-minded background, philosophical background, rather I should say. And big impact in our upbringing. And later on, I studied in Aryakanya Gurukul, and it's quite prestigious institute. And later I studied in Gujarat Ayurveda University, the first Ayurveda university of the world. Recently, it has recognized as Traditional Center of Medicine through WHO. And then I did my graduation and post-graduation to the same institute in the field of Ayurveda with speciality of Panchakarma. Very beautiful, very beautiful. So you have equally strong base in Ayurveda and our Sanskriti, I would say, because Arya Kanya Gurukul must have given some beautiful values. Yeah, it makes a difference while you are having your teenage in such an institute that where recital of all divine mantras going on with Havan and everything, and all Indian culture were inculcated in us in those times. Very beautiful. This credit goes to my parents because they have decided for me that I should study there. Right. And they put a lot of effort during my Ayurveda graduation and post-graduation too. So I'm lucky to have these parents. Yeah, you are blessed, I would say that. And again, I emphasize to the fact that after many lives, good karmas and strong desire, we get parents like this, in whose presence we get nurtured with the right values, and we grow to the point where we are today. So मैं आपके साथ यही बताना चाहूँगा कि हेतल जी के जीवन में भी इतने ही सुंदर माँ बाप मिले जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए, और उनकी पढ़ाई भी ऐसे क्षेत्र में हुई, ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हुई जहाँ पर उनका बेस धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हुआ कि पंचकर्मा जो आयुर्वेदा का मेन विषय है उसमें उन्होंने एमडी किया, और आगे जाके वह यूनिवर्सिटी जो जामनगर में है
उसको WHO ने भी रिकॉग्नाइज किया, यानी कि she was so lucky that not only parents but the school was also right for her. This is beautiful. I really admire, and I find that you are really, really lucky. Our audience will really be, how you say, excited to see your story. If it is in the beginning so exciting, then what will happen next? Let's see. तो आपकी आगे की यात्रा के बारे में बताइए। बहुत सारे अलग-अलग फोटोज है आपके कॉलेज दिन। Yeah, because my father was socially very active and he was very honest and value-based person, and my mother too supporting him. And just because that I came across to many renowned person of various field like astronomy and literature, and as I was quite brilliant during my Ayurveda studies, so I came across to meet some renowned personalities of Ayurveda too. And now at this step, I feel that see, some kind of subtle impressions are there. Those impressions, while you meet these kind of people, those who have contributed the best in their field, yes, they help to make a personality of a person. So absolutely. if we say that this is my success or it is like that, nothing is there. Subtle impressions are there in one's mind, and so I am quite fortunate that my parents and my father, he always opened the door for me, and without any kind of mindset of gender difference or anything else, they always step forward for my progress. Very, very true. Very, very true. And one of the objective for this is Samarpan to bring such valued member of society and Samarpan family to this interview is also that if we are learning about characters and life story of some successful people, some devoted people, then we will be inspired to learn from their life story, and our next generation will be inspired to learn from your story in such a way that they can also use this as a basis to develop their personality, their path of success and the path of spirituality. So very beautiful, very beautiful. जैसे हमने देखा कि हेतल जी के परिवार में उनके पिताजी जो थे, जो काफी समाज में दूसरे अलग कार्यों में जुड़े थे, सामाजिक सेवा में, अध्यात्म में, विज्ञान में, तो उसकी वजह से हेतल जी को कई अच्छे महान विभूतियों से मिलना हुआ, उनसे इंस्पायर होने का मौका मिला, और जिसकी वजह से उनकी विचारधारा जो है वो एक उच्च स्तर पे पहुंची, जो आज उनके जीवन में आशीर्वाद रूप बन गई। आगे बढ़ते हैं। So please tell us how you came to know about Samarpan meditation or Baba Swami for the first time. Exactly, since childhood, I told you that we had a good atmosphere, philosophical atmosphere of kind of meditation and Indian cultural values, and my grandparents, like my mother's father, my Nanaji, was there in the path of sadhana, and we had a little bit proximity with him. And my mother too was very, I think she is very pure, and she was very disciplined, and she inculcated seeds in our lives that we are here for some kind of different aim that the world is going on. This was the base, and we had good discussion, philosophical discussion regarding spiritual saints, and we read many books of those live gurus of past. Very and nice. Later when I think because of all these things, at some extent I felt that I too should have a guru, but it was not burning desire, let me be very frank. But at certain point, when I heard regarding the meditation from my uncle, and
my parents started it, and they introduced me to Samarpan meditation. Wow. And I heard that, okay, it's good, because as a doctor, I knew that meditation is good for health, physical, mental, and overall well-being. Fine, one should practice it. And they started practice, and I too came across to the detail regarding chakra and all details. And later, when I was introduced meditation, I was thought, I was like, we learned the basics of Ashtanga Yoga in our Ayurveda curriculum, and we well known regarding these all words, Dhyan, Dharna, Samadhi, etc., etc. But the intellectual perceptions were not convincing me to believe in a living Sadguru. Okay, they introduced it to me, and I thought that let me go through all the discourses and the verses, what's going on there. Then I heard Shibir. I literally heard, and I found it's good. Okay, one should practice it. And later at that time, I just completed my post-graduation, and I came across to some good experiences of Pratna Dham too. And see, each and every moment in one's life is there that there is a choice in one's life that whether one should go on this side or this side. And now, after practicing these years, I think that we feel that we make the choices, but it's not like that. A force drives us to choose the better thing for which we are meant. Very beautifully said. My father often said to me that infinite choices, one is not there, infinite is there. I heard all the words, we had books and everything, and then after I experienced few things, and later I thought that I should start practicing this meditation, definitely for my mental balance, and for the things which are going on, I can handle it a bit more balanced way. And then I started meditation. And at that time, my father was a principal in the College of Arya Gurukul. He was dean in Saurashtra University too at that time. And it was like a beginning of the center, meditation center at that place. And we were introduced to Gurukarya, what is Gurukarya, and we thought that, yeah, it's very good thing, and we should introduce to other people too. But there was a very small group. And at that time, we were allowed to come to Chaitanya Mahotsav 2006. So it was my first program when I was introduced to live discourse of Param Pujya Swamiji. And at that time, it was quite cool breezing, and we all first experience is unforgettable. So later on, it driven me to attend the Mahashibir. So Surat Mahashibir 2006 was my first Mahashibir, we can say. Because before that, I didn't complete 7 days. I attended 1 or 2 days, and I felt too good in Surat Mahashibir, and there was a quest inside that who will be my guru, and it fulfilled. And at the last day of Surat Mahashibir, it was quite I was feeling that I should sit here till Guru Shakti is here. And we all sat there, and sandal smells were spreading in all sadhaks, and it was like divine atmosphere at that time. And after that, meditation was continued, and the internal connection was felt from inside, and gradually life was changed. Very beautiful. I like a couple of things that you said in your story, and that is what I want to emphasize to bring to the attention of our audience, that when you are brought up in a family where there is a open discussion, she mentioned philosophical discussion, but it is in a way spiritual discussion, because somewhere somehow your soul is getting some spiritual food out of that discussion. To have that level of intellectual parents who have the spiritual awareness from within is a blessing for children. That is what I can see from your story, because
there are many principals and deans and lecturers we can see in the society, but they are so engrossed in the subject of their teaching or their mastery that they don't want to know anything about spirituality or soul or their own self. And unfortunately, we have seen on TVs and on news media that those scientists who have been Nobel Prize winner, but in the last days they are dying with the Alzheimer and all the other kind of sickness, because Sahasrara chakra or the crown chakra has not been realized or reached during this lifetime. And that is the ultimate of spirituality. You are lucky that you were exposed to the living guru like Shiv Krupanand Swami, and your parents were able to make you understand that this is the path of infinity. This is the path of divinity, where our limited vision of knowledge of a specific subject, whether it is science or maths or Ayurveda, is not going to help. But 360-degree divinity or the spirituality is the subject that is going to help you in your life. So I am feeling so excited, and that experience you told about the Surat Mahasibhi, I am sure that such a huge crowd of people, when you see so many people together, I believe it was more than 1 lakh people, 100,000 plus people who attended the Surat Mahashibir. So that sometimes also create a great impact, the collectivity, because Swamiji says meditating for 100,000 days and meditating with 100,000 people is two different things. तो हेतल जी ने बहुत ही सुंदर तरह से कहा और समझाया कि उनके बचपन में ऐसे मम्मी पापा के साथ बातें होती थी जिसकी वजह से उनकी आध्यात्मिक जड़ें बहुत मजबूत हुई और उनको प्रेरणा मिलती थी कि मैं गुरु करूं, लेकिन उनके जीवन में जीवंत गुरु के लिए कोई इतनी तीव्र इच्छा नहीं थी, बर्निंग डिजायर नहीं थी। हाउएवर जैसे जैसे वक्त आता गया अपने आप हालात बनते गए और उनके जीवन में स्वामी जी का आगमन हुआ, क्योंकि उनके चाचा जी, उनके अंकल जो थे, उन्होंने समर्पण ध्यान के बारे में बताया और समर्पण ध्यान की सूरत की महाशिविर में उनको पहली बार स्वामी जी को जीवंत शिविर का स्वामी जी के सामने बैठ के ध्यान करने का, सीखने का मौका मिला, जिसने उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। वेरी ब्यूटीफुल। तो मोहित जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी शुरुआत समर्पण ध्यान में कैसे हुई? जैसे मैंने बताया कि मैं समाधि गुरु से जुड़ा हुआ था, तो मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ तो मैं बहुत ही उनके साथ कनेक्ट था माने हर छोटी से छोटी बात उनको पूछ के करना, हर चीज उनको पूछ के करना। और वो जीवन तो थे नहीं, पर उनकी मूर्ति थी उनके सामने, राजकोट पे उनका आश्रम है, तो उनको पूछ के सब कुछ करता था। तो वो मेरी तरफ से स्वामी जी जीवन में बाद में आए, जब स्वामी जी जीवन में आए तब पता चला कि ये सारी चीजें क्या है। हाँ, पर उससे भी एक भाव था उनके प्रति, पूरा एक सब कुछ पूछ के करो, सारे निर्णय उनके पूछ के करो, सब कुछ। तो ऐसे में जीवन में ऐसी घटना बनी और मुझे इच्छा हुई कि अब जब सब कुछ आपको पूछ के कर रहा हूँ, सब कुछ ही आपको कर रहा हूँ, तो मुझे आप ही बताओ, आप आके बताओ, मुझे आपसे ही मिलना है। माने वो छोटा बच्चा रहता है ना, कुछ ऐसी चीजें मांग लेता है जो संभव नहीं है, पर उस वक्त तो कुछ वो क्या रहता है वो समझा नहीं, और मैंने बोला नहीं, आपको ही आके बताना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, और थोड़ी जीत जैसा मेरा हो गया था उसमें। और उसी टाइम पे जैसे ही वो एकदम चरम सीमा पे थी, जाके हर रोज आश्रम में जाता था और उनको बताता था ऐसा। तो आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त पे? उस वक्त मेरी उम्र थी 25 या 26। क्या बात है, बहुत तकदीर वाले हो यार, इस छोटी सी उम्र में आपका गुरु के प्रति इतना प्यार बढ़ जाना कि वो एक गजल याद आ रही है, पहले जा फिर जाने जाना हो गए। गुरु के प्रति इतना समर्पित हो जाना कि मुझे तू चाहिए ही, तू नहीं मिला तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अब तू मुझे आके बता ही दे, दर्शन दे ही दे। तो ये तीव्र इच्छा ही
परमात्मा को मजबूर कर देता है कि आपके जीवन में आके खड़ा हो जाए, फिर वर्तमान का जो गुरु होगा ना वो आके प्रस्तुत हो जाएगा। तो क्या हुआ, बताइए बताइए, अभी इट इज वेरी एक्साइटिंग। मुझे बहुत इच्छा थी उनसे जानने की कि मैं जब सब कुछ आपको पूछ के कर रहा हूँ, तो कई बार कई ऐसे प्रसंग जीवन में होते हैं जो हमारी इच्छा से विरुद्ध होते हैं, पर वो फिर मैंने जीत की कि आपको आना ही पड़ेगा और आपको मुझे बताना ही पड़ेगा जब मैं सब कुछ आपको बोल कर रहा हूँ। तो फिर 2005 में महाशिविर, 2005 दिसंबर में महाशिविर हुई और मेरी माँ थी, उनको पहली बार स्वामी जी के फोटो, हमारे घर के पास ही शिविर थी, जो ग्राउंड था वो हमारे घर के पास ही था, बहुत नजदीक था। तो उनको पहली बार स्वामी जी को उन्होंने देखा तो उनको लगा कि नहीं, ये गुरु कोई सिद्ध गुरु है। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुझे शिविर में आना है। मैंने बोला ठीक है आऊंगा। तो पहले दिन आया भी और फिर आके कुछ किया नहीं, फिर निकल गया, कुछ अटेंड नहीं किया। फिर मैं तीसरे दिन से रेगुलर हुआ, वो भी मेरी माँ ने मुझे बोला तुझे आना ही है तीसरे दिन से। तो और तब तक मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं बोल रहा हूँ वो आ गए हैं, माने समाधि गुरु को बुला रहा हूँ तो वो गुरु का रूप अलग है। जैसे मेरे रणछोड़दास बाबू कई बार बताते थे उनके प्रवचनों में कि बेटा तस्वीर वही, फ्रेम वही रहती है, तस्वीरें बदलती रहती है, फ्रेम वही रहती है। तो ठीक वैसे का वैसा था कि गुरु तत्व आ गया था, वह वो भूतकाल के गुरु को पकड़ के बैठा था, नहीं आना ही चाहिए, होना ही चाहिए। गुरु जीवन में आ गए हैं, ये पता भी नहीं चला कि रूप बदल गया है, ऊर्जा वही है, स्रोत वही है, मुझे उसको पकड़ना है, मुझे गुरु को नहीं पकड़ना है, मुझे उस गुरु के शरीर को नहीं पकड़ना। वो बाद में बहुत पता चला। तो ये अनुभव से ही समझता है, ये अनुभव से ही हमें ख्याल आता है कि मेरे जीवन में क्या घटित हो गया। क्योंकि एक बार उस माहौल में चले जाते हैं, इस फोर्स में बह जाते हैं, तब हमें उस वक्त पे हमारा अपने आप के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन गुरु शक्तियां हमें उस जगह पे पहुंचा देती है। जैसे हेतल जी ने भी बताया ना कि automatically you get pulled and you are reaching there even though your intellect is saying ये सही है, ये गलत है, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। You are choosing with the बुद्धि। लेकिन आप जब इस मकाम तक पहुंचते हो कि आपका भाव, आपका योग सब एक साथ हो जाता है, तो स्वामी जी का भी कहना है कि आप सारे जीवन भर राम की पूजा करो। मेरे जीवन में जब स्वामी जी मिले ना पहली बार 2001 में, उन्होंने मुझे कहा कि तू राम का भक्त है, राम और कृष्ण के भजन गाता है, क्योंकि मैं रामदेव पीर का भक्त था और आपकी तरह ही समाधिस्थ गुरु के हर शनिवार को भजन करता था और बहुत तीव्रता से उनको ही भगवान मान के प्रार्थना करता था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये गुरु थे रामदेव पीर, वो एक जीवंत इंसान थे जो भूतकाल में होके गए, लेकिन हम उनको भगवान मानने लगे क्योंकि उनके द्वारा कई चमत्कारिक बातें हो गई जीवन में। जब स्वामी जी मिले, ध्यान सीखा, तो पता चला कि राम की सारे जीवन हम प्रार्थना करें, भजन करें तो राम उसी रूप में नहीं मिलने वाला है। स्वामी जी ने मुझे कहा कि तू सारी जिंदगी भक्ति कर ले, लेकिन राम तेरे सामने आके खड़ा रहेगा, तब तू नहीं पहचान पाया तो वो मौका तूने गंवा दिया। तो इसलिए मैं तुझे वह ज्ञान देने आया हूँ जो रूप में नहीं स्वरूप में पहचान सकता है, वाइब्रेशन में पहचान सकता है। उसको तू जितनी सीख जाएगा, तेरा जीवन अलग हो जाएगा। उस दिन मैं न रहूंगा, तू न रहेगा। ये एकदम सरप्राइजिंग लगा मुझे कि स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं। बट आज 21 साल के बाद मुझे लग रहा है कि हमें सिर्फ अवतार के शारीरिक रूप के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए जैसा आपका नाम है, बट हमें उस चेतना के गुरु तत्व के पीछे पहुंचना चाहिए ताकि वो हमारा जीवन बदल दे। रोशनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा बल्ब है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सुंदर कहा आपने। तो फिर ये सूक्ष्म शरीर की भी अनुभूति हुई है आपको? वो अनुभूति ऐसी थी कि वो महाशिविर पूरी होने के बाद माने जैसे ही महाशिविर उस तीसरे दिन से ही नाभि चक्र से ही मैं जुड़ गया था। तो तब तक अंदर चलता रहता था कि मैं तो समाधि गुरु को फिर भी बोलता था कि मैं आपको छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। तो थोड़ा अंदर वो रहता है ना, कई बार हम जीवन गुरु के साथ जुड़ने के बाद भी कहते हैं कि जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ वो तो ये मैं अपने गुरु को क्यों छोड़ू। गुरु माने वो क्या रहता है,
तब तक इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि गुरु माने एक पक्ष पकड़ के बैठा था, ये इसका गुरु, ये ऐसा गुरु, तब भी ऐसा चल रहा था। तो ये नहीं पता चला कि जीवन में वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पकड़ना है। तो वो क्या रहता है, जब तक अपना उस ऊर्जा के साथ संपर्क नहीं होता है, तब तक अपने को वो अनुभव नहीं होता है, तब तक अपने को पता नहीं चलता कि अरे जिसको ढूंढ रहा था वो यही है। फिर भी अंदर से खिंचाव था और मैं सब जगहों पे प्रचार के लिए जाता था। तो ऐसे में बचाव में कच्छ में स्वामी जी शिविर के लिए आने वाले थे, दर्शन शिविर के लिए। तो मैं वहां पे गया था। तो वो कच्छ की दर्शन शिविर स्वामी जी आने से पहले वहां पे प्रचार चल रहा था बचाव में। तो वहां पे मैं पहुंचा तो वहां पे जो अंकल थे जिनकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए मुझे बुलाया और मुझे ऐसा कह के बुलाया था कि तुमको सिर्फ 2 दिन आना है। तो मैंने बोला ठीक है, 2 दिन तो मैं कर सकूंगा किसी भी तरह एडजस्ट, कोई बात नहीं है। अब 2 दिन मैं वहां पे पहुंचा, फिर वहां पे 5 या 6 जगह पे शिविर चल रही थी। उस टाइम पे वीडियो शिविर चलती थी, तो 6 जगहों पे वीडियो शिविर चलती थी। और मैं 1 दिन गया, 2 दिन गया, और मुझे थोड़ा अजीब लगा कि 6 जगहों पे वीडियो शिविर चल रही है 2-2 घंटे की। उसमें से 3 या 4 मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ, और 3 लोग भी नहीं आ रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैंने उस अंकल को भी बोला कि ये हमको बंद कर देना चाहिए, ये सही नहीं हो रहा है। तो वो मुझे बोले कि ये तुझे पता नहीं चलेगा। मैंने बोला नहीं, बोले एक बार स्वामी जी को भेज दिया माने अपने को करना है, अपने हाथ में ये नहीं है कौन आ रहा है कौन है, अपने हाथ में करना है। तो मैं बोला आप करो, मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे को तो एक वो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं तो जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तू चला जाएगा, फिर कौन, देख मेरी तो तबीयत खराब है, शिविर चलाएगा कौन, ये पहली स्वामी जी के आने से पहले किया है और कोई नहीं है। बोला देखो कुछ भी कहो, मेरे से ये नहीं होगा। तो मैं वहां से जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर दूसरे दिन कुछ भी हुआ, मैं नहीं जा पाया, किसी भी तरह नहीं जा पाया। फिर उन्होंने बोला अभी रुका है तो जा, थोड़ा अटेंड गंडकी करके आ। ऐसा 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जा ही नहीं पा रहा था। 5 दिन 6 दिन वो पूरा शिविर खत्म हो गया। फिर पूरा शिविर खत्म होने के बाद एक जगह पे वो जो कलश रखते थे ना उस शिविर में, उस वक्त पानी के कलश, पानी भर के उसके अंदर कलश रखते थे। तो वो ऐसा था, शिविर पूरा होने के बाद वो कलश को किसी नदी में, वो अंदर का पानी जो था वो बाहर, तो वो मैं लेने के लिए गया। फिर वहां पे मैंने जाके देखा तो स्वामी जी का जो सटल बॉडी का जो फोटो था, उसके अंदर जैसे किसी ने एकदम शार्प वो जैसा रहता है, उसके छोटे 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 लाल छेद कर दिए हो ना पूरे पूरे शरीर में, ऐसा मुझे दिखा। तो मैं बोला ये क्या है। तो मैंने फिर वो जो अंकल थे उनको बताया कि ये देखो आपने ये फोटो हमने रखा था तब तो नया था, ये इतने छोटे 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 सारे छेद कहाँ से हो गए। फिर वहां के जो थे ऑर्गेनाइजर, जो बचाव के जो लोकल थे जिन्होंने ये सब सपोर्ट किया था, उन्होंने बताया कि मोहित भाई ये वही जगह है जहां पर 2001 में भूकंप हुआ था और पूरी की पूरी स्कूल जिसमें दब गई थी, बच्चे जहां पर राष्ट्रगान कर रहे थे, उस वक्त पूरी की पूरी स्कूल में जो बच्चे चले गए थे ना, ये वो जगह है। क्या बात है, क्या बात है। तो अपने मुझे तो नहीं दिखा कि वहां पे कौन था, शायद वो किन का कल्याण हुआ था, कौन था कुछ पता नहीं था। तब मुझे जाके पता चला। तो ये सारी घटनाएं जो थी वो जीवन में थोड़ा अंदर ले जा रही थी, ये क्या है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो बोले फिर मुझे पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि गुरु के जीवन काल में अपने को, गुरु का जब कार्य करते रहते हैं तब अपने को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर कुछ होता रहता है, शटल में कुछ होता रहता है। तो ये तो बहुत ही सुंदर अनुभूति है और मुझे अपने श्रोतागणों को अपनी तरह से समझाना है, अगर आप मुझे मौका दें। इसमें कुछ और बातें रहती है या वो अनुभव यहीं पे खत्म होता है आपका? नहीं, यही है। माने मुझे ऐसा लगा कि वो पूरे का पूरा सूक्ष्म शरीर ही था जिन्होंने हैंडल, क्योंकि उस वक्त स्वामी जी के स्थूल शरीर से तो मिलने का कोई जो था वो मुमकिन इच्छा भी नहीं थी और कुछ पता ही नहीं था, यही गुरु थे। तो जो कुछ भी बताते थे वो इनको ही बताते थे, इनसे ही बातें होती थी। सही है। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत सुंदर अनुभूति दिख रही है। वो अनुभूति यह है कि एक समाधिस्थ गुरु का शिष्य जिसने अपना जीवन, अपना हृदय, अपनी आत्मा को इतना जोड़ दिया है कि मुझे तुम्हारे दर्शन चाहिए ही, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपसे जवाब पाना चाहता हूँ। फिर
एक जीवंत गुरु का आगमन, जिससे आत्म जागृति होती है, कुंडलिनी जागृति होती है। फिर गुरु कार्य का मौका। अब गुरु कार्य के लिए कई लोग संसार में पड़े हैं जो तड़प रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से वो कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव भी ये रहा है, हम लोगों ने जब स्वामी जी ने वीडियो बना के भेजा, 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2002 से 2004 के बाद ज्यादा प्रचार होने लगा। कनाडा की बात कर रहा हूँ। तो मैं हर पूर्णिमा के दिन वीडियो कैसेट लगा के सबको आमंत्रित करके बैठता था। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी माता जी, हम लोग तो रहते ही थे, कोई आए या ना आए। एंड कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि कोई भी नहीं आया, लेकिन मेरे परिवार को ये वीडियो सुन सुन के, मेरे बच्चों को स्वामी जी की सारी कथाएं बाय हार्ट हो गई। यानी कि क्या हो रहा है वो कुछ आत्माओं का तो कल्याण हो ही गया। 2017 में जब स्वामी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अमेरिका के लिए, मैंने वही किया। हर पूर्णिमा को वीडियो शिविर शुरू किया। कई बार 3 या 4 लोग ही आते थे ऑनलाइन पे, लेकिन पिछले वीक हमने जब ऐसा ही शिविर किया, सारे अमेरिका के साधक और सेंटर्स सब जुड़ गए और मोर देन 50 साधक नए आए जिन्होंने इमर्सन प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो कई सालों की हमारी जो साधना होती है, उसमें गुरु शक्ति सूक्ष्म रूप से हमें मदद करती है, तभी हमारे द्वारा गुरु कार्य में सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए वो बीज बोए जाते हैं। आपको मायूस नहीं होना कि कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, लेकिन उस बीज की वजह से उस शक्ति का जो स्थापना होता है, गुरु शक्ति की जो स्थापना होती है, उसमें वहां की भूमि का क्लियरेंस होता है, आपके घर का क्लियरेंस होता है, आपकी आत्मा का क्लियरेंस होता है। और जैसे कच्छ के भुचाव में जहाँ पे भूकंप हुआ था और कई लोगों का जीवन चला गया, उस जगह पे जब स्वामी जी के सूक्ष्म शरीर के फोटो पे छोटे 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 छिद्र दिखे, तो यह संकेत मुझे दिखता है कि गुरु शक्तियों ने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया, लिबरेट कर दिया, उनके ऊपर कृपा बरसा दी। तो कोई फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से उस शिविर को अटेंड करे या ना करे, कुछ आत्माओं का तो कल्याण सूक्ष्म रूप से हुआ ही। तो मेरी नम्र विनंती है उन सभी साधकों को या नॉन साधकों को कि आप रूप को मत देखिए, शरीर को मत देखिए, और कितने लोग आए हैं वो मत एक्सपेक्ट कीजिए, वो मत गिनिए। आप सिर्फ इतना कीजिए, आप आधा घंटा अपना समर्पित कर दिया या गुरु कार्य के लिए समय समर्पित कर दिया, आप अपना कार्य लिया है, तो उस वक्त पे सूक्ष्म रूप से आपको नहीं दिखती वो स्वरूपा गुरु शक्ति हाजिर है, उसकी इज्जत कीजिए और एटलीस्ट अपनी आत्मा का कल्याण कीजिए। ये मैं जरूर कहूंगा। Very beautifully said. I want to summarize that you are very lucky, Mohit bhai, that you got opportunity from very young age to get involved in this. And of course, because you were so hungry for spiritual progress, Swamiji came in your life, not exactly as Ranchod Das Ji Maharaj or the Samadhist Guru and Shrine Guru, but as a different form. And this is where we have to be ready to accept Guru as Chaitanya or consciousness, not just in a physical form or the way we used to know. As I was giving the example, Swamiji himself told me that you being a chanter and bhajan singer, you like to worship Lord Rama, Lord Krishna, and singing the chants of Lord Rama and Krishna. But how would you recognize if Lord Krishna or Ram stand in front of you? Swamiji said that, and I said, I don't know. He said, I'm going to teach you the language of vibration. I'm going to teach you how to recognize something that you cannot see with your two eyes. And today I can literally feel and learn and understand and teach others also how to experience the vibration and recognize the energy. I have experienced the energy of Archangel Michael after coming to USA, because I learned the language of subtle, I learned the language of vibrations. So this is very beautiful gift and blessings from Swamiji. And last part that he also explained was the subtle body experience. In India, in Bhuchao, there was a earthquake,
And there was a place, the school premises, where they conducted the workshop. Not many people attended the workshop, and Mohitji was disappointed that we are working so hard but nobody is attending this. This is our efforts going in vain. Why we are doing this? And his uncle said that, look, if you are not supporting me, all the efforts are going to go in vain, because we are preparing all this to invoke Guru Shakti in our place, because Swamiji is going to come in the future. And as a blessing of that workshop, there was a beautiful experience or anubhuti. The photo of Swamiji had small red color dots or imprints, and that signified that on a subtle level, Guru energy literally liberated those kids or those souls who died in that place. So very beautiful. आगे बढ़ते हैं. आपको कुछ कहना है? Do you have anything? एक बात थोड़ी ऐड करूंगा उसमें. हाँ जी जरूर. मैं बहुत बचपन से ना कच्छ जाता था, क्योंकि एकदम बेसिक मेरे घर में स्वामीनारायण संप्रदाय को मानते थे, तो बहुत बचपन से जाता था. पर ये जो चेंज जो रहता है ना, जीवंत गुरु जो रहते हैं ना, वो क्या चेंज कर सकते हैं ना, वो क्या पावर है, वो ये इस बात से पता चलेगा. मैं बचपन में जाता था, सेम जगह पे जाता था, जैसे बचाव में था, भुज में था, तो हम राजकोट से निकलते थे, बस में बैठते थे और कच्छ पहुंचते थे ना, तब तक भगवान को याद करते थे कि कमर बच गई है, अच्छा है. और 3 घंटे या 4 घंटे का जो रास्ता था वो 8 घंटे में पहुंचते थे. सही. मैं बहुत बार गया हूँ. ये चेंज है. अभी हम अपने आप को किस तरह कन्विंस कर पाते उसके ऊपर है. सही. गुरु की शक्तियां बहुत काम कर रही है. अगर हम देख पाए, अगर उसको फील कर पाए, तो मुझे लगा कि स्वामी जी के कच्छ में जाने के बाद अब जो कच्छ में चेंज हुआ है ना, वो कच्छ अलग है. बिल्कुल. अब कच्छ है ना रण प्रदेश नहीं रहा है, अब कच्छ है ना ग्रीनरी बन गया है. अभी आप कच्छ जाके देखो, कच्छ में आपको बारिश के दिनों में हर जगह पे ग्रीनरी दिखेगी. सही है, फलद्रुप जैसे कहते हैं ना, फर्टाइल हो गया. हाँ, और ये सारा चेंज देखने वाली चीज है. ये सारा चेंज स्वामी जी के जाने के बाद हुआ है. वो मेरी आंखों से देखा है. मैंने पूरा उसको देखा है कि किस तरह धीरे करके वो डेवलप हुआ है. जिस जगह पे स्वामी जी गए, उस जगह पे जाने के बाद वो जगह कैसे डेवलप होती है. तो इनके चरण अगर कहीं पे पड़ गया ना, तो समझो कि वो उस जगह को अलग ही रूप दे देंगे. वहां का सारी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा हटा के इनके बस चरण पड़ने चाहिए. बोले ना, गुरु चरण, ये बहुत कीमती है. तो ये कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसीलिए हम अपने इतिहास में भी देख चुके हैं कि कई अवतारी पुरुष हुए जिनके आगमन की वजह से उस भूमि का कल्याण हुआ, उस भूमि पे जीने वाली आत्माओं का, जीव जंतु पशुओं का कल्याण हुआ. और स्वामी जी के जीवन की इस अनुभूति को अगर आप सही मायने में जानना, सुनना, समझना चाहते हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कनाडा का दिसंबर 21 का इंटरव्यू है. वीरेश भाई ने बहुत सुंदर तरह से समझाया है कि जहां जहां गुरु शक्तियां गई, वहां पे बारिश हुई और वहां पे अमी वर्षा हुई. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एपिसोड जरूर सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि उसमें से आपको इस चमत्कार का, इस मिरेकल का अनुभव होगा. उसके बारे में बहुत डिटेल में जानना, समझना मिलेगा. Thank you very much for adding this, because it is very true that wherever Swamiji has stepped in, whether in India or other countries, in Europe or in Americas, there is a heavy rain, or there is a Ami Varsa, what we call the shower of blessings, and that has changed the fertility of the land, the blessings for the people and soul in that land. So such divine soul, when they enter and step into such any land, it brings blessing for the mankind. Very beautiful. Thank you. आगे के प्रश्न. आगे इसमें मैं बताना चाहूंगा. जरूर. मांडवी में पहली बार मैंने स्वामी जी को प्रत्यक्ष देखा था. कच्छ की मांडवी में स्वामी जी के दर्शन शिविर के लिए आने वाले थे. उससे पहले उस सेंटर को डेवलप करने के लिए हम 12 बच्चों को ही भेजा गया था, और स्वामी जी ने कहा था कि बच्चों को ही रखो, वहां किसी को मत भेजो, माने टीनेजर्स को ही रखो,
उनको ही पूरे का पूरा सेंटर डेवलप करने दो। तो हमने बहुत जोर शोर से वहां पे प्रचार किया था मांडवी में। तो ये मेरे जीवन की एक श्रेष्ठ अनुभूति है। तो वहां पे स्वामी जी जब आने वाले थे, वहां का सर्किट हाउस है मांडवी का, तो सर्किट हाउस में स्वामी जी का स्टे था। तो स्वामी जी के आने से पहले सारी तैयारियां करके रखी थी, और फिर इन्होंने, जो वहां पे ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने बताया कि बस अब आपको जाना है, स्वामी जी आएंगे, उससे पहले आपको निकल जाना है। तो थोड़ा मन में ऐसा हुआ कि अरे स्वामी जी को एक बार मिलने भी नहीं देंगे, स्वामी जी को एक बार देखने भी नहीं देंगे, देखने को मिले तो अच्छा है। तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी जी का सारा प्रोग्राम प्लान रहता है, वो पूरा शेड्यूल रहता है, कब क्या कैसे रहता है, कौन आने वाला है, कैसे मिलने वाला है, सब रहता है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कुछ काम रह गया था मेरे ख्याल से, वो पूरा करने के लिए मुझे वापस वहां पे आना पड़ा मांडवी सर्किट हाउस में, और वो मैं देख के निकलने ही वाला था और स्वामी जी की गाड़ी आई। तो वो मेरे जीवन में प्रत्यक्ष पहली बार मैंने स्वामी जी को देखा एकदम। और जैसे ही स्वामी जी को मैंने पहली बार देखा, तो स्वामी जी को देखते ही मुझे एकदम जैसे स्वामी जी को देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं देखा है मैंने, देखा है माने अभी बताऊंगा। ऐसा लगता था कि जस्ट मोमेंट रुको, मैं अभी नाम भी बताता हूँ। इनका नाम शिव कृपानंद स्वामी नहीं, मैं बताता हूँ कुछ नाम है। एकदम ऐसा मुझे ऐसा लगा कि मैं पहचानता हूँ इनको, कुछ ऐसा मुझे बहुत ऐसा लगा। तो फर्स्ट विजन में वो आत्मा को पहचान जाती है, आत्मा साक्षात्कार जिसे कहते हैं। और वो जो स्पार्क झमकता है ना, उस वक्त पे हमारी आत्मा जैसे नाच उठती है। और वो नरसिंह मेहता का भजन याद आ गया आपकी बातें सुन के। આજની ઘડી છે રળિયામણી, હારે મારા વાલાજી આવ્યાની વધામણી જી રે, આજની ઘડી છે રળિયામણી। ये गुरु का अपने जीवन में पहली बार दर्शन होना, आगमन होना, आपकी हृदय की भावनाएं आंखों से आंसू बनकर उमड़ आती है और नजरें भीगी हो जाती है, क्योंकि उसमें वक्त नहीं रहता है, उसमें शब्द नहीं रहते हैं, सिर्फ चैतन्य रहता है और प्रेम रहता है। ये बहुत सुंदर अनुभूति कही आपने। What I was saying about the first vision of Guru, it is such a powerful thing that you go beyond time, you go beyond body, you go beyond senses even, and there is no words to express that. Only thing that comes out is love and tears from your eyes. So that is the anubhuti that he had. Then he was asked to leave the place, and for some reason he has to go back to the place, and Swamiji's car enters at the same time. This is called the fruit of strong desire to see your Guru. This is called the strong desire of Guru saying that मैं आपकी इच्छा का गुलाम हूँ. I am the servant of your strong wish, strong desire. This is powerful. This is beautiful. I really loved it. Thank you, Mohit bhai, for sharing this. तो उसको वो अनुभूति मैं आगे बताऊंगा कि वो उसका पूरा है जो है ना, उसका कंक्लूजन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता चलेगा सबको कि क्या गुरु और शिष्य का संबंध क्या रहता है। अरे जरूर जरूर, आप अभी बताना चाहे बता दो, क्योंकि वर्तमान में ही गुरु है और परमात्मा है। हम कल के लिए या अगली 5 मिनट के लिए राह नहीं देखने वाले। तो मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। अभी इनका नाम मेरे मुख में आ जाएगा, अभी मैं बता दूंगा, ऐसा मुझे लगता था। फिर वहां पे जो थे उनको मैंने बताया कि स्वामी जी से मीटिंग हो सकती है क्या? मीटिंग हो सकती है माने स्वामी जी मीटिंग तो लेने ही वाले थे सब कार्यकर्ताओं की, पर वो दर्शन शिविर पूरी होने के बाद लेने वाले थे। तो मैंने दर्शन शिविर पूरी होने के बाद लेने वाले थे, तो मैंने बोला मैं तो नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे तो काम है, मैं तो दर्शन शिविर पूरी करके चला जाऊंगा, दूसरे दिन मैं नहीं रहने वाला हूँ, और मैं तो वो वॉलंटियर्स की मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे पहले मिलना है। पहले हो सकता है क्या? तो बोले ये तो असंभव है, स्वामी जी का सब प्री प्लान रहता है, कुछ नहीं होगा। बोला ठीक है, नहीं हो सकता। तो वो मैं मांडवी के पास ही एक छोटा सा तालाब है, वहां एक मंदिर था, वहां पे जाके मैंने फिर प्रार्थना की स्वामी जी को कि मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। अगर
एनर्जी का प्लानिंग तो मुझे पता नहीं है क्या है, एनर्जी का प्लानिंग कैसे रहता है। तो अगर कुछ डिस्टर्ब ना हो और ऐसा कुछ हो तो मुझे आपसे मिलना है, माने दर्शन शिविर से पहले, क्योंकि बात तो मैं नहीं रहने वाला हूँ। सही है। तो इतना प्रार्थना करके फिर मैं चला गया और रात को सो गया, और सुबह उठा और नहा रहा था तो अचानक एक दूसरा दोस्त था, वो दौड़ते दौड़ते आया और उससे बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, स्वामी जी ने 1 घंटे में मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ हाँ 1 घंटे में मीटिंग के लिए बुलाया है। तो मैं तो एकदम तैयार हो गया, और जैसे रहता है ना सबसे कमजोर विद्यार्थी सबसे आगे बैठता है, तो मैं तो पहली लाइन में पहले जाके बैठ गया, और एकदम स्वामी जी के सामने एकदम प्रत्यक्ष। तो स्वामी जी को एकदम पहली बार प्रत्यक्ष में देखा, और स्वामी जी आके स्वामी जी ने पहला ही प्रश्न ये था, किसके कारण ये मीटिंग मेरे को दर्शन शिविर से पहले नहीं लेनी पड़ी, कौन है वो? तो सबको मालूम था, हमारे साथ जो 12 लोग थे सबको मालूम था कि मैं ही था, तो सब ने मेरे सामने ही पॉइंट आउट किया, और सब मैंने ऐसे वो रहा। तो मैंने कहा मैं ही हूँ। तो स्वामी जी बोले हाँ बोल, तेरे को क्या पूछना है? तो मैंने बोला स्वामी जी मेरे को एक ही सवाल है, आपको मेरे को एक ही प्रश्न पूछना है। मैंने जीवन में आपको कल पहली बार देखा, और मैं रात भर सो नहीं पाया था, हैमरिंग माय माइंड कि मैं जान रहा हूँ, मैं पहचान रहा हूँ ये कौन है, पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन हो आप, क्यों मुझे याद नहीं, वो ऐसा लग रहा है। तो स्वामी जी मेरे सामने हंसे और बोले अरे तुम्हारी आत्मा मुझे पहचान गई है कि मैं कौन हूँ। एग्जैक्टली। तुम्हारी बुद्धि तुमको तर्क दे रही है, वो तुमको नहीं कन्विंस नहीं होने दे रही है, तुम्हारी आत्मा पहचान गई कि मैं कौन। फिर स्वामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जैसे कि मेरे पापा का भाई मेरा काका हुआ, तो जब ये देह छूटेगा तो वो काका का संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो देह का संबंध है, पर तुम सब लोगों के साथ मेरा संबंध आत्मा का है, इसलिए ये देह छूटने के बाद और पहले से हमारा संबंध है। तो तुम्हारी आत्मा हमको पहचान जाती है कि कौन हो तुम लोग को। अपनी ये बुद्धि है ना, इसको रीजन को तोड़ो तो पता चल जाएगा कि हमारा और तुम्हारा संबंध क्या है। एग्जैक्टली, वेरी ब्यूटीफुल। और होने वाली बात ये थी कि वो पूरा होने के एक पल में अमीर बना देती है एक सामान्य आदमी को ये अनुभूति। और मेरे लिए तो वो था। फिर स्वामी जी तो थोड़ा अपने साथ वो भी रहता है ना, पूरा हो गया, फिर पूरी मीटिंग हो गई, फिर स्वामी जी ने बताया कि अब ठीक है ये तो जाने वाला है, तो अब दर्शन शिविर के बाद मैं और एक मीटिंग लूंगा तुम सब लोगों की। तो मैंने सोचा, तो स्वामी जी ने 2-3 बार बोला ये तो जाने वाला है, इसके कारण ही तो ये मीटिंग थी, अब दूसरी मीटिंग लेंगे वो दर्शन शिविर के बाद। तो फिर मेरे मन में लालच हुई कि यार दूसरा भी स्वामी जी से मीटिंग हो तो कितना अच्छा है। तो फिर दूसरी मीटिंग में भी मैं रहा था, पर ये जो था ना वो खिंचाव, वो I feel your story is telling something very interesting. मैं तो खाने पीने वाला और बहुत शौकीन आदमी हूँ, तो मुझे लगता है कि आपने एपेटाइजर मांगा, स्वामी जी बोलते हैं डिजर्ट आने वाला है, बाकी है, आप जरा तैयार है ना डिजर्ट के लिए शिविर के बाद। तो this is very beautiful experience again about the soulful connection between guru and disciple. As Mohit was saying, हाँ बोलिए। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ था, क्योंकि ये जो थे ना यही सारा बेस था जिसने गुरु से जोड़ा है। जो सही ये जो प्रचार किया ना सूक्ष्म शरीर माने, क्योंकि वहां पे तो उस वक्त कभी जीवन में सोचा नहीं था कि स्वामी जी को प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। तो जो सुख दुख जो कहो वो यही थे, सूक्ष्म शरीर ही था, तो उनसे ही सब बातें थी, उनसे ही कहना था। तो ये जो सब मैं जगहों पे प्रचार में गया ना, वो सब जगहों पे प्रचार पे मुझे ऐसी अनुभूतियां जो हुई है, जिन सारी अनुभूतियों ने मुझे अंदर की तरफ मोड़ दिया है। जैसे मैं उसमें एक बार गया था, सुरेंद्र नगर दर्शन शिविर के लिए मैं गया था। तो आप मानोगे नहीं कि वो जगह जो है सुरेंद्र नगर, वहां पे कभी बारिश होती नहीं, माने वहां पे सूखा ही रहता था। और वहां की भी, उस सुरेंद्र नगर की भी पहली जो शिविर थी, पहले पूरे सुरेंद्र नगर की, उस शिविर में भी मुझे गुरु कार्य करने का मौका मिला था। क्या बात तो है, मेरे साथ जो दूसरे जो साधक थे, जो एल्डर्स थे, वो मुझे बताते थे तू लकी है कि जहाँ पे स्वामी जी आने वाले उस जगह पर पहली शिविर तुझे करने को मिल रही है। यस।
मैं सोच रहा था कि कैसे कैसे अनुभव वहां पे सूक्ष्म के हो रहे थे कि वो ऐसी जगह थी सुरेंद्र नगर जहाँ पे कभी भी बारिश नहीं आई थी, और मैंने मेरे जीवन में मेरी आंखों से देखा है बहुत स्वामी अच्छा है। जी वहां जिस जगह पर मैंने पहली प्रोजेक्टर शिविर ली थी, उसी जगह पर, सेम उसी जगह पर स्वामी जी की दर्शन शिविर हुई। क्या बात है, और बहुत सुंदर, बहुत गुरु सुंदर। की कृपा को तो मैं किस किस शब्दों में बताऊं कि जिस दिन स्वामी जी वहां पे आए तब वहां पर इतनी बारिश थी कि अ, वो जो अंडर ब्रिज रहता है ना, कई जगह पे अंडर ब्रिज रहता है कहीं पे, तो ओवरफ्लो हो कई जाता है। जगह पे तो हमने देखा था कि बस पूरी की पूरी डूब गई, इतनी बारिश हुई। तो वो सुरेंद्र नगर के जो नदी थी, वो नदी के पुल के ऊपर से पानी जा रहा था। लोग बोल रहे थे कि आज तक इतना पानी कभी नहीं देखा है, सही इतनी है। बारिश कभी नहीं देखी है। तो वो और एक स्वामी जी अभिशाप का था। जो डेडिकेशन जो मैंने वहां पे देखा, हाँ, स्वामी जी का गुरु कार्य के प्रति क्या रहता है, इतनी बारिश, इतना कीचड़, और इतने कीचड़ में स्वामी जी कार में से निकले, कीचड़ वाले पैर हुए, कीचड़ वाले पैर से बाहर निकले, और स्वामी जी ने वहां पे दर्शन शिविर ली। बाहर जोरदार बारिश चल रही है फिर भी और स्वामी जी ने वहां पे दर्शन शिविर ली, और वहां पे लोग भी थे उस वक्त। तो ये कौन सी शक्ति थी जो इतने सारे लोग इतनी भयंकर बारिश में भी वहां पे थे? सही है। तो ये सारे प्रश्नों ने मुझे बहुत अंदर की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि मोड़ा होगा, कि ये सब लगा होगा कि ऐसा तो कभी देखा नहीं जीवन में। तो वहां के लोग बोलते थे कि ये कौन है आपके गुरु? बोले ये हमारे यहाँ पे ऐसा बोलता है कि ये श्राप, इस नदी को ऐसा, माने ऐसा बोलते थे कि शापित नदी है, यहाँ पे कभी बारिश नहीं होगी, बहुत ऐसी कोई कहानी वो लोग बोलते थे कि ऐसी थी। पर ये अब पहली बार देखा, और मैंने मेरे जीवन में उस नदी को, उसका रोज वो स्वरूप देखा था नदी का, सही कि है। बस के टायर के ऊपर से पानी जा रहा है और हम वहां से निकल रहे हैं। तो वो ये सारी अनुभूतियां जो थी, उन्होंने बहुत अंदर मोड़ा है सो ये। प्रणव जी ने याद दिलाया, बिकॉज इन वीरेश जी की स्टोरी पे हम लोगों ने रिसर्च किया था इसके ऊपर। रानी जनक देवी की अभिशापित जगह थी सुरेंद्र नगर की, और उसकी वजह से वहां पे बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन एक ऐसी मान्यता है कि किसी युग पुरुष, किसी आध्यात्मिक संत के पावन कदम से यह जमीन पे फिर बाद में बारिश आएगी, पानी आएगा, और वह हुआ जब स्वामी जी का आगमन हुआ। तो अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वॉच दिस एपिसोड ऑफ दिस इज समर्पण फॉर द कैनेडियन लीडर्स, कंटिन्यूइंग ऑफ द समर्पण ग्रोथ इन कनाडा, दिसंबर 2021। आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत ही सुंदर तरह से वीरेश जी ने समझाया है। Thank you. Mohit ji was telling us about how he had a very strong desire that he will not be able to meet Swamiji after the Shibir. So if Swamiji can give us the darshan or live interview or live exposure, then it will be a blessing for us. But everybody, the organizers were saying that Swamiji's schedule is very tight and he always follows his time and schedule very strictly. To the amazement of these organizers, suddenly Swamiji said that within 1 hour we are going to meet all the volunteers who have done the Gurukarya in preparation of this Shibir. And there were 12, 13 other youngsters who worked with Mohit ji. They were all going to see Swamiji. When they met, first question Swamiji asked, who is that culprit because of whom I had to call this emergency meeting? So everybody was pointing finger to Mohit Kacha. This is the boy. This is the reason why we had to come and see you, or you had to call us. So this is the relationship. This is the connection between guru and disciple. You make a pure wish and it will happen. And Swamiji then explained that it is not you as a person, Mohit Kacha. It is not me as Shiv Krupanand Swami on a physical level, but it is our soul that recognize each other at the soul level. And because of that, when your soul recognize me, I recognize you, there is no interference, there is no objection. It has to happen as if you desire, and I have to come जैसे आपने मुझे मांगा, जैसे आपने चाहा. So the way you desire, the way you want, I have to make myself available. That is the power of God. That is the power of Guru. And that happens without word, without asking. This is what we want to experience in our life.
to have that spiritual progress, to have that contentment. But you have to forget the logic, you have to forget the intellect, you have to leave your ego, and you have to be ready to do something beyond the logic, something beyond the norms. Then these kind of experiences can happen in our life. Very beautiful. And another thing he again shared was the experience of the Surendra Nagar, where the land was cursed by Rani Ranak Devi. She was the queen, and the land did not have any rain for so many years, but uh, it will be blessed only by the arrival of a divine saint or a holy soul. And that is what the curse was, and it materialized to such an extent that by the presence of Swamiji, when Swamiji was doing the live shibir, there was such a heavy rain. The river bridge was full of water, and the water overflowed the bridge. That was the amazement for the people of that city, because for so many years they have not seen the rain in that place. And in that rainy day, Swamiji did not stop giving the live shibir. He conducted the shibir, and people enjoyed it, and people recognized the energy behind this Yug Purush, this man of the age. So beautiful, beautiful Anubhuti. And this is the story of consciousness. This is the story of guru-disciple relationship. Beautiful. Mohit bhai, और कुछ कहना है? हाँ बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप अपनी अनुभूति बताइएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये सारी अनुभूतियों के कारण मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी आत्माएं और इतने सारे लोग इस दुनिया में हैं, उसमें से स्वामी जी ने कैसे ढूंढ लिया। माने मैं तो मांडवी तक पहुंचा नहीं था, अपनी मुझे सही में ये बात है, स्वामी जी तक पहुंचने की अपनी हैसियत नहीं है। हाँ। उनकी कितनी करुणा है, उनकी कितनी कृपा है कि इतने सारे लोगों में से बुला लिया, खींच लिया, वहां पे तैयार रखा, मिल भी लिया। तो वो बताते हैं ना कि गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा रहता है कि वो इस जन्म का नहीं रहता है। जो सिद्ध गुरु रहते हैं ना, सिद्ध गुरु का शिष्य के जन्म से पहले उसके ऊपर वॉचिंग रहता है कि कहाँ लाना है, कैसे लाना है। तो ये वहां पे सार्थक हुआ। और इसी दर्शन शिविर के दौरान हम एक बार एक जगह पे गए थे स्वामी जी के साथ, दर्शन शिविर के वक्त ही थे। तो ये सारी अनुभूतियों ने मुझे अंदर मोड़ा है। तो एक जगह पे स्वामी जी के साथ मिलने के लिए गए, एक जगह पे गए थे, सब लोग थे, और स्वामी जी वहां पे पहुंचे, और एक बहुत अच्छी जगह थी, नेचुरल जगह थी, और एक ओटला जैसा था, वहां पे किसी को मिलने वाले थे। वहां पे जैसे ही पहुंचे और स्वामी जी जाके वो ओटले के ऊपर बैठे, और हम सब भी थे, बहुत सारे साधक थे, और उतने में मैंने देखा कि आसपास के जितने भी वृक्ष थे, आसपास बहुत अच्छे वृक्ष थे, एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर था वहां पर। आसपास के वृक्ष के जितने भी पक्षी थे, माने अलग अलग प्रकार के जितने भी पक्षी थे, वो सारे के सारे स्वामी जी जिस ओटले के नीचे बैठे थे, उस ओटले के ऊपर जो वृक्ष था वहां पे आ गए। और यू डोंट, अब मेरा विश्वास नहीं लगेगा आपको, इतने जोर से बोलने लगे वो, इतना जोर से बोलने लगे कि हम सामने कुछ 40-50 लोग थे, हमारे में से किसी की भी आवाज स्वामी जी तक नहीं जा रही थी, इतने जोर से बोलने लगे। क्या बात, माने जैसे वो कह रहे हैं कि पहले हमसे बात करो, इनसे रहने दो, पहले हमसे बात करो, इतने जोर से। और कंटिन्यूअस 5 मिनट 6 मिनट तक मैंने देखा था। ये मेरे जीवन में चौंकाने वाला अनुभव था कि इतने पक्षी एक जगह पर एक ही वृक्ष के नीचे स्वामी जी के साथ। तो फिर स्वामी जी ने कुछ कहा, फिर वो उसके जवाब हमारे दिमाग से नहीं मिलते नहीं मिलते, ये सब बुद्धि को कन्विंस नहीं होगी, इससे पता नहीं चलेगा। तो वो पूरा हुआ। फिर जैसे ही वो थोड़े शांत हुए, फिर स्वामी जी ने ऐसा ऊपर देखा और एक ही शब्द में बताया स्वामी जी ने, इनको पता चल गया कि कौन आया है। सही है, सही है। And that is very, very powerful example for us, those who are intellectual, for us who are thinking only logically, for us who are looking for the reason behind everything, that how can you explain the communication between a living guru and the birds, such a huge collectivity of bird, as you are seeing on the top right photo over here. He is talking about Swamiji sitting on that platform, and there were many trees around this platform, and
there was a huge crowd of bird that came and sat down in those on those trees and started making noise. It is like lot of we call it kalarao. Okay, lot of noise of the birds as if they want to talk, they want to catch Swamiji's attention. And Swamiji said, look, even these birds have recognized me, they have understood the presence of living Guru, but you guys have not yet realized. What a beautiful love, what a beautiful Chaitanya consciousness. Amazing, amazing. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन की ओर। इसके बाद स्वामी जी ने एक जो चीज बताई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, पहला शब्द। हाँ। स्वामी जी ने बताया था कि आने वाला युग बहुत खराब है, वो 2008 में बताया था। हाँ जी, आने वाला समय खराब है, तो इसे वार्निंग समझो या वार्निंग, या भविष्यवाणी समझो या भविष्यवाणी। वही लोग टिक पाएंगे जो समूह में होंगे। एग्जैक्टली ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही स्वामी जी ने। और अभी भी कुछ लोग इतने अहंकारी है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग में है, धार्मिक है, लेकिन यही मानते हैं कि भगवान ने तो मुझे ग्रीन कार्ड दे दिया है, मैं उड़ जाऊंगा और मुझे तो फ्री कर देंगे स्वामी जी भगवान। ऐसा नहीं है। इसमें हमें समझना है कि Gurudev has given the warning in 2008, as Mohit ji is explaining, that the upcoming time is going to be dangerous. And we have witnessed that in 2020, 2021 with the COVID, how it was terrible for the entire mankind all over the world with the COVID pandemic. That people will be stressed and people will survive if and only if they are in collectivity, and not collectivity on a physical level, collectivity on a soulful level. So soulful collectivity is very, very important. And that is what Swamiji has created in this global Samarpan family through Samarpan meditation and the values or sanskar of Himalayan gurus. Very beautiful. अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। हेतल जी हमारे पास आ गई हैं अपनी ड्यूटी बजा के। तो Hetal ji, I know that both you and Mohit ji served Swamiji not in those early days of knowing him, but later as Ajivan Sadhak or Sadhika, meaning that lifetime devotee of Swamiji. So, when did you decide to become Ajivan Sadhika? आपने आजीवन साधक या साधिका बनने का निर्णय कैसे लिया? Exactly, it really happened like that. I first time went to Dandi ashram for 1 month, and at that time, after I think a week, there were gathering of all international sadhaks. International retreat was arranged there, and as I told you that. We were very few people at our place in Porbandar, and we were instructed that we should put our attention to subtle body and lotus feet of Sri Guru Charan of subtle body. So I had never thought that I should meet Pujya Swamiji in his physical form, and I never thought of that. And we often prayed while we were gathered in collective meditation at seashore of Porbandar Chowpatty. And we always pray to subtle body that in the morning, early in the morning on seashore, we always pray that Swamiji should come at our place and Swamiji should give a darshan shibiran. We were very 5 or 7 people were there, and at that time it might look silly that, but we thought that the tides of ocean and the clear medium of water will reach to Dandi and it will go to through subtle body, it will reach to Pujya Swamiji. Let me make it shorten. And as a result of that, we were not aware that what would be the result, but it is a part of this journey. That's why I started from there. Okay, fine. We believed that all 5 basic elements are connected with subtle body, and we prayed. Okay, and later after 6 months, I practiced in my father's place, Porbandar. Then
I went to Dandi ashram for 1 month, and as I mentioned earlier, there was not a single thought in my mind that I should meet Swamiji and Swamiji should meet me and give me some pictures and everything. Though it was, when we are beginners, we try to follow as word to word whatever they said in discourse or whatever is advised. So I try to follow that. If Swamiji is walking there or anything there, we should put attention on subtle body. So first time when we were serving something in kitchen, and we were not aware that Swamiji visit all the places in Dandi ashram. So Swamiji came there, and just he passed just nearby my side. I was not aware. I was trying to put my attention on subtle body, and I was doing whatever is allocated. And then he went to the storage room, and then some of the people stood up and they told that Swamiji is there. I was surprised. Yeah, he's there. Okay, but no, I from inside I was telling myself, okay, but we should. Powers are there in subtle body. We should not put attention on the physical body. Okay, then the day was ended. Later, an international retreat, I was invited for a lecture on Ayurveda. And I was quite desperate about Ayurveda since I got the admission in my Ayurveda course first year, and I really love Ayurveda. So it was a great opportunity for me. And I thought that, yeah, I can do it. Take for that and prepared the lecture. And on the allocated day, I started my lecture. After a few minutes, I felt something different on my crown chakra. And I felt a very good cool breeze, and the lecture was really good. I too felt, and later on, I got the feedback from people. But the behind the curtain scene was like that. People told me that while you were delivering the lecture in international retreat, those who have visited Dandi ashram, they might be aware regarding the gardens. There are gardens are there. One is there in the photograph, and another one is just opposite to it. And there are some benches in that opposite the garden. So Swamiji was sitting there throughout the lecture, and I got that it really was in the blessings of divine presence of him. Absolutely. That too ended, and then after some days, Sri Ram Kaka told me that Swamiji called you to meet him. And I asked that he said that I don't know. Swamiji said that he would like to meet you, and he said me that the venue is there. Just while seashore is gazing, sky gazing and seashore visit is scheduled tomorrow morning. So Swamiji will meet you. Okay, that's fine. I felt really good, but I never thought of that Swamiji will meet me and I'll talk to him. Okay. It was not part of your expectation. It happened. Yeah, it was part of my expectation that he should meet me or I should interact with him, because while we are in kindergarten, we were fed like in our brain that this is this. So we were just like that. No, we should put attention on Sukshma Sharira. Okay, that's fine. But I was really happy. It was not like that I was not happy. I was really happy, and I felt that from deep inside that it is his grace that he called me for meeting. So I was really bowed down from my deepest heart, and feelings were like that. And then that first time I met Param Pujya Swamiji on the beach of Dandi, and it is quite memorable meeting for me. And if I recall that anytime, then I feel that something happened at that time. We had a good discussion, as Swamiji's meeting is always unforgettable for any person. We had some good discussion. He asked me that, would you like to ask any question? He guided me for some points that you should proceed like this. And then there were some spiritual questions in my mind, and asked him. And at some point, I told that I have observed that there is a project of Ayurveda in the exhibition. And at that time, I prayed to subtle body that whatever I can do for this will be my humble contribution for that. And he said promptly
would like to join me for the project of Ayurveda? Oh, that was a forceful question, and there was no chance to deny for that. Yeah, I said yes, it will be my pleasure. ये मेरा सौभाग्य होगा. It will be my pleasure to serve for it. And it was like nothing is that. See, these are the communication beyond the words and beyond the materialistic world's parameters. I think at that time it was the communication between soul and the Almighty. Maybe Sahi. like that. Now I feel it. And later we discussed few things regarding Garbha Sanskar too, because I heard regarding all tracks of this topic many times before I came to ashram. And I was quite, as a doctor, I was quite surprising that how painless delivery can occur and everything. So he satisfied my quest too regarding it. And this is the point when I met first time. And at that time, there was no point to deny, and I was committed for Ayurveda and the work regarding it. Very beautiful. So And I assume this happened, after that, yes. I think this happened sometimes in 2007, if I'm not wrong. Yeah, it's in 2007 international retreat, and see, the life always gives us some choices. I was about to select in Gujarat Public Service Examination. I cleared my written test, and I was damn sure that I'll clear this examination. And for freshers, it's quite good experience in this job. So I thought that I have earned experience in clinical practice. Though I was practiced for a few months. I was a lecturer for 1 year. So I thought that I should get some experience. Then while Swamiji said, the Swamiji said that, will you join here? So next day, there was no mobile, and I had a mobile, but there was it was deposited at office. And then I called my father and mother. So at that time, my father told me that you should follow whatever the Sadguru or your living master instruct you, because we are your parents. We are your parents of your physical body, but the real parent, if you believe, is your Sadguru. So whatever is instruction or whatever is discussion or whatever he says, you should follow it. We are just merely your physical parents' body. See, these sentences, few points, my parents are too much supportive, and I'll be grateful throughout my life. And such kind of sentences really inspire. When we have chosen the path, we feel that we have chosen, but we are chosen. And there are some ups and downs, and these kind of sentences always inspire me. I'm quite grateful at this moment for my parents and Swamiji too. So ये बहुत सुंदर, very beautifully you said that it is not us who choose the path. It is the path that choose us based on our past life karma or by the grace of Guru in our life. And what a beautiful statement by your parents. I bow down to your mom and dad for your upbringing and those values that they have inculcated in you. It shows the height of their spirituality also, that they explained you the value of physical father and mother in your life just for the body and upbringing. But the most important thing is the divine father and divine mother, which is Guru, the mother of our soul and father of our soul. And it is only that divine father or mother, Ardhanareshwar or Guru Shakti, that is going to liberate us, that is going to pull us out of this Bhavasagar or Bhavarog, which is not something that our body or mind is going to understand. It is only our soul is going to experience. And that is why we are here today, to liberate ourselves, to make our soul free from the cycle of birth and death again and again and again. Very powerful testimony. मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूं अपने दोस्तों के लिए कि दांडी आश्रम पे जब 1 महीने के लिए हेतल जी गई आफ्टर
उनको मौका मिला कि पोरबंदर में अपने पिताजी के यहाँ पहले ध्यान करें, तो वो बहुत जैसे कहते हैं ना लकीर के फकीर, उन्होंने एकदम बुक से जो शब्द सीखे उसको फॉलो करना चाहा। उन्होंने कोशिश की कि मैं सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हूँ और जुड़ी रहूंगी स्वामी जी के साथ। उनको कोई इस तरह का स्वामी जी के स्थूल शरीर से लगाव ही नहीं था। उन्होंने पोरबंदर की भूमि से जो समुंदर के लहरें बहती थी, प्रार्थना करके ये मान लिया कि ये लहरें स्वामी जी तक पहुंचेगी, दादी आश्रम तक, और हमारा प्यार, हमारा समर्पण, हमारा भाव उन तक पहुंच जाएगा। तो 1 महीना उनको दांडी में जाके रहने को मिला। फिर इंटरनेशनल रिट्रीट 2007 के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए। उस वक्त पे रामबाई के द्वारा स्वामी जी ने कहा कि इसे बोलो कि मुझे आके कल मिले। जब आयुर्वेदा के बारे में उन्होंने लेक्चर दिया, तब स्वामी जी आश्रम में जिस हॉल में वो लेक्चर दे रही थी, बाहर ही बेंच पे बैठे थे। स्वामी जी ने बार बार कहा है कि आप स्टेज पे बोलते हो या गाते हो या प्रवचन देते हो, लेकिन जब आप मेरे ओरा में हो तो गुरु शक्तियां मेरे द्वारा आप तक पहुंचती है और आपको नियंत्रित करती है। आपके द्वारा ऊर्जा सुनने वालों को मिलती रहती है। और वही हेतल जी ने महसूस किया। और हेतल जी ने ये कहा कि स्वामी जी ने उनको एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी, एक तक दी, मौका दिया कि तुझे आयुर्वेद के बारे में आगे कार्य करना है तो गर्भधारणा संस्कार के बारे में तू कार्य करेगी। उस हिसाब से उन्होंने, स्वामी जी ने ये ऑफर दी, तो तब तो ये बहुत यंग थी, उनको अपॉर्चुनिटी आ रही थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं। उन्होंने अपने पिताजी से फोन किया कि स्वामी जी ऐसा ऐसा पूछ रहे हैं, मैं क्या करूं। उनके पिताजी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि मेरा दिल, मेरी आत्मा उनको नमस्कार करने लगी। ये बात सुन के उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा ये जो शरीर है ना, वह माँ बाप की वजह से, हमारी ओर से है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का सच्चा माँ बाप, तुम्हारी आत्मा की सच्ची माँ और सच्चे पिता गुरु होते हैं। तो गुरु ही हमें भवसागर के पार ले जा सकते हैं। तो अगर वो आपको कहते हैं कि ये करो, तो हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं, हमारे आशीर्वाद तेरे साथ है, तो जरूर वो कर जो स्वामी जी ने किया। और आगे चल के उनका जीवन एक आनंद स्वरूप और सक्सेस से भर गया, ऐसे कह सकते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही और बहुत प्रेरणादायक रही। आपको कुछ कहना है? और later, what happened? I just came to ashram for only 1 month, but with Swamiji's grace, later I thought that this is the thing that gives me satisfaction and inner happiness. So I thought to extend it, and I got involved in Gurukarya of Ahmedabad Mahashibir, and it really gives me the actual sense what is Gurukarya is, because like when we had, I think, visited many reputed institutes of Ahmedabad, and just we pray to Shukshma Sharif, we had a good team together, and wherever we get the energy flowed, and at that time I realized that yeah, this is the thing, something new is going on, and this is the thing, the inner peace, the inner self-satisfaction of the world of vibration. Later in 2008, I filled form of for ashram stay for 1 year, and I attended one Anushtan, and after that Anushtan, I felt much contented that this is the world, spiritual world, and I'd like to work here for whichever the project is given. Later, I was guided by Puji Swamiji regarding Ayurveda, and as Swamiji always says that he always try to bring up some good qualities. He in whatever the person he come across for a moment or for a longer time. So he used to tell me that I'd like to alive the doctor inside you, and he sent me to visit many centers of Ayurveda and wellness centers in South India and in other places of India too. So this is my Ayurvedic portion. It developed, and from inside
I should say that I felt that Ayurveda is a kind of knowledge that inner progress of a person, of a Vaidya, should be there. And in this journey of Gurukarya, we had a good team of youngsters, like in Saurashtra Darshan Shibir, in Ahmedabad Mahashibir, and in Ajmer Mahashibir. And I am quite happy that Hemali and myself worked together and we shared some good moments and good memories of Gurukarya. We always cherish. And it really connected us. It's quite we are so far, but whenever we talk, these moments of Gurukarya and the internal soul-to-soul relationship, nostalgic days. Nurture us that Swamiji has connected all the people that were not known to each other, and the way the group worked for Gurukarya, it is quite a good and memorable time for us. And later, when this project of Ajivan introduced, so I was quite working for Ayurveda and its project and whatever the discussion were going on, I was just working for Ayurveda. So we were instructed that there were some youngsters chosen for management category, and I was instructed by Puja Swamiji that I should be there, I should fill the form, and because I was devoted that I should work for Ayurveda, so it was not like that I was willing, I was like in that group of youngsters, those who were in management, but I was there for lifetime Ayurveda propagation and Ayurveda science and Ayurveda project work. So it was decided earlier in 2007, and it was materialized in 2000, I think, 9. It takes time, but it certainly happens by grace of Gurudev. Yeah, and so I was committed for the project of Ayurveda. You are such a lucky and blessed soul, I can tell you. And there are many who want to be part of this Gurukarya or such Gurukarya for Swamiji. And certainly this photo of you and Hemaliji makes us feel proud and connected with you, that Hemali is part of our Samarpan America's family. And she was lucky enough to work with closely with you and Swamiji's family in India. And this brings so many sweet memories. जैसे कि आपने कहा कि स्वामी जी के आशीर्वाद की वजह से आपको कई अच्छी मेडिकल इंस्टीट्यूट और आयुर्वेदिक क्लिनिक में विजिट करने का मौका मिला, उसके बारे में जानना सीखना मिला एक यंग एज में, छोटी सी उम्र में, और वह सिर्फ गुरु कृपा में हुआ। क्योंकि देखिए, आपके साथ तो कई लोगों ने ग्रेजुएट किया होगा, आपके साथ कई लोगों ने यह शिक्षा तालीम पाई होगी, लेकिन इसमें कितने खुशनसीब है जो सिर्फ भौतिक रूप में प्रोफेशन में सक्सेस नहीं पाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में भी उस ज्ञान का लाभ अपने लिए और समाज के लिए दे पाते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत बातें हैं, और यह आशीर्वाद की वजह से, यह गुरु कार्य की वजह से आपने युवाओं के साथ जो कार्य किया युवा अवस्था में और छोटी सी उम्र में गुरु कार्य किया, उसका आगे चल के क्या फायदा हो रहा है आपकी ही जीवन कथा में हम आगे देखेंगे। तब तक हम मोहित जी आ गए हैं, उनसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। मोहित जी, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि आजीवन साधक का विषय आपने कैसे चुना, उस मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित करने का कब और कैसे सोचा? ये सारी जो दर्शन शिविर में प्रचार कार्य हुआ, उसके बाद अहमदाबाद महाशिविर आई, सूरत महाशिविर में पहले से ही प्रचार कार्य में लगा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। तो आजीवन साधक का जो प्रोजेक्ट है, उससे पहले भी स्वामी जी ने एक प्रोजेक्ट दिया था सोल टू सोल रिलेशन का, जो अहमदाबाद में था, आत्मीय संबंध करके। तो उस प्रोजेक्ट के भी
मैंने अहमदाबाद में लगभग 30 से ज्यादा सेमिनार अलग अलग अहमदाबाद की जगहों पे लिए थे। क्या बात है। तो वो वो गुरु कार्यरती था। फिर स्वामी जी ने अहमदाबाद महाशिविर में जो प्रोफेशनल्स है उनके यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए भेजा, वो हुआ। फिर सूरत महाशिविर में प्रचार का कार्य हुआ। तो ये सब चल ही रहा था। और उसी टाइम में जैसे मैंने आगे बताया कि ये सन चैनल की जॉब लगी। मुझे लगता है कि ये गुरु कार्य करते 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 कुछ ऐसी स्थिति तक पहुंचे होंगे, या ऐसा हुआ होगा कि मैं वहां पे नहीं था, फिर भी ये लोग प्रिपेयर थे कि आपको ये सब कुछ आपको ही आना है, आपको ही करना है, यही सब कुछ। और you were appointed even though you were not there in the preparation. मैं तो नहीं था, मैं तो यहाँ पे था, अपॉइंटमेंट मैं वहां पे था, सब हो गया था, सब फ्रेंड्स आ गए थे। मेरा टेबल पे मेरा नाम टैग सब कुछ तैयार था, सिर्फ मुझे ही आना बाकी था। सिर्फ जाके बैठ जाना, बिन मांगे मोती मिले, जाके बैठ जाना था। और वो उस टाइम पे भी बहुत अच्छी जॉब थी उस टाइम पे, वो सही है। तो फिर ऐसे में फिर एक तरफ गुरु कार्य था, एक तरफ ये था। तो मेरी मम्मी से मैंने पूछा, तो माता जी ने बताया, देखो बेटा, जीवन में उनकी तरफ से जो मुझे सपोर्ट मिला परिवार की तरफ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, अपने जीवन में गुरु को, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे अच्छे फूल भगवान को चढ़ाते हैं, माने अपने को जो सबसे अच्छा प्रिय है वो भगवान को देते। तो तुझे तेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या है, क्या तू महत्वपूर्ण मानता है? मैंने बोला, मैं मेरी यंग एज, मैंने अपनी युवानी को मानता हूँ। तो बोले, वो गुरु के ऊपर लगाओ बेटा, तो तुम वो दो, तुम अपना श्रेष्ठ दो, पहले तुम दो, फिर गुरु के पास से कुछ ऐसा रखो अपेक्षा, माने। तो फिर वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा बैकअप रहा कि आजीवन के लिए मैं तैयार हुआ, वहां से मुझे ओके मिला। मम्मी ने ये आशीर्वाद दे दिए, ये तो आप दोनों के जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट रही कि आपके माता पिता ने अपनी ओर से पूरी तरह से साथ दिया, आपको प्रेरित किया कि जाओ इस गुरु कार्य में लग जाओ, हमारा आशीर्वाद और प्रेम तुम्हारे साथ है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत खूबसूरत बात है। आपको कोई चिंता नहीं पीछे मुड़ के देखने की। हाँ, वो मुझे पूरा सपोर्ट था, क्योंकि मुझे गुरु कथा के लिए आजीवन में रखा था। आजीवन पर गुरु कथा के लिए, मुझे गुरु कथा के लिए अपॉइंट किया गया था। तो स्वामी जी ने भी आपको एक कुछ बहुत सुंदर बात कही थी, जिसका हमने प्रमोशन में जिक्र किया है, तो जरा वो बात भी थोड़ी बता दीजिए। वो ऐसा था कि एक तरफ ये था, जैसे ये रहता ही है, जब भी हम किसी अच्छे की तरफ माने आत्मा की विकास की तरफ जाते हैं, तो स्वामी जी बोलते हैं ना, मैं सबको भागने का एक अवसर देता हूँ। बिल्कुल। तो देखता है भागता है कि नहीं भागता है। तो अपनी तो मैं तो सही में मानता हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं वहां गुरु के सामने आ सका, रह सका या हो सका। ये अपनी हैसियत नहीं है, वो ही करवाते हैं, पर अपने द्वारा करवाते ताकि अपने को भी ऐसा लगे कि हाँ करवाया ऐसा। तो स्वामी जी से मिलना हुआ, फिर स्वामी जी को मैंने बताया ऐसा जॉब लगी है। तो स्वामी जी बोले, अच्छा कहाँ पे लगी है? तो मैंने बोला, ऐसी जॉब है, क्योंकि मैंने जो मेरा पीछे का जो नेशनल यूथ फेस्टिवल में जो अचीवमेंट्स थे मेरे, और मेरा जो लेखन का जो चल रहा था ड्रामास वगैरह, तो उसके कारण इन लोगों ने सर्च किया कि ये आदमी ने प्लेस भी लिखता है और ये आदमी अच्छे से कंपोज भी कर सकेगा, इसको बता सकेगा। तो इसके कारण इन लोगों ने मुझे आरजे कम कंपोजर की जॉब वहां पे दी। तो स्वामी जी ने देखा अच्छा हुआ, तो मैं क्या करूं, ऐसा प्रश्न था। जो वैसे तो मैं क्लियर था, क्या करूं तो नहीं, अंदर से तो क्लियर ही था कि इधर ही आना है, पर फिर भी ये यंग एज रहती तो भाषा में सूत्रधार कहते हैं, सूत्रधार कंपोजर। थोड़ा डायले में जैसा था, एक पुश की जरूरत थी, एक धक्के की जरूरत थी। डिसीजन तो मैंने ले ही लिया था। तो फिर स्वामी जी से पूछा, तो स्वामी जी ने बोला, ठीक है तू जॉब कर ले, अगर तुझे जॉब करनी है तो तू जॉब कर ले, कोई बात नहीं है। फिर तू बुढ़ा होगा, फिर तू बुढ़ा होके मेरे पास आएगा, और फिर तू आके मुझे बोलेगा कि तू सेटल हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। फिर तू मुझे आके बोलेगा कि स्वामी जी मेरे को गुरु कार्य दो। तो मैं उस वक्त बोलूंगा, जा बुढ़े, तू मेरे कुछ काम का नहीं है, तू अब मेरे काम का है, आज युवानी में तू मेरे काम का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ
पर्टिकुलर मुझे ही नहीं बोला है, वो सारे युवाओं को बोला कि वो एक युवा वर्ष था और सारे युवाओं को बोला है कि यही बेस्ट टाइम है जहां पर हम इस जीवंत ऊर्जा को पहचान सकेंगे, उसको रिसीव कर सकेंगे और रिसीव करके दूसरी जगह पे बता सकेंगे। ऐसा ऐसा क्यों लगा, वो इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि ये प्रचार प्रसार के दौरान एक बहुत अच्छे लेखक है, गुजरात समाचार में लिखते हैं और बहुत अच्छे लेखक है, तो वो एक प्रकार से वो एक साधक भी है और उनके यहाँ पे अहमदाबाद में ओशो जी के शिष्य है। अच्छा। और बहुत अच्छी उनकी स्थिति है, बहुत अच्छा ध्यान करते, तो उनको हम महाशिविर के प्रचार प्रसार के लिए गए थे वहां पे। तो वहां पे तो उनके ऑफिस में तो मिलने वालों की लाइन लगी थी, तो हमने हमारा जाके कार्ड दिया कि ऐसा महाशिविर के इनविटेशन के लिए आए हैं। तो उन्होंने जो वहां पे था उनका जो चपरासी था, उसने बोला नहीं आने देंगे, इतने में आपको कहाँ जाने देंगे ऐसे कार्ड में। मतलब आप कार्ड तो दो, फिर जब मिलेंगे तब बुला लेंगे। तो कार्ड देख के उन्होंने बोला कि भेजो उनको। तो हम अंदर गए और बोले आ जाओ। हमने बोला थैंक यू सर, आपने हमको पहले बुला लिया। नहीं नहीं नहीं, आज वो ओशो जी के शब्द मुझे सही लगे। मैंने बोला कौन से शब्द है? बोले ओशो जी ने बोला था कि जब युवान ध्यान का कार्य लेके निकलेगा ना, तब समझो कि दुनिया के कोने कोने तक युवान पहुंच, तब ध्यान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। सही है। तो सही। आज तुम लोगों को देखकर मुझे ये चीज लगी, तो मैंने बोला सर पर इतने सारे लोग आप बाहर बैठे वेटिंग कर रहे, अरे ये तो आने ही वाले हैं, आत्मा के दोस्त कब आएंगे? बोले क्या बात, आज पहली बार आत्मा के दोस्त आए, तो बैठो बातें करो। वो बैठे तो उनको वेट करने दो। और वहां पे बाहर लोग बैठे और उन्होंने हमारे साथ 20-25 मिनट बातें की। नीचे ये रहता है गुरु की कृपा की इतने सारे लोगों के बीच वो उठ के नीचे आए, हमको सी ऑफ किया और दूसरे दिन अपने घर पे खाने खाने के लिए भी बुलाया। अरे वाह वाह वाह। एक ही मुलाकात सिर्फ। तो वो ये सारी चीजें मुझे लगा कि चलो देखो ये इतना बता रहे हैं। हाँ, ये तो ये सारी चीजों ने मुझे आजीवन के लिए बहुत तैयार किया, आजीवन के लिए। सही है, सही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातों में कि पहले तो आपने गुरु से संबंध बनाए, आपने गुरु को भी अपनी फेवर में कर लिया, फिर बाद में गुरु की कृपा से दूसरे लोगों को भी फेवर में कर दिया। तो फिर आगे अगले प्रश्न भी आने वाले हैं कि आपके बाजू में जो आत्मा बैठी है उसको कैसे फेवर में कर लिया, वो बाद में पूछूंगा। ऐसे 2-4 ऐसे कुछ माने हम वैसे कन्विंस नहीं होते, पर जब कोई गुरु अपने को बताता है तो हम कन्विंस होते हैं। जैसे वो महाशिविर के प्रचार प्रसार के दौरान में सूरत में एक कबीरपंथी गुरु का वहां पे उनको इनविटेशन देने के लिए गए थे। तो उनका भी कुछ प्रवचन चल रहा था और कुछ मेरे ख्याल से 500-600 लोग बैठे थे, हॉल पूरा पैक था। तो मैं वैसे ही प्रचार प्रसार के लिए वहां पे जाके बैठा, तो उन्होंने देखा, फिर वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे बोला कि गुरुदेव से मिलना है, मिलना हो सकेगा, इनविटेशन ही देना है हमको। तो बोले नहीं गुरुदेव तो नहीं मिलेंगे, आप देखो अभी प्रवचन चल रहा है, अभी भोजन का वक्त है, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रवचन है। बोले आप एक काम कीजिए, सिर्फ गुरुदेव को ये कार्ड दे दीजिए, गुरुदेव बोलेंगे तो मिलेंगे, बाकी हम नहीं मिलेंगे। सही है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। फिर उन्होंने कार्ड दे दिया। फिर वो आए, फिर उन्होंने बोला गुरुजी ने बोला है कि आप लोगों को भोजन करवाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो सब उनके शिष्य थे, उनमें हमको एक अलग वो टेबल पे भोजन दिया गया। बोले आपको ऐसे गुरुदेव ने बोला है कि मान सम्मान के साथ इनको भोजन दो। तो हमको थोड़ा अजीब लगा कि ये अपना रिस्पेक्ट अचानक इतना क्यों बढ़ गया है यहाँ पे। भाव बढ़ गया। तो भाव बढ़ गया अचानक। फिर भोजन पूरा हो गया, मैंने बोला मिलने का होगा कि नहीं होगा? तो बोले नहीं गुरुदेव ने बोला है कि भोजन के बाद तुरंत आपसे मिलेंगे। तो फिर हम अंदर गए। फिर उनके सारे शिष्य थे, जैसे ही हम आए तो उन्होंने सबको बोला आप बाहर चले जाओ, मुझे इनसे मिलना है। और एक अच्छा स्मित था उनके चेहरे पर, अंदर का वातावरण भी बहुत अच्छा था। फिर जैसे ही मैं बैठा तो मुझे पहला ही सवाल उन्होंने यही पूछा, तुमको मालूम है कि तुम किसका कार्य कर रहे हो? वो रहता है ना, हम कभी कार्य करते रहते पर अपने को कुछ मालूम नहीं रहता है कि किसका कार्य कर रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ हमारे गुरुदेव है, उनका नाम शिव कृपानंद स्वामी है और मैं उनका कार्य कर रहा हूँ। नहीं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। बोले तुमको मालूम है कि तुम क्या कार्य कर रहे हो? मैंने बोला हाँ प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं, शिविर का, अभी यहाँ पे महाशिविर होने वाली है। नहीं मैं तुझे समझाता हूँ कि तू क्या कार्य कर रहा है।
फिर मैंने वो स्वामी जी की पत्र जो इनविटेशन कार्ड था वो उन्होंने ऐसे हाथ में लिया और ऐसे नमन किया और ऐसे किया और फिर बताया, बेटा मैं उस गद्दी पे बैठ के जो कर रहा हूँ ना वो तू नीचे बैठ के कर रहा है। बहुत खूब, तेरा बहुत गुरु तेरे से क्या करवा रहा है तुझे मालूम नहीं है। वो सही। गद्दी पे बैठ के जो आत्म जागृति का कार्य करते हैं ना, वो तेरे गुरु तेरे से नीचे बैठ के करवा रहे हैं। तो वो जो रिस्पेक्ट था ना वो गुरु को था, वो जो था ना उसको था। तो मैं तो आऊंगा ही, मेरी तरफ से पक्का ही समझो बोले। तो इन सारे अनुभवों ने, हाँ, ऐसे एक एक्सपीरियंस अहमदाबाद में भी हुआ। तो जरूर सारे आप भी अनुभवों ने बोलना है मुझे, तो हेतल जी आप भी बोल सकते हो। वी कैन टेक बाय वन गेट वन फ्री। नहीं, वो अच्छे से बता सकते हैं इसलिए उनको बोला। नहीं, आप अगर थोड़ा अंग्रेजी में बोल देंगे तो फिर मुझे ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा। एक काम करते हैं मैं मैं थोड़ा इनका शॉर्ट में ट्रांसलेशन बताऊंगी, वो हिंदी में बताएंगे। हाँ जी, हाँ Like जी। when we were indulged in the propagation of Samarpan meditation during Ahmedabad Mahashivir, so at that time we invited many saints and preachers and religious people, reputed people, as always we invite. So it was, we were just thinking, yeah, it is Gurukarya and we should go and we should humbly invite them. But when we met a reputed saint and they were also meditating on the system of their Samadhist Guru. And the words he said, Mohit will explain in detail, but I just recall that word, that your master is going with a big ship and I have a little boat with me. So you now you came to know with whom are you connected, and we were just flat at that time. But which powers are there in Swamiji, and how they could recognize it before us. So Mohit will explain the meeting in detail. तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप बता दीजिए मोहित जी, फिर बाद में एक शब्द मुझे स्वामी जी के याद आते हैं। वो तो ये अनुभव से ये हमको ये पता चला कि हम कहीं पहचान नहीं पा रहे हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं दूसरे। हाँ नहीं, हाँ, तो उनसे जब मिलना हुआ, वो तो मैं उनसे जब मिलना हुआ तो कर रहे थे हम, और तब उन्होंने बताया कि तुम वो कर रहे हो जो मैं यहाँ गद्दी पे बैठ के करता हूँ, आप जमीन पे कर रहे हो। अभी आगे जाके अहमदाबाद में भी दूसरा अनुभव हुआ, उसके बारे में बताइए। तो वो अहमदाबाद में गुरु थे, उनसे मिलना हुआ। तो वैसे ही उनसे मीटिंग के लिए हमने टाइम मांगा, फिर उन्होंने हमको टाइम दिया, बाहर ही बैठे थे, फिर मिलने के लिए बुलाया, फिर इनविटेशन दिया और समर्पण ध्यान के बारे में उनको सब समझाया। फिर वो पूरा होने के बाद उन्होंने बताया, बेटा तेरे को एक बात बताऊं? हाँ बताओ। तो बोले, बेटा तेरे गुरु है ना, बहुत बड़ा जहाज लेके जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठे, बहुत बड़ा जहाज लेके जा रहे हैं और मैं एक छोटी सी नाव लेके जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात थी कि ये इन्होंने वहां पे ये बताया, मैं एक छोटी सी नाव लेके जा रहा हूँ और यहाँ से उस तरफ पार करवा रहे हैं। तो तू बहुत ही लकी इंसान है बेटा कि तेरे को इतने बड़े जहाज में इतनी बड़ी सामूहिकता के साथ इधर से उधर जाने को मौका मिल रहा है। बहुत खूबसूरत। बोले हमारे जैसी छोटी छोटी नावें भी भीड़ तुम्हारे जहाज के पीछे लग जाएगी। ये तो ये तो कितने बड़े आशीर्वाद की बात है कि आपने गुरु कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया और गुरु ने आपको उन महान आत्माओं तक पहुंचाया। जैसे कहते हैं ना, एक सूरज हर जगह पे जाके बात नहीं कर सकता, पहुंच नहीं सकता, लेकिन जहां न पहुंचे रवि ત્યાં पहुंचे कवि। जहां तक नहीं पहुंचता है गुरु या सूरज, वहां तक पहुंचती है सूरज की किरणें या उसका शिष्य। तो ये बहुत ही सुंदर बात है और किसी की भी आत्मा पुलकित हो जाएगी, अंदर से एकदम प्रसन्न हो जाएगी। और हमें मालूम नहीं है, देयर आर सो मेनी साधक्स हु आर डूइंग गुरु कार्य, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम किस खेत की मूली है, हम जिस खेत में हैं उसकी ही हमें पता नहीं है, हम जिस शेर के बच्चे हैं उसका ही हमें एहसास नहीं है कि हम शेर के बच्चे हैं। तो वो स्वामी जी ने एक बार एक प्रसंग बताया था कि मुगार में जहाँ पे बाबा स्वामी धाम है, तो वहां पे मोर के बच्चे गांव की वो
चिकन के बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन एक दिन जब मोर आया तब उसका रूप देख के वो मोर के बच्चे को पता चला, अरे मैं भी मोर हूं, मैं चिकन नहीं हूं। वैसी बात है कि हमको पता नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा में हमारे जीवन में जब ऐसे संत मिलते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये हमारे जीवन में कुछ अलग हो गया। आई विल समराइज लिटिल बिट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस दैट मोहित जी हैज टोल्ड अस that once he got first of all, my question to him was how you got involved in the lifetime devotee, as a lifetime devotee for Swamiji. So his mother gave him green light, and then he went to ask Swamiji that Swamiji, I want to uh, join, but I am getting the job opportunity from very reputed TV channel. Should I do this or should I not do this? So Swamiji says, look, you are young right now, and if you do the job, I will not stop you. You can go ahead and do the job. But what will happen if you go in the job market, in the material world, in the sansar, then one day you will be very successful and you will come with all the wealth and time. And then your body will not be the same. It is not equally powerful and capable of doing the Guru Karya. But you will say, Swamiji, I want to do Guru Karya for you. How can I help you? So Swamiji said, at that time, I am going to say, you old man, you are of no use to me. I needed you when you were young. How can I give you Gurukarya? There are so many young people standing with me. So that is the time when Mohitji decided, no, my mother was right, and I will follow my Guru's wish also. I am going to do Gurukarya for Swamiji, and that is how he became lifetime member. And in this process, he got so many opportunities to do Gurukarya. Once he went to Ahmedabad to the office of a journalist who was a disciple of Osho Rajneesh. And there were so many people waiting in a queue to meet him with appointment. But when that person received the card from Mohitji about this Shibir, he accepted the invitation and called him right away, leaving behind others. At that time, Mohitji asked, why you did not attend those people with appointment first and allowed us to come and see you? What a beautiful answer he got. He says, my dear soul brother, you don't know what you are doing. These people have been here for the material thing, for the work that I will do anyway. But you are my Guru's sent messenger. You are doing at the young age what Osho was telling, that the day young people will take over the job of spirituality and start spreading the meditation, that is the day the spiritual revolution will take place. And that is what is happening by the grace of Shiv Krupanand Swami today all over the world. I am very proud as the leader of Samarpan Americas to tell you that more than 50% of our devotees are young families, young parents, and young sadhaks. So this is not possible without the blessing of Shiv Krupanand Swami and the divine energy of Himalayan gurus. So we are very, very lucky in that sense also. Another example he gave is he got opportunity to meet a devotee who is serving as a guru. He is following Saint Kabir. So Saint Kabir is a renowned writer and poet also, and he has written so many beautiful bhajans and spiritual bhajans that can teach us the lessons of life. When that person came to know about Swamiji's invitation for attending this workshop or Mahashibir, he says that you invited us, and I am going to tell you that I feel very lucky. But do you know what you are doing? He asked the questions to Mohitji. Mohit say, yes, I am doing the Guru Karya because my Swamiji told us to go and spread this message and invite people from all over the different areas of the society. So he said, no, 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 I'm going to ask you again. Do you know what you are doing? He said, yeah, this is what my Guru says, and I think that by doing this, I'm making, giving service to my Guru. He said, let me explain you. He explained, what I am doing sitting on that throne as a Guru, you are doing the same work in the society by spreading the love and God's message, God consciousness to the society.
it is equally reputable and honorable. I certainly will join this Shibir and I will attend this. This is such a beautiful thing. And the third example that we heard from Hetalji and Mohitji, it was both in Hindi and English, so I don't have to translate. But I'm sure that you are enjoying this interview. Everything is going well, Hetalji? बच्चे ठीक है? तापमान सही जा रहा है घर पे? जा रहा है. Yeah, मजा आ रहा है. Don't worry, we have little bit of disturbance, but this is again Guru Chaitanya. If little bit of disturbance, that is not a problem for us. आपकी एनर्जी बनाए रखिए, आप संतुलित रहिए. स्वामी जी हम सबको संभाल के कार्य करा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है हमको. थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब दर्शन शिविर के बारे में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया. बहुत सारी जगह पे उन्होंने गुरु कार्य किया एज यंग डिसाइपल. तो अभी जो मेरा प्रश्न था कि मोहित जी को मैंने पूछा कि आपकी आत्मा को स्वामी जी ने इतना सुंदर मौका दिया है कि आप पहले तो गुरु से मिलने की इच्छा करते हैं, गुरु मिल जाते हैं. फिर आप अच्छी अच्छी महान संतों, महात्माओं, आत्माओं और दूसरी आत्माओं से जुड़ते रहते हो. तो आप दोनों की आत्मा कैसे मिल गई? क्या आजीवन साधक के रूप में गुरु कार्य करते वक्त आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया या गुरुदेव ने आपको जोड़ दिया इस लग्न ग्रंथि के माध्यम से? Looks like the connection is gone. Your video is frozen. Your video is frozen. जरा फिर से repeat करना last part. We were not able to listen that. Exactly, we both shared common aim of life for Gurukarya and invitation of divine souls. That is what Punyat Mahotran is called, and that's why we decided to get married. And sometimes we go through our own views and visions, but we are not aware that what is there planned for us or what is there waiting for us, rather I should say. That it's a very pious experience which we got just next year after the marriage. I think before we complete first 1 year of marriage, and that is Guru Puja. And Swamiji already indicated us that I have some plans for you, but you get married. You have a choice, and I'll bless you. Okay. It was decided before the Ajivan project introduced, and later in 2010 we got married in Samarpan Meditation with blessings of Parampujya Guru Ma. It was blissful atmosphere of Anushthan, Gahan Gyan Anushthan, and our parents were too much supportive, and with the blessings we got married. And just after that in 2011 we were given Guru Puja in Kutch Samarpan Ashram, and it was like we can't forget that moment. While absolutely, it's not, it cannot be explained in word. Guru Puja is a kind of thing that at this age we have never thought of that just after that we will get the opportunity. So it was like both the couples, all like since last few years we were observing that couples are doing that Guru Puja, and just we were being yourself on the stage is different. Yes, being yourself on the stage doing Guru Puja is totally different. Yeah, it's quite different, and at that time we are thoughtless, and we are feeling something inside that we can explain. We are just still like that, and energy is there who is doing all the things, and it was very good experience, and I am quite grateful for that. Parampujya Swamiji, Puji Guru Ma, and all Guru Shaktis for that just after our marriage they have gifted us that Guru Puja. Very nice, very beautiful. And here are some pictures of blessings of Gurudev. You already have two blessed children.
We already have them in the background noise. We can hear their energy. And Sorry for no, interruption. no. That is fine. That is fine. We generally add up the additional music as a background music. This time we don't have to do that. This is beautiful. So these are the divine souls. These are the blessed children who came on the earth through you and through Gurudev in our Samarpan global family. And you have named them as Mayur and Parag. Yeah. The How old older one is you? Mayur and little one is Parag. How old are they? Mayur is 6+ and Parag is 3+. Very nice, very beautiful. I can say that this family is really blessed because first of all, you got married by the grace of Guru, and then you were given the mission to bring Gurudev's gurus from heaven to come on the earth as Garbha Dharna Sanskar, one of the most dearest and powerful mission of Guru Shakti. And you are the ambassador of that project. I think hats off to you that your soul must have done some amazing karmas in the past life, that you received such a powerful Gurukarya and parents in this life. Very lucky, very blessed. Actually, I'd like to share 2 minutes in it. I was quite desperate, as I mentioned earlier, that how it could happen, painless delivery and these kind of divine souls when they're in the womb, what would be the feeling of that mother? And approximately, I think, 100 times I heard those tracks of Guru Shakti Avan and those painless delivery at that time when I started meditation. And I had got chance regarding it for discussion to Param Pujya Swamiji and Puja Guru Ma too. But when actually I felt it, I narrated my experience in detail, but I'll not mention right now. But 2 things I'd like to add in that. I conceived around for my first boy. It was like age was like 35, 36, and medically this age was not much favorable for normal delivery and some kind of a good pregnancy experience. But with grace, and I had a very good meditator, Sadhika doctor, accompanied me in my both pregnancy and delivery too. So my first delivery, it took some more time, but it was normal delivery with the power of Chitta of Param Pujya Swamiji, and there were no complication at all during pregnancy and delivery too. And the same in second delivery. And I am quite grateful from my deepest of heart for Guru Shaktis for this wonderful gift to me. There are no words for that. When we need some extra force, and when there are other factors, physical and medical, are in not favor, and though the result is outstanding, or we can say that fantastic, when my first delivery completed, liver was completed, and pediatrician remarks was that, was it normal delivery? He asked my friend and gynecologist that, was that normal delivery? His role is too good. Finding a good doctor in life is really worth for me at that time, a meditated doctor, a faithful doctor in Guru Shaktis, and it was the miracle of Chitta Shakti. Absolutely. That normal delivery could happen just because of her and Puja Swamiji and prayers of all friends and family. And pediatrician said that it's excellent baby. And how could it happen? So this is just, I just remember those days. This is a beautiful experience. This is a beautiful experience, and also give hope and confidence to those parents who are very career oriented in today's time and who are trying to bring children at the later age after 30, because most of the time, as you said, medically, woman's body probably, from my understanding, 30 or earlier is the most appropriate time to conceive the first baby, and then it is easier for the delivery and all the hormonal changes that the body goes through also. But your experience tells people, when you have a faith and when you have a grace from Guru,
everything will naturally happens. Everything will start happening automatically with the best available resources for you, whether it is doctor or hospital or family or any form of moral support that is going to encourage you and make one deliver baby without pain. Because sometimes we have heard Swamiji during his major programs like Guru Purnima and Chaitanya Mahotsav on the stage, while he is giving the discourse, he is listening to the prayer of a mother who is delivering baby in the operation theater. And this is the kind of connection Swamiji have with his disciple, with millions of souls all over the world. And that is what amazes people, that how can this be possible? It is beyond the logic. It is beyond the understanding on a physical and mental level, intellectual level, because everything in the world is consciousness. And here what we are talking and experiencing is divine consciousness. You want to say something more on this? Yeah, I'd like to add that though those who would like to go for this mission, they should plan as early as possible. That would be the most appropriate one. And another thing, regular meditation should be there. And third and last point is that you should surrender the things on the lotus feet of Pujya Swamiji. This is the subtle process that it really goes on since the preparation of the what we can say, that we both used to take meetings previously for Guru Shakti Avan, and we have came across to many incidents in many lives that once you step forward for it, things change. Exactly. Whether it is in social aspect or economical or family aspect, right. Any aspect of life, things get changed. And once you step forward, just one step you forward to Guru Shaktis, they will step forward 10 times to your way. And it's just a grace. It's Guru Krupa, nothing else. Swamiji says, you take one step towards me and I will move 10 more steps to help you and make it possible for you. So having a pure desire and strong desire is very important. But at the same time, if you don't meditate, that desire will not reach to Guru Shakti. If you do not meditate with reverence and samarpan, Guru's grace cannot reach to you. So that is the reason why regular meditation and collective meditation is important. And Gurukarya is going to create right opportunity and energy for you to make you, deserving recipient of that grace from the God. So very medically, medically, your physical and mental fitness too should be considered for this. It's not like that you ignore your lifestyle or diet or anything and then you would like to step forward. And spiritually, I think we both take the seminar together for Garbha Sanskar and Punya Pranartana. So spiritually, Mohit will explain regarding it. Spiritual lessons of yogi and what how one should manage the thought regarding it. Right. Let's go back to the question again. तो मोहित जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपके जीवन में इतनी पवित्र आत्मा जो आपके बाजू में बैठी है, उसके साथ कनेक्शन कैसे हुआ? क्या उसके बारे में भी आपने जैसे स्वामी जी से इच्छा की थी वैसी इच्छा की थी या फिर गुरुदेव ने कृपा बरसाई थी? तो मेरे ख्याल से हेतल ने बता ही दिया होगा। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, तो अंग्रेजी में मुझे समझता नहीं है। नहीं, हमने मैरिज के लिए हमें जो बताया गया था कि वो हमको बताया गया था कि आपको 1 साल के लिए वेट करना है। फिर उसके बाद हमने मैरिज के लिए स्वामी जी ने जब हमको ओके बोला, फिर हमने मैरिज के लिए मैरिज की है और गुरु कार्यरत थे दोनों। सही, वेरी राइट। ऐसे ही हम दोनों का मिलना हुआ है। तो ये गुरु कृपा में हुआ और जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, गुरु माँ के आशीर्वाद से आपको ये भेंट मिली है। जैसे
हेतल जी को मोहित जी मिले और मोहित जी को हेतल जी मिल गई, गुरु कृपा में, गुरु माँ के आशीर्वाद से मिला है। कितना सुंदर योग है, कितना सुंदर कन्यादान है और कितना पवित्र मौका है कि ऐसे पवित्र स्थान पे ऐसी पवित्र आत्मा के जरिए आपके जीवन की शुभ शुरुआत हुई। आपके दाम्पत्य जीवन में हम गुजराती में कहते हैं कि प्रभुता में पगला। सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। हमको सही में बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी, और ये आपका गुरु के प्रति जो समर्पण था वही आपको इतनी पवित्र आत्मा से जोड़ सकता है और मिला सकता है। बाद में उन्होंने बताया कि भाई बच्चों का भी आगमन हुआ, और बिल्कुल गुरुदेव की कृपा से, जैसे उन्होंने बताया कि सब अपने आप घटित होते गया सॉरी, मेरा गुजराती जैसा हिंदी है, तो सब अपने आप घटित हो रहा था, और स्वामी जी की कृपा से इतने प्यारे दो आत्माएं आपके जीवन में, आपके घर में पधारे। तो हेतल जी ने एक दूसरी सलाह दी कि आप अगर माता पिता बनना चाहते हैं तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके, पवित्र आत्माओं को आमंत्रित करके, उसमें आध्यात्मिकता का, विचारों का क्या महत्व है वह ख्याल रखिए। गर्भधारणा के ऊपर एक सुंदर प्रश्न हमने आगे रखा है, उसके ऊपर फिर अगले प्रश्न में बात करते हैं, जहां पे आप हमें बताइए कि पवित्र चित्त और हृदय के भाव का आमंत्रित आत्माओं का क्या महत्व है। सही है ना, जैसे हमने पहले वीडियो क्लिप में सुना। अमित जी अगले प्रश्न पे जाते हैं। उससे पहले, गर्भधारणा के प्रश्न के पहले हम जरा गुरु कार्य जो ओवरसीज किया गया है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं ये वीडियो। आयुर्वेद शास्त्र को वैश्विक स्तर पर मिला सम्मान। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित मुख्य कार्यालय में द हेमिसियल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर हेतल आचार्य का आयुर्वेद साइंस ऑफ लाइफ विषय पर सफल इंटरैक्टिव सेशन हुआ। यूनाइटेड नेशंस में विविध देशों के प्रतिनिधियों ने आयुर्वेद से स्वास्थ्य लाभ संबंधित संशोधन को सुना एवं प्रश्नोत्तरी में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कई विदेशी प्रतिनिधियों ने डॉक्टर हेतल आचार्य के पास नाड़ी निदान करवाया, जिससे उन लोगों की नाड़ी विज्ञान के प्रति विशेष अभिरुचि भी दिखाई दी। डॉक्टर हेतल आचार्य ने इस सेशन में स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण बात कही। हम अपनी कार की सर्विस नियमित समय पर नियमित रूप से कराते हैं तो कार अच्छे से चलती है। वैसे ही हमारे शरीर एवं मन की भी समय समय पर सर्विस कराएं तो हम बीमार हुए बिना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने स्वास्थ्य की व्याख्या देते हुए कहा है, संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का समन्वय है। वर्तमान समय में संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए आयुर्वेद एवं ध्यान का समन्वय बहुत ही लाभदायी एवं सहायक हो सकता है। हम सभी निरोगी रहना चाहते हैं कि कभी बीमार न हो। इसी विषय में वैद्य होने के नाते पिछले 7 साल के विशेष संशोधन में मैंने पाया कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, पंचकर्म एवं ध्यान का समन्वय अति आवश्यक है। पंचकर्म आयुर्वेद की 5 विशेष चिकित्सा पद्धतियां, जिसके द्वारा मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य एवं आभा मंडल के शुद्धिकरण का लाभ मिलता है। आभा मंडल मनुष्य शरीर के आसपास का एक सजीव ऊर्जा क्षेत्र है। स्वस्थ रहने के लिए आभा मंडल का शुद्ध रहना अति आवश्यक है। आयुर्वेद पंचकर्म द्वारा बाह्य शरीर एवं आभा मंडल का शुद्धिकरण होता है और उसके साथ
ध्यान को जोड़ने से मनुष्य अपनी अंतः ऊर्जा से संपर्क कर मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है, यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य आयुर्वेद पंचकर्म एवं ध्यान के समन्वय के द्वारा सहज सुलभ है। Another takeaway from your talk was meditation, which is food for the soul, medication for the soul, and we forget that, once we are, recognizing that and aware of our inner force, God said, let the force be with you. Force is there, but we moved away from it, and meditation is one way of being conscious of it and also purifying our thoughts. And once your spirit and mind is purified, physically, on the cellular level, everything is going to be fine. But all is all about switching our priorities. But we are not aware about thought pollutions we face each and every time, day-to-day life. So thought pollution is a kind of new pollution which has raised the question how to combat with thoughts. There are no pills in any science that will stop the thoughts. And for that purpose, we need meditation is the ultimate thing. We need meditation for mental peace. It connects with our inner energy source, our soul, and it balances our life. So if we are balanced from mind, we are connected with our soul, then brain will be relaxed and body will ultimately be relaxed. So I especially recommend all the people listening this and watching this interview that whatever the meditation is suitable to, one must do it for better health and wellness. Thank you so much, Dr. Hetal Acharya, telling us all about wellness, and very important to integrate meditation in our lives, to have a daily meeting with our inner selves so that we can get inner peace, which will lead to outer peace. Reporting from the United Nations, I'm Renee, ITV. That was really, really very beautiful video telling us about Hetalji's exposure to United Nations and how she did not only become medium for Swamiji to spread the knowledge of meditation in India, but also all the way up to United Nations by giving this talk on Ayurveda and meditation and connecting the dots of how these two streams of knowledge from India can benefit the overall holistic health of the mankind in the world today. So it's very, very, very powerful. अगली स्लाइड थोड़ा बता दीजिए, हेतल जी आए उससे पहले हम शायद दूसरे पॉइंट पे जाए, तब तक हम मोहित जी से बात कर लेते हैं। मोहित जी, गुरु कार्य के बारे में आपका जो योगदान रहा है उसके बारे में, अपार्ट फ्रॉम अर्ली डेज, आपने जो पहले के दिनों में तो बहुत सारी दर्शन शिविर और उसके बारे में कार्य किया, फिर आपका एक नया ही दौर चल पड़ा जिसमें आपने गुरु के जीवन की कथा, गुरु कथा को आगे बढ़ाया और बहुत से लोगों को उससे आत्मीय संबंध बन गया जैसे स्वामी जी के साथ। तो यहाँ पे हम कुछ तस्वीरें और न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। गुरु कार्य मुझे आजीवन साधक में गुरु कथा के प्रोजेक्ट दिया गया था। वेरी नाइस। और ये गुरु की कृपा में ही हुआ है, क्योंकि ये जो सारे विषय है वो इन सारे विषयों तक पहुंचने के लिए, ये सारे जो विषय है उसको समझने के लिए मैंने मेरी तरफ से तो तैयारियां की थी। शुरू में मैं कई गुरुओं से जाके मिला था, उनसे पूछा था कि आपके नजरिए से परमात्मा क्या है, आपके नजरिए से धर्म क्या है ये सारी चीजें उनसे भी जानने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे जैसे ही अनुभव होते गए और जैसे ही पीछे के जो अनुभवों को याद किया और उन सब को मिलाकर आफ्टर ऑल ये सब ब्लेसिंग के कारण ही हुआ है, उनके सूक्ष्म चित्त के कारण ही हुआ है, और चित्त ने उनके चित्त के कारण ही धीरे धीरे अंदर एक गुरु कथा किस तरह होनी चाहिए उसका एक प्रोजेक्ट अंदर बन गया। जैसे मैं पहले दिन पे जागृति के बारे में बताता था, तो जागृति के बारे में सब जो गुरु थे उनको जाके पूछा जागृति क्या है। जैसे कई गुरु कथाओं में अनुभव आया, जैसे मैं जूनागढ़ में गया था तो वहां पे मैंने जागृति के बारे में बताया, एक फोटो जूनागढ़ का भी मैंने है, तो वो जूनागढ़ में बहुत सारे साधु संत भी आए थे उस गुरु कथा पर। हाँ जी। तो उनको फिर पूरा होने के बाद उनका पहले एक क्वेश्चन था कि बेटा तुम ये जो जागृति के बारे में बता रहे हो
तो इतने बड़े समूह की तो जागृति होना असंभव है। मैंने बोला नहीं हो सकती, तुम्हारी शायद हुई होगी, तुम बता रहे हो तो तुम्हारी शायद हुई होगी। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं। बोले मैंने जूनागढ़ में साधना की है, मेरे गुरु है। तो मैंने बोला देखिए आपने क्या साधना की उसको तो मुझे मालूम नहीं, मुझे मेरे गुरु का मालूम है, और मेरे गुरु जो है वो समूह में करवाते हैं। आपको मैं अभी एक दिख रहा हूँ, आप चाहिए तो समूह ध्यान में आइए और वहां पे आके देखेंगे तो मेरे जैसे कई सारे लोग बैठे होंगे जिनकी जागृति हुई है। बहुत सुंदर। तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि इतने समूह में जागृति हो कैसे पा रही है। मैंने बोला ये एडवांस है, और ये टेक्नोलॉजी एडवांस है, जैसे बाहर की टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वैसे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। तो इन सबको मिलने के बाद धीरे 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 गुरु कथा फॉर्मेट होना शुरू होगी। जागृति का महत्व पता चला कि जागृति क्या है। तो वैसे मैंने जागृति के बारे में फिर पहले दिन में बताता था, फिर दूसरे दिन में गुरुओं के, फिर पता चला कि जागृति करने के बाद जो गुरु है उनसे, जो समाधि गुरु जो रहते हैं उनसे कैसे ये पहले के शिष्यों ने जागृति प्राप्त की, उन्होंने क्या किया, फिर उसके बारे में, फिर सबके बारे में फिर थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि सबके जीवन में जो भी प्रगति हुई वो जीवंत गुरु आने के बाद ही हुई। सही है, सही है, बिल्कुल सही। शायद उसको नोटिस करें तो पता चले जो भी सारे शिष्य डेवलप हुए हैं वो जीवंत गुरु के जीवन काल में ही हुए हैं, क्योंकि कोई एक जीवंत हाथ चाहिए ना उसको, अपने को चलाने वाला, अपने को पुश करने वाला, अपने को आगे पीछे कुछ से करने वाला कोई जीवंत हाथ चाहिए। तो उससे मुझे जीवंत गुरु का इम्पोर्टेंस पता चला। और फिर मैंने न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स लिखे हैं बहुत सारे विषयों पर, अलग अलग आर्टिकल्स दिए मैंने। और previous slide for the newspaper article, that is very powerful. आपने बहुत सुंदर गुरु कार्य किया है और गुरु कथा के माध्यम से जो भाव जगाया है ना लोगों के हृदय में, वो अमेजिंग है। क्योंकि कई बार हम एक ज्ञान को जो बाहर से मिला है, संसार से मिला है, उसको ही पकड़ के बैठे हैं। लेकिन जैसे स्वामी जी ने भी समझाया कि हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है वह उपनिषद के कालों से, वेदांत के समय से चला आ रहा है, जिसमें एक गुरु सिर्फ एक शिष्य की जागृति करता था। लेकिन पिछले 800 सालों से यह पद्धति हिमालय में चलती आ रही थी। जब स्वामी जी का शिव बाबा के साथ मिलना हुआ और फिर बाद में दूसरे गुरुदेव आए, स्वामी जी को फिर से हिमालय में ले गए और तभी स्वामी जी दूसरे 10 और गुरुओं से मिले। आज गुरुदेव के साथ 11 गुरुओं की शक्ति है और स्वामी जी ने कहा अब उनकी कृपा से, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव को अधिकृत किया है, आज वो रुपया नहीं रहा। एक गुरु एक शिष्य को जो रुपया देता था वो रुपया नहीं रहा, आज वो रुपया पैसों में बढ़ गया। मैंने उस चिल्लड़ को सारे संसार में बांट दिया, लाखों करोड़ों आत्माओं में बांट दिया, उस चैतन्य को लाखों करोड़ों आत्मा में बांट गया और इतना बचा है कि बाकी का अगले 800 साल तक मिल सके आने वाली पीढ़ी को, इसलिए मंगल मूर्ति में स्थापित किया है। तो हमारी जो शिव कृपानंद स्वामी जी की जीवंत मंगल मूर्तियां हैं, उसे जीवंत हम इसलिए कहते हैं कि जैसे आप अगर फोन यूज कर रहे हो तो आईफोन है, आईफोन ये मॉडल है, दूसरा मॉडल है, तो अभी मेरा ये 13 है, तो हर साल अगला मॉडल आता है, कार के बारे में अगला मॉडल आता है, यानी कि उसमें हम प्रगति करते हैं, हम रिवाइज करके फीचर्स डालते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी एक क्रांति हुई है। जैसे ओशो के शिष्य ने आपको कहा ना कि ये तो आध्यात्मिक क्रांति है कि युवा इस गुरु कार्य में लग गए, वैसे ये आध्यात्मिक क्रांति है कि एक गुरु एक शिष्य की नहीं, हजारों लाखों आत्माओं की जागृति कर सकता है। और उस हजारों लाखों आत्माओं का जब आत्मा से मिलन हो जाएगा, आत्मीयता बन जाएगी, तो वह मुट्ठी, वह सामूहिकता, वह चैतन्य बिल्कुल उस एक रुपये की तरह ही, एक गुरु की तरह ही हो जाएगी और वह आत्मीय सामूहिकता संसार में जाके गुरु कार्य करेगी। वह हो रहा है दिस इज समर्पण के माध्यम से, गुरु कथा के माध्यम से। तो आपने जो यह गुरु सानिध्य पाया, आपने गुरु के कार्य को आगे बढ़ाया, न सिर्फ शिव कृपानंद स्वामी जी के बारे में जाना, लेकिन जैसे आपने कहा कि जागृति के बारे में समझाया, फिर दूसरे गुरुओं के बारे में, जीवंत गुरुओं के बारे में समझाया। मैंने देखा है कि
भगवान श्री राम के जन्म में, भगवान श्री कृष्ण के जन्म में, साईं बाबा के जन्म में, ओशो रजनीश हो या फिर कितने भी गुरु होके गए, सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक जीवंत गुरु का आगमन हुआ। जब कुंडलिनी जागृत हुई तभी आध्यात्मिक प्रगति हुई है और एक आध्यात्मिक उत्क्रांति हुई है जीवन में। तो जीवंत गुरु का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो समझ सके उनके लिए अच्छा है, जो समझ के स्वीकार सके उनके लिए तो और ही अच्छा है, और जो स्वीकार करने के बाद उसके ऊपर साधना कर सके वह तो मुक्त होने के मार्ग पे चल पड़ा है। तो आप इस चीज को समझिए और इस विषय को समझिए, ये बहुत ही गहरा विषय है और इससे हमारा पूरा जीवन परिवर्तन हो सकता है। आई वॉन्ट टू समराइज वन थिंग, दैट मोहित जी has been appointed for Guru Katha based on his talent in developing the script for drama, in developing the expression as the how you say, the MC or master of ceremony. The way he was anchoring the stories, he got the opportunity to tell about the Guru story, what we call Guru Katha. Here he started telling about what is the importance of awakening. Here he started telling about what is the importance of a living guru in one's life. And with this, he explained the subject of meditation and self-awareness or self-realization with the grace of Jivanta Guru or living Guru. And he also gave taught about how, as you are saying, Adna Yugma Yogni Anivaryata, meaning that in today's time, how important it is to have yoga. And yoga is not just physical level asanas or pilates. Yoga is all about mind, body, and spirit reunion. And that can be possible or completed only at meditation when it goes on the transcendental state of samadhi. So very beautifully said, and I really like that. आपको कुछ और ऐड करना है मोहित जी? ये गुरु कथा के दौरान जिन भी गुरुओं की जगहों पर मैंने विजिट की, तो कई जगह पर मुझे ऐसा देखा लगा कि कई गांव ऐसे थे कि जहां पर जिनके गुरु थे बताते थे, जाते थे तो वो बोलते थे मुझे उस गांव में गए, फिर उनके गुरु के बारे में बताया, फिर मैं बोलता आपके गुरु कुछ लिख के तो गए होंगे। बोले नहीं हमारे गुरु तो कुछ, कई जगह पे से बोलते नहीं हमारे गुरु तो कुछ लिख के नहीं गए। नहीं बोले कुछ तो लिख के गए होंगे, क्योंकि कहीं पे कुछ उनका लिखा हुआ हो, क्योंकि उनके वचनों में जागृति बताते थे पर दूसरे शब्दों में बताते थे, अलग शब्दों में बताते थे। तो एक गांव में ऐसे ही मैं गया था, तो उस गांव में एक बहुत बड़ा एक जगह थी, वो बताते हमारे गुरु यहाँ से अचानक चले गए। तो मैंने बोला कुछ गुरु की चीजें आपने कुछ संभाल किया वगैरह कुछ रखा है क्या, तो कुछ बताइए। तो फिर वहां पे गए, फिर बोले हाँ हमारे गुरु कुछ लिख के गए। फिर उसमें से एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि वो जाने से पहले, बहुत सालों पहले की बात है, तो बोले वो गांवों में सब लोग अमीर थे, माने आप कोई भी आपको गरीब दिखेगा नहीं, पूरे का पूरा गांव अमीर था। और वो जब गुरु गए ना, तब गुरु ने बताया था बेटा चाह बोलो क्या चाहिए, तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे दिए रखा है, यहाँ पर मेरी सेवा की है, तो गांव वालों बोले क्या चाहिए तुमको। तो वो वृद्धजन ने बताया कि हमें तो कुछ मालूम नहीं था और खेती बाड़ी वगैरह करते थे, तो उससे हमने बताया कि हमको बस हमारी पीढ़ी, हमारी धन संपत्ति हमको सब मिलती रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहे, सही है, ऐसा हमको चाहिए। तो वो ऐसा ब्लेसिंग देके गए थे। तो वो गांव में मैंने भी पहली बार देखा कि पूरे के पूरे गांव में, गांव था पर गांव नहीं था, पूरे के पूरे सब गांव में सबके घर पे कार थी, सबके घर पे बंगले थे, सब था। हाँ समृद्धि थी, सब थी, सबके पास सब कुछ था। फिर मुझे उसमें से ऐसा लगा, जैसे ही उनकी सब बुक्स वगैरह पढ़ी, फिर मुझे लगा कि ये तो सिद्ध थे, अगर ये मेरा मानना है, ये तो सिद्ध थे, पर गुरु के पास जीवंत गुरु थे, वो कुछ भी दे सकते थे। अगर किसी ने जागृति मांगी होगी, अगर किसी ने आत्मिक प्रगति मांगी होती, तो वो भी मिल सकती थी पास से। तो यही बात है, स्वामी जी अपने प्रवचन में कई बार कहते हैं, और ये मेरा जीवन का भी अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, कि स्वामी जी कहते हैं एक गुरु का
आपके जीवन में आगमन होना अपनी जरूरियात के लिए वो एक बात है, और हम उस गुरु को आमंत्रित करें वह दूसरी बात है। वैसे ही गुरु के कार्य को हम मांगे वो एक बात है, और हमसे गुरु कार्य हो जाए वो दूसरी बात है। तो जब हमको ऐसे गुरु मिलते हैं ना, तो कभी भी भौतिक चीजें मत मांगो, स्वामी जी कहते हैं। उस वक्त पे आप अपने भवसागर से पार होने के लिए ऐसा कुछ मांग लो कि बार बार जन्म न लेना पड़े, आपको मुक्ति मिल जाए, आपको मोक्ष मिल जाते जाए, और जीवंत स्तर पे जीते जी ही मोक्ष मिल जाए। तो ये बात है। मुझे और मेरी पत्नी को बिठा के स्वामी जी जब पहली बार आए ना, तो हम दोनों को कहा, 2001 की बात कर रहा हूँ, कनाडा में, जिस रूम में स्वामी जी बैठे रहते थे, वहां पे बिठाया सामने दोनों को, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो मेरी पत्नी को अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं समझता, उसने वही किया जो गांव के उस बुजुर्गों ने किया। वो बोलते हैं कि स्वामी जी ये घर तो है, अभी हमारे बच्चे हैं, परिवार बड़ा है, बड़ा घर मिले इसलिए हमें आशीर्वाद देना। तो आज हम अमेरिका में हैं, मॉन्ट्रियल से ज्यादा अच्छा बड़ा घर है, वो इच्छा पूरी हो गई। लेकिन मुझे पूछा स्वामी ने, तुझे क्या चाहिए? तो मैं इतना कोई ज्ञानी तो था नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होंगे। मैंने स्वामी जी से कहा, गुरुदेव आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे तो इतनी खुशी हो गई आपको मिलके कि अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों की पादुका मुझे दे दीजिए, क्योंकि उसमें मुझे सारा स्वर्ग मिल जाएगा। और आज भी वो पादुका हमने वहां पे पीछे रखी है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे स्वामी जी साक्षात इस घर में पधारे हैं। जिस सोफा पे स्वामी जी बैठते थे, उस गादी स्थान को भी हमने रखा है, क्योंकि उससे बड़ा कोई जीवन का मूल्यवान चीज हो ही नहीं सकती, उसकी बड़ी कोई मूल्यवान चीज हो ही नहीं सकती। और इसी में हमें गुरु की कृपा मिल गई, गुरु का चैतन्य मिल गया। कहते हैं कि गुरु के चरणों की रज में सारा संसार और स्वर्ग दोनों मिल जाता है। तो यह ज्ञान कहीं ना कहीं पढ़ा सुना या पूर्व जन्म के मिला होगा, तो वो हमने पा लिया, और इससे हमारा जीवन बदल गया। मैं कहता हूं कि फिर तो तुमको लाख में भी खाक दिखती है और खाक में भी लाख दिखता है। ऐसा गुरु की कृपा है। आपकी आत्मा अगर राजा बन गई ना, तो संसार की सारी चीजें छोटी लगती है, और ये गुरु की कृपा है। बहुत ही सुंदर आपने अनुभव दिया, और ये गुरु की बात आप कर रहे हो, अलग अलग गुरु के बारे में कथा सुनी, कही आपने। वैसे ही हमारे एक साधक है पारस भाई भट्ट, जो अलग अलग गुरुओं के बारे में, हमारे भारतीय संस्कृति के संतों के बारे में खूबसूरत वीडियो बना के यूट्यूब पे रखते हैं। आप जरूर देखना अगर आपको मौका मिले। पारस भट्ट की यूट्यूब चैनल है, और गुरु कथा इनकी भी है। हमारे गुरु तत्व चैनल पे मोहित भाई काचा की गुरु कथा आपको जरूर सुनने मिलेगी। बहुत ही अनेरा आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी आपको। आई एनकरेज एवरीवन टू लर्न मोर अबाउट गुरु कथा फ्रॉम मोहित जी द यूट्यूब चैनल गुरु तत्व, वेयर इट सेज गुरु कथा। वो गुरु कथा के जो, जैसे मैंने बताया ना कि वो सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे पता चली कि गुरु के पास क्या मांगना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए। पर ये ना, ये जो सारी प्रक्रिया है ना, वो एक जीवंत गुरु के, मैं हर बार बताता हूँ, कई बार कोशिश करता हूँ कि अच्छे से बता पाऊं, क्योंकि मैं अपने आप को भी बताता हूँ, सामने वाले को भी बताता हूँ, खुद भी समझता हूँ कि जीवंत गुरु को हम जो मान रहे हैं उससे वो बहुत ज्यादा है। सही। जैसे स्वामी जी को ही देखिए, हम अभी तक स्वामी जी को पहले था सदगुरु मानते थे, फिर माध्यम, ये भी हमको कहाँ मालूम था कि गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, और उसके बाद माध्यम आते हैं। फिर स्थूल और सूक्ष्म का पता चला। हाँ, माध्यम माने क्या, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि माध्यम माने कोई किसी की जागृति, कोई जागृत पुरुष के सानिध्य में रहो, वो अलग बात है, और अपनी जागृति कर सके वो अलग बात है। सही। ऐसे इंसान बहुत लंबे वक्त के बाद आते हैं कि जो किसी और की जागृति कर सके। ऐसे ना जन्म बहुत लंबे अरसे के बाद लेते हैं। तो ये हुए सदगुरु, अब ये माने ये हुए माध्यम। अब उससे भी आगे स्वामी जी बता रहे हैं अवतार, माने इससे पता चल रहा है कि ये कौन सी सत्ता इस धरती पर आई है। अवतार माने मांगना भी क्या है, वो अपने को भी मांगना नहीं आता है। मुझे वैसा लगा, मुझे अपने को भी कुछ मांगना नहीं आता है, पर जैसे ही उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ एक
एक संबंध बनता है उनके साथ, और फिर मांगना भी वही सिखाते हैं कि क्या मांगना चाहिए। सही तो सही। ये भी फिक्र करने की छोटी, मुझे कई बार छोटा था ना तब भी लगता था कि ये हनुमान जी थे, ये जो बड़े बड़े शिष्य थे, वो कैसे जो चीज बोलते थे वो राम भगवान से उन्होंने, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि वो राम भगवान से बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना अगर उस मोती में राम नहीं है तो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है। तो मैंने, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता था छोटा था तब भी कि ये कौन सी चीज रही होगी कि मोती भी छोड़ दिया और ये राम को ही माने इन्होंने राम में ऐसा देखा क्या होगा। फिर धीरे 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 जैसे ही हम जिसको जैसा अपना आदर्श मानते हैं वैसे वैसे अपने आप को होना शुरू हो जाता, फिर पता चला कि स्वामी जी से जितनी जुड़ते जाते ना वैसे स्वामी जी अपने को सिखाता है कि मांगना भी क्या चाहिए, मांगना भी यही सिखाएंगे अपने को, और वो अपने से वही मंगवाएंगे जिसके कारण हम इस धरती पे जन्म लिया है, वही हमसे मांगना सिखवा रहे हैं। अगर गुरु से कनेक्ट हुए ना तो वो अपने को बराबर सिखाएंगे कि बेटा मेरे से क्या मांगना चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरे से क्या लेना चाहिए। तो ये समर्थ गुरु है। और कई बार मुझे ऐसा होता है, मैं वी आर सेलिंग ऑन सेम बोट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आगे हूँ, पर कई बार ऐसा हो रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इनके जीवन काल में एक बहुत बड़ा अवसर है आत्मिक प्रगति करने का, अपने आप को, अपने आप से, अपनी आत्मा को क्या चाहिए ना, अगर ये भी जानना है तो इनके माध्यम से ही जानने को मिलेगा। सही। बाकी अपने को जानने को, अपनी आत्मा क्या चाहती है, अपने को कौन सी आत्मिक प्रगति चाहिए, तो जैसे 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 इनके साथ जुड़ते हैं, इनके साथ भावनात्मक संबंध होता है, वैसे वैसे अपने को पता चलता है कि सही में मेरी आत्मा की क्या इच्छा है। सही है सही वो है। ये बहुत जरूरी है कि मेरे को, और ये बताए उससे भी ज्यादा मुझे फील हो कि मेरी आत्मा की क्या आवश्यकता है। तो ये जीवंत गुरु कर सकते हैं, ये यूनिक चीज है, और ये यही कर सकते हैं, और एक की नहीं समूह की कर रहे हैं। तो अभी अभी अवतार आया है, तो मैं उसके ऊपर भी थोड़ा अवलोकन कर, अभी अपने आप को अवतार बता रहे हैं। माने अवतार माने क्या, ये कौन सी, ये मेरा अवलोकन है ऐसा, जैसे राम भगवान थे उनके जीवन काल में ऐसा नहीं हुआ होगा, कृष्ण भगवान के जीवन काल में ऐसा नहीं हुआ होगा, पर मुझे लगा है कि इनके जीवन काल में पहला, ये स्वामी जी भी बताया था, और मुझे भी लगा कि एक पहले ऐसे अवतार आए जिनके जीवन काल में उनका सूक्ष्म शरीर डेवलप हो गया है। माने इनका वर्किंग एरिया जो है वो इतना बड़ा है कि एक फिजिकल बॉडी से पहुंचा ही नहीं जा सकता, इसलिए अपना सूक्ष्म शरीर डेवलप किया। तो ये पहले ऐसी बहुत यूनिक चीज है जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। मुझे कई बार होता है कि ये बहुत ही यूनिक चीज है कि एक सूक्ष्म शरीर जो पूरी दुनिया में व्याप्त है, जो अपने से कनेक्ट है और अपनी सारी बातों को समझ रहा है, अपनी सारी बातों को जान रहा है, बातें कर रहा है, जानना। और वो तो दूसरी बात कर रहा हो, मंगल मूर्ति के सामने जाके ध्यान करो, पहली बात तो आपके सब विचार बंद हो जाएंगे, इच्छा छूट जाएगी, मांगना। स्वामी जी ने मुझे एक बार, ऐसे ही बात हुई थी ना, तो ऐसे मीटिंग में एक बार सेवाधारियों की जो मीटिंग थी उसमें एक बार बताया था ऐसा ही, कि ऐसे ही बात चल रही थी, तो स्वामी जी ने मीटिंग में बताया कि मेरे अंदर इस वक्त कुछ अनुभव, स्वामी जी सुबह ध्यान करके आए हैं, स्वामी जी ध्यान में से सुबह 4:30 बजे के ध्यान पूरा करके फिर बैठे थे, तो स्वामी जी ने बोला, मैंने मेरे अंदर कैलकुलेट करना चालू किया तो 20 लाख लोगों से भी, ये भी मेरे ख्याल से आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है, स्वामी जी ने बताया कि 20 लाख लोगों का डेटा है मेरे अंदर इस वक्त। माने 20 लाख लोगों का, उसका पूर्व जन्म, उसका आगे का क्या, उसका अभी का क्या, सारे का सारा डेटा उसके अंदर, मेरे अंदर है। ये तो 20 लाख तक का था। फिर स्वामी जी ने बताया कि वो गुरु माँ ने मुझे चाय पीने के लिए नीचे बुलाया, 30 लाख तक पहुंच गया था, ये उससे भी आगे जा सकता था। फिर वो चाय पीने के लिए बुलाया, तो इससे अपने को पता चल सकता, इससे अपने को पता चलेगा कि ये कौन आया है। सारी आत्माएं जुड़ी है, और ये आत्मा कौन है, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमको जानना है, समझना है और जुड़ना है, ये आत्मा कौन है। स्वामी जी कहते हैं, हम तो कहते हैं ना, वो मंदिर में भिखारी होता है और मंदिर के बाहर भी भिखारी होता है, तो हम वो मंदिर के भीतर जाने वाले भिखारी है कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे नौकरी दे दो, पैसा दे दो, बंगला दे दो, बच्चे की शादी करा दो। ये तो छोटी चीज है, ये मांगना छोड़ दो, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यह जब हम मांगते हैं तो सिर्फ 2 हाथ से मांगते हैं, उसे भीख ही कहा जाता है। लेकिन स्वामी जी तो हमें राजा बनाने के लिए आए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि सहस्त्रार पे आ जाओ, राजा बन जाओ, फिर तुम मांगोगे नहीं, तुम्हारा हाथ ऐसे हो जाएगा। मेरे खुद के अनुभव है कि ध्यान करने के लिए ऐसे बैठता था ना, ऑटोमेटिकली हाथ ऐसे हो जाता था।
यानी कि गुरु कहता है कि भाई तेरे पास मांगने के दिन खत्म हो गए, अभी देना शुरू कर, काम कर मेरे लिए। तो ये बात है, ये गुरु की कृपा है। उस शक्ति को हम समझ ही नहीं पाए हैं। और मैंने एक प्रश्न किया था स्वामी जी के साथ ट्रैवल करते करते कि गुरुदेव, आप जैसी आत्मा के साथ मिलकर मुझे ऐसे लगा कि मेरे कई जन्मों के प्रश्नों का आंसर मुझे मिल गया। मुझे इतनी संतृप्ति, इतना संतोष, इतना समाधान मिल गया है, और मैं कुछ अभी कुछ चाहता ही नहीं हूँ। अभी मेरे को लगता है कि मैं तैर गया, यानी कि अभी मेरा हो गया काम। तो मुझे ये जानना है कि मृत्यु के बाद क्या, अभी आप क्या, अगर आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, तो फिर आपके जाने के बाद दूसरी आत्माएं आएगी, उनका क्या? उस वक्त पे तो मंगल मूर्ति का कोई यही नहीं हुआ था। तो जो कबीरपंथी गुरु ने आपको जो कहा ना, वैसे ही स्वामी जी ने कहा कि अभी मैं अपना जहाज लेके आया हूँ, सबको बोल रहा हूँ आओ बैठो, जहाज जाने को तैयार है। कुछ लोग आएंगे, रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे, प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे, एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन बैठेंगे नहीं। नहीं, मैं इसमें नहीं, दूसरी गाड़ी में बैठूंगा, दूसरे प्लेन में बैठूंगा, तो वो छोड़ देंगे। वैसे ही कुछ ज्ञानी लोग आएंगे, सब कुछ जान लेंगे, निचोड़ लेंगे, लेकिन फिर वो प्रगति नहीं करेंगे, क्योंकि साधना नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। ये बात स्वामी जी की है। और उसको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको, दूसरे किसी को नहीं, आपको ध्यान करके भीतर जाना पड़ेगा। अपनी आत्मा को पहचानोगे तभी स्वामी जी की आत्मा को पहचान सकेंगे। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आधा घंटा दान कर दो, स्वामी जी को समर्पित कर दो। ये मेरा खुद का अनुभव है, और कई आत्माओं का कल्याण हुआ है। सूक्ष्म रूप से स्वामी जी साक्षात सारे विश्व में बैठे हैं। जो हमारे पीछे ये जो फोटो है, वो सूक्ष्म शरीर का फोटो है। उसी शरीर से गुरु का चैतन्य हम सबको मिल रहा है, आपको भी मिल वैसे भी रहा है। गुरु के प्रति जो वो बताते हैं ना हम, वो प्रेम, माने एक के स्वामी जी के जो प्रति प्रेम है, मुझे कई बार जो सारे अध्ययन किए ना, उससे ही मुझे कई सारी बातें पता चली। जैसे एक छोटा सा अध्ययन जो मुझे बहुत टच करता था कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक आदमी के सामने से बुद्ध भगवान 30 बार उसके गांव में से निकले थे। हाँ जी, और हाँ जी। 30 में से किसी भी बार उस आदमी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ जी। और जब उनको पता चला कि बुद्ध भगवान अब देह को छोड़ने वाले हैं, और वो आखिरी बार था, हाँ जी, जब उनके जीवन में आए थे, वो आखिरी बार था, और उसको भी पता चला कि अब निर्वाण लेने वाले हैं। अब तो वो उस टाइम उसको सब छोड़ दिया, उसने अपना 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 जो व्यापार था, धंधा था, घर था, सब कुछ छोड़ दिया और वहां पे आ गया। और कहते थे कि भगवान बुद्ध ने बस देह छोड़ने ही वाले थे, छोड़ ही दिया था जैसे। और शिष्य ने बोला कि अब तो आप बहुत लेट हुए। तो बोले नहीं नहीं, मुझे मिलना है। तो भगवान बुद्ध उसके लिए वहां से नीचे आए थे और बोला था कि इस एक को, ये मेरे दर पे कोई खाली नहीं जाना चाहिए। सही है, तो बिल्कुल। ये आया है तो उसको मैं पार करवा के ही रहूंगा। तो ये इनकी करुणा रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी के जीवन काल का जो है ना, जीवन गुरु के जीवन काल का एक एक क्षण बहुत बड़ा अवसर है। सही। अगर अपनी आत्मा जुड़ जाए तो मंगल मूर्ति के सामने जाओ या कैसे जाओ। तो मैंने मेरे लिए एक चीज बनाई, मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए नहीं, ऐसा लगा कि अगर मंगल मूर्ति के सामने जाए तो मंगल मूर्ति से कैसे जुड़े, कैसा भाव रखे। तो मुझे गुरु माँ ने भी समझाया था, पर मेरे मन में जो भाव आया था वो ऐसा भाव था कि मैं ऐसा बताता था कि इन शॉर्ट में मैंने जो गुरु कथा में ये अनुष्ठान की जो गुरु कथा थी ना, उसमें मैंने एक शॉर्ट में मुझे ऐसा लगा था कि मेरी मुंडी सदा झुकी रहे ताकि मेरी आत्मा तेरे सामने उठी रहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एंड ये है बस, ये मेरी मुंडी सदैव झुकी रहे तेरे सामने ताकि मेरी आत्मा उठी रहे। बस तेरे जीवन काल में बस वही वो हो जाए तो बस। या बहुत बहुत सुंदर कहा। और इसलिए जो भक्त शिरोमणि नरसिंह जी है, उन्होंने भी यही कहा, मुझे हमेशा भीड़ में रखना। भीड़ में यानी कि मुसीबत में रखना, ऐसे ही क्राइसिस में रखना। बिकॉज जब मैं भीड़ में रहूंगा तभी मुझे भीड़ भंजन का साथ मिलेगा, तब मेरा चित्त उनके ऊपर रहेगा। तो वैसा ही इसे समर्पण कहते हैं। जो आपने कहा ना, मेरी मुंडी नीचे रहे, शब्द आप जरा, सॉरी ये मेरा आईफोन श्री देवी बहुत डिस्टर्ब करती है। हाँ, तो यह बात है। मुझे जब गुरु पूर्णिमा के वक्त जूनागढ़ आया था ना 2007 में, आप मानोगे नहीं, मेरे अंदर से यही समर्पण का भाव निकला। और मैं गुरुदेव को ये प्रार्थना कर रहा था कि गुरुदेव,
ये रही तलवार आपके हाथ में और ये रहा मेरा शीश, आप या तो उसे काट दीजिए या उसको उठा दीजिए, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। मैं आपको संपूर्ण तरह से समर्पित हूँ। तब जाके हम आध्यात्म में प्रगति कर पाते हैं। संपूर्ण सब कुछ, यानी कि मेरा कुछ है ही नहीं, वो सब दे दिया, तब संपूर्ण समर्पण हो गया। तो very beautiful thing. Thank you very much, Mohit ji, for sharing this. I want to summarize a little bit for our audience, and then we will go on the Hetal ji's question. Okay. Guru Katha is such a beautiful thing, and Mohit ji has mentioned the importance of grace of Guru, where you are not asking, you are not expecting anything, you don't have any attachment to anything, you are totally surrendered to Gurudev. And when you have that kind of things, then Guru's grace starts showering, then things will start happening naturally, automatically, and then you will start reaping the fruits of your sadhana or penance or austerity. And this is where we need meditation. This is where we need collectivity of divine souls, pure holy souls, because that helps us to grow spiritually and to receive the grace of Guru in our life. Because every human being who has evolved or who lived as avatara in their life, reincarnation of the divine energy, manifestation of divine energy in the physical form as human body, all of them had one or other form of Guru who awakened them. And that is what Mohit ji tells the story of different gurus in his Guru Katha, or the story of Guru, as one of the important aspect of his Guru Katha. Very beautifully said. Thank you very much. Hetal ji, मैं आपको कुछ प्रश्न इसके बारे में पूछना चाहूँगा. I will go back to your questions about the Gurukarya in India as well as overseas. So we watched the video about your United Nations presentation, and please tell us a little bit about that experience when you came to USA, and we would like to invite you again to USA now that you are sharing such a beautiful memories and so much knowledge with us that we want to meet you personally, not just on TIS. आपको मैं यहाँ से ही आमंत्रण दे रहा हूँ. Please come and enlighten us, but share us this anubhuti, this experience. What happened and how did you reach to this United Nations talk on Ayurveda? Thank you for your invitation. Regarding this United Nations achievement, see, any kind of achievement, if we observe, if it is achievement indeed, it is I have found that it's a collective effort in my life. Exactly. Collectivity of my brothers, my family, my in-laws, and blessings of Param Puji Gurudev. Very nice. I have gathered few options because Puji Gurudev wanted me to practice Ayurveda in society, and in that context there were few options I just placed in front of Puji Gurudev, and at that time he said that I feel strong vibrations from America, you go to America. Okay, then we discussed few things. Another time he said the same thing, and at last he stood up and he said that I feel strong vibrations from America, you just go there. He said it, but his powers and support of family and friends made it happen. My brother is there in US and he invited me. Okay, at that time I was not aware that what will happen in USA, how will the things go, whether I didn't even think of United Nations lecture. Okay, it was a faith and it was support of family. My elder brother accompanied me, and we came to USA. We stayed in a hotel, and you people are staying there, so you know the things that how difficult is there to meet people and
many of them were available in weekends. Yes. So for few days I have wait in hotel, and few of them were available in weekdays too. So we tried to meet them, and my brother coordinated it very well. And when some times were there when I stayed in hotel, so I just prayed to Mangal Murti from my deep heart that for whichever the purpose you sent me here, you and only you should fulfill that purpose. Mm-hmm. Because just because of your own words, I came here. And I often, every day almost, I talk to Mohit, and he too, he was in support of these things that, okay, once you're living master, when the words are not words, there are, see, there Adesh, is you can say. great force of energy behind those words. He told me that Swamiji said to you that energy will work definitely there. Absolutely. So he never let my model down there, because we met many people in New Jersey and New York. He said that, yeah, Swamiji has sent you, so have faith and feel free, be cool and calm. And often I just observed first time USA, and I prayed that Swamiji, everything is here. Just only one thing is needed: materialistic progress and the technology and intellectual perceptions are there in mind of people. Only one thing is needed, that is the proper direction. So I prayed that please shower your blessings and proper directions in a direction to the people. Then what happened? We met many people in many groups, and I met a gentleman, and we met in a dinner, and I just talked to him regarding my knowledge of Ayurveda and Aura and Nadi Pariksha, which is the ancient science of Ayurveda. And I really bow down my Guru of Ayurveda, from whom I learned Nadi Pariksha in detail during my postgraduate studies. He was the first class 1 officer of Gujarat state, and he was a very noble Vaidya. I use the term Vaidya because he was a very noble Vaidya, which we can imagine the purity of Chitta, and everything was there, and he taught me. And later, with spiritual science, I personally felt from inside that if you would like to know any kind of living science, the base is the knowledge of vibration and meditation, like Ayurveda, yoga, astrology, means Jyotish, or any other Indian science. The base is the knowledge of vibration. It helps a lot. So when again come to the USA tour, so I never imagined that if I come to US, this science of Nadi Pariksha and meditation will reach to United Nations people, and never imagined that. But the fellow whom we met, and then he extended the meeting once, twice and thrice. And he asked for Nadi Pariksha. So I did yes, because my inner spirit was like that I should spread to the knowledge of Ayurveda, ancient science, and meditation to as many as possible, those who come across to me. So Nadi Pariksha was planned with him and a few other people accompanying him. And they asked me that how can you predict with this specific things going on in one's mind and body. So I told him that it is the ancient science, and with the spirituality and meditation combined with it, I can tell you that these things are going on just by, because they were surprised that just by touching one's pulse, how can you predict it? They heard about it, but practical they experienced at that time. Right. And I was not aware at that time that doors for UN were opening. I was not aware at that time that person was the person working at United Nations whom you did the they were working at United Nations,
and I was not aware that they were literally testing my knowledge and judging me. Right. I had a good discussion regarding Ayurveda and ancient science and Indian what is the sciences. right word? What is the right word for Nadi Pariksha in English? Meridian? Yeah, Nadi Pariksha is the pulse examination. Pulse test. Okay. Pulse examination. It's radial pulse examination, especially. Okay. For a few days, we had to stay at hotel. Then again, I prayed that open the doors for which Gurukarya you have sent me. And sometimes, we feel that what is going on. So the same thing I felt that I'm just spending my days and days. And what should I do? I can't do anything. But we don't know. See, Gurukarya might be happening in subtle level. But at that time, in Guru Sanidhya, we never know that the energy was working at that time. But we are not aware about these things. And I came across to many groups, and there were many Nadi Pariksha was conducted. I delivered many lectures at some groups and people regarding awareness of Ayurveda and meditation and complete wellness too. So we were approaching people, and a good networking was going on, groups, and people were very happy to know regarding this science of Nadi Pariksha, Ayurveda and meditation. Can I ask one thing? Yeah. So did you get chance to contact some of these others like Paresh Bhai Pandit or others in New Jersey, New York area at that time? Actually, I was not known to anyone there. Wow. I was really not known to anyone there, who is sadhak there or not. Then slowly we came in contact with people, and in between these things, few other things were going on. That the fellow from UN and their group who were in contact with me, and those who asked for Nadi Pariksha, and we did it. They were in contact with me, and they discussed long hours with me. And then they asked that, actually I was not aware that they were judging my knowledge. So two things worked: my Ayurveda Guru's knowledge of Nadi Pariksha and knowledge of Ayurveda, and Swamiji's energy worked at that time magnificently. And they said that we'd like to conduct a lecture on Ayurveda and complete wellness. Wow. At United Nations. What a beautiful So opportunity. they said that we have judged your knowledge and we'd like to conduct a session. Wow, And that is one more really time I will give clap to this success, because this is the blessings of parents, of family, and at the same time Guru Shaktis. Now, as we have received the word pulse diagnosis for Nadi Pariksha, you want to show us a little bit how that is done, or what is the significance of it? Yeah. This is the radial pulse, but in modern medical science, they observe rate and rhythm and all the things. In Ayurveda, there is a deep science of Nadi Pariksha. And this is not a kind of literary knowledge. There should be some connection with inner consciousness. Okay. And then you can reveal much more thing. And recipient, those who are willing to go for Nadi Pariksha, their faith too does matter. Okay. Those who experienced it, they had great faith in Ayurveda. And that's why they asked me. Though my knowledge was tested, but they had faith in Indian sciences and Ayurveda and meditation. So these, as Swamiji said, their anubhuti cannot be judged by only intellectual parameters. So these ancient science, like Ayurveda, Nadi Pariksha, or I think any ancient science of India cannot be judged only by intellectual perceptions. One has, up to some extent, you should have faith on that science. Because so, this is the knowledge of consciousness. This is the knowledge of consciousness along with the physical pulse diagnosis and everything. And one more thing I'd like to add here, that some of the experiments
done in grace of Param Pujya Swamiji that I could get the chance to have analysis of his nadi. So perhaps it has increased the subtle understanding and whatever the actual Ayurvedic examination of nadi is there, still I feel that I am learning. But it was the expansion of my understanding. While in proximity of a spiritual master, if you do anything, it will expand your inner vision. And while I was doing that, I couldn't feel that. But while I practice on my patients or at United Nations or in USA, I felt that, yeah, this is the thing, how it came from inside. So it was the grace of Guru. You must be considering yourself very, very lucky simply because it is like walking with Jesus or walking with Krishna and touching the body of Swamiji and doing the Nadi Pariksha of Swamiji. That is another unique experience that everybody cannot even experience and understand. But you have witnessed that because of this dedication, the soulful love that you have and the consciousness that is connected between you and Swamiji. This conscious connection is very, very important between Guru and disciple. And I believe that right now, while you are describing this, there is a strong surge of energy while you were saying that I got opportunity of doing the first diagnosis of Swamiji. Even I'm talking and I feel the vibration. It is like gushing to vibrations are trying to go through to the people. And this is the power of Guru Shakti. This is the power of subtle energy. How beautiful it is. Amazing. Yeah, and there are some other doctors too, who are taking care of his, we have a good panel, but I could get the chance a few times. And later, while United Nations program was finalized, after some days, I went to my brother's home, and then I was scheduled to come back at United Nations headquarters in New York. I think every day or every alternate day, those who were in committee of this United Nations club, they had a long talk with me regarding Ayurveda, its different aspects, human lives, wellness, and we discussed so many topics. And later, at the end of the lecture, they told me that we had the group was just analyzing my knowledge regarding the subject. And we all know that only knowledge doesn't work. It's again Swamiji's energy work, and long discussions came out very fruitfully. And on October of 29, 2014, my session was scheduled at the Hammershell Library Auditorium in United Nations. Yes, we watched the video while you were taking care of the kids, and it was very, very beautiful to witness that you also promoted Samarpan meditation over there. So tell us a little bit about importance of meditation. It was an interactive session. I read the Science of Life, an interactive session, and I focused on complete wellness. And I explained the connection between Kundalini awareness, enlightenment with Ayurveda and complete wellness. And we planned the session like that. After I completed my narrations, we had a short session of meditation. And with Guru Shakti's grace, they were convinced that I'll play my master's voice. And it was the moment, the most pleasant moment in my life that I was like, I felt at the top of the world that Swamiji's voice was there. Make Pavitratma, make Shuddhatma, and many people from many different countries and the representatives of UN and delegates and their family members, those who were attendees, they experienced meditation too. And there were some Spanish and other people, those who would like to interact me, they arranged a translator for that, and they too interact with me. See how the grace of Guru works,
how the vibration affects. My session was scheduled for only 1 or 1.5 hours, and it was completed from my side within scheduled time. Later, many of them, one short session of question answer was open for all, and I observed few things. Whatever the Swamiji says, that they were well known regarding aura and this aura science in effects on aura, and that's why they felt some different energy at that time. Absolutely. And they had some different experience, because there were no questions which are asked here that like intellectual questions, those who are not aware regarding aura. And for Ayurveda also, much more acceptance than India, I found there, because they were aware about lifestyle and medicinal side effects and everything. So after completion of that question answer session, few of them showed their willingness for Nadi Pariksha and practicals. So I asked the organizer that shall we extend it if you permit. So the session was extended, and in Guru Kripa, with Guru's grace, they was standing in a queue, and they came for this Nadi Pariksha experience, and one by one it happened. And they were very happy that these kind of science are there in India. And what happened at that time, at 3 o'clock, their cafeteria closed, and then at 4 o'clock, after 4 hours, we had to went to a restaurant for lunch. It was really great experience. So that means that your session was scheduled for 1.5 hours, went for almost 4 hours. And it is the same thing going to happen in TIS today. You asked only for 1.5 hour session, but we are going to pull it to 4 hours. No problem. Let's go on the next part. There is another. Pics you have shown just now regarding General Assembly visits and everything. It Right. didn't end on that day. I was invited after one day, and on second day for lunch there. And we had great discussion regarding awakening and everything, topic spiritual. Few people were not able to attend the session, so they have some quest, and we had good discussion during lunch, and they offered me a quite memorable tour at United Nations. And I prayed at that time that Swamiji should come here. So that is very true. And I am sure that if you have made the wish standing over there and meeting the people over there while visiting the United Nations building, then by the grace of Gurudev, he will be surely coming to United Nations in New York soon. That is our prayer also collectively at this time. Let's go on the next part. Thank you very much for sharing that. And before I conclude regarding that, I would like to just add one thing, that words of Pujya Swamiji were not merely words. That you go to USA, I'm feeling strong vibration. Words turn to a graceful event of my life. It's really Guru Kripa. Say, that's very, very true. Because without the grace of Guru, we can have knowledge, but we cannot have this level of success. And it is amazing that how difficult it was. And even for us today to go and reach to United Nations is not easy. You coming from India and reaching all the way to this success. And I'm seeing something very amazing. The Facebook CEO Mark Zuckerberg's Facebook account. What is this going on here? He's talking about last year, India's Ministry of Women and Child Development launched the effort in India called the 100 Women Initiative, partnering with us at Facebook. And you were one of them? Yeah, I was one of them. Wow, congratulations. What an achievement. What a success. That's really, really beautiful success. And tell us more about the other success that you have here, international recognition. Yeah, after I came from United Nations, as always it happens that once you come from America, you are much more recognized here in India, and people accept the concept. So I was quite honored here in India at many places.
But in 2016, it is a wonderful spiritual experience too for me. When I was felicitated by Honorable President of India. Again, my brother supported me that you should nominate for this contest. And we nominated for that. And at that time, Puja Swamiji supported, and I think you all and collectivity of all meditators and non-meditators too, some of the newspapers also supported that you are nominated for this. So we will appeal common people for voting for you. So that's what I told you, that achievements cannot be achieved with only single effort or only one's effort. Collective efforts are there just behind you, and you can achieve it. So in Guru's grace, I was honored with this felicitation, and there was a collection of 100 women achievers from India, and that they gathered. It was conducted by Women and Child Development Ministry of Government of India, and we were honored with a citation, and we were invited for lunch at the Presidential House. At that time, Honorable Pranab Mukherjee sir was a President of India. We had a good time together, and in the category of health and wellness, I was selected. And at that time too, I was the only Ayurvedic doctor from India selected for this honor. But the thing was that when I was selected and I was honored, I was pregnant at that time. And it was quite confusing for me that one side this opportunity is that to get the honor, and another side my first pregnancy was there at the time. And as always, Mohit was in strong support, and my family supported me. And again, with grace of Puja Swamiji, I asked Puja Swamiji because it was my second trimester going on at that time. And I was confusing that whether I should go or not. My doctor allowed me that everything is going good and you are healthy, so you can move from here. But see, while things are going on in your body, how to travel there, how we were offered good stay from government, everything was there. But it was the starting period of Anushthan. I remember I felt tense at some point that whether I should give priority to my kid or these achievements. But then Swamiji said, no, you go, my blessings are there with you, and nothing will happen. Don't prefer travel after this, but you can go. So with full faith, we went there. Mohit accompanied me at that time. And all 100 women, I was the only woman who was pregnant, and those unknown people also taken care of me. And the achievement. You can say that it was 101 who enjoyed this celebration. Yeah, they told the same thing, that whether it is baby boy or girl, he or she entered in Presidential House, though nobody was allowed, neither spouse or caretaker or anybody. Nobody was allowed in Presidential House. Only 100 of us were allowed, and some of them were telling the same thing, that whether he or she entered in Presidential House. And so another slide where the Presidential House photos are there, please. The dinner and other photos that we have. We had some photos for the dinner at the Presidential House. Yeah, this is the same one. And later I was complimented by Ayush Minister, Mr. Shripad Naik, who was the former Ayush Minister, Ayurveda, Yoga, Unani and Homeopathy Ministry of Government of India. So I was complimented, appreciated by him too. And this is a citation I got from ministry. Beautiful. And it really worked. We came back safely. Nothing happened to my baby. Wow. That is just grace of Gurudev. Can you show next photo, please? There were photos of the dinner and stuff. I don't know why we don't have it here, but
you shared some pictures, I remember. But thank you very much for sharing this Anubhuti. And you had also many other achievements. And we are very thankful that you are sharing all these happy moments of your life, giving credit to not only your how you say professional knowledge, but also to Guru Shakti. And that is what is exemplifying many people and inspiring many people, that how if somebody joins the spiritual path, rest of the things start happening to the great level. And we wish you many more success like that. तो जैसे हम लोगों ने देखा हेतल जी के जीवन में, यूनाइटेड नेशंस में तो इतना सुंदर मौका मिला, रिकॉग्निशन मिला कि आयुर्वेद और ध्यान के बारे में वो समझा सके। और आयुर्वेद के बारे में उनको कई प्रश्न किए गए, कई सारी नाड़ी परीक्षा के बारे में भी पूछा गया, और कई लोगों से मिलना हुआ जो उनके लिए यादगार प्रसंग बन गया। लेकिन इस वक्त हम समर्पण ग्लोबल परिवार की ओर से हेतल जी के भाई और परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनको इतना सपोर्ट किया। जीवन में अच्छे परिवार का साथ होना, मोरल सपोर्ट होना भी बहुत योगदान सक्सेस के लिए कार्य कर जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है ये सफलता देख के। आई एम श्योर कि एवरी वुमन इज एक्सपायर्ड। मैं बीच में कुछ कहने जा रहा था कि उस वक्त पे मैं आपको नहीं जानता था जब आपको ये अवार्ड मिला था, तो मेरे लिए तो सभी साधक अपने गुरु भाई बहन ही हैं। तो मैंने भी आपकी सक्सेस के पोस्ट को अपने फेसबुक पे डाला था कि दिस इज द सक्सेस ऑफ नारी शक्ति, दिस इज द सक्सेस ऑफ समर्पण फैमिली। तो ये आज that's what I was telling, that I don't know those who were contributed in my success, so I'm quite grateful. स्वामी जी जो कहते हैं कि आत्मीय सामूहिकता का जो बल है, वो स्वामी जी कहते हैं ना कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूँ, आपको दिखता हूँगा एक शरीर, लेकिन मेरे साथ हजारों लाखों आत्माओं की सामूहिकता है। वो हम सब एक परिवार, एक समुंदर है जिसका चैतन्य गुरुदेव के थ्रू हम सबकी सामूहिकता के रूप में बह रहा है। तो बहुत ही सुंदर अनुभूति, बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट, अगला क्वेश्चन क्या है रसिका जी? ये भी हो गया, प्रोफेशनल फील्ड में दूसरी अचीवमेंट भी साथ में हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं मोहित जी के बारे में। चलो फिर मोहित जी को बुला लेते हैं, उनकी भी एडिशनल अचीवमेंट जान लेते हैं। थैंक यू हेतल जी, बहुत अच्छा लगा। वैसे मोहित जी का लास्ट नेम काचा है, लेकिन आत्मा उनकी बहुत पक्की है, बहुत प्यारी है। हमको बहुत कुछ जानना सीखना मिलता है उनके अनुभव से और उनकी सफलता की बातों से। आइए मोहित जी से कुछ जानते हैं कि मोहित भाई अपने जीवन के अलग अलग सफलता के कुछ अवार्ड्स मिले हैं, कुछ आपको पहचान मिली है, उसके बारे में बताइए। एक टीमा अवार्ड मुझे मिला था। वो अवार्ड था जो स्पिरिचुअल सेक्टर में जो मैंने जो काम किया है, जो लोगों को अवेकनिंग के बारे में या फिर गुरु कथा में गुरु के बारे में, मास्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में जो बताया है, तो उससे कई सारे लोगों को उन्होंने ऐसा सर्वे किया, उनको लगा कि इस बारे में इनको अवार्ड देना चाहिए, तो ऐसा अवार्ड मुझे टीमा अवार्ड दिया गया है। तो टीमा अवार्ड की एक खासियत है कि उन्होंने जेंडर इक्वालिटी के ऊपर पहचान दी है आपको, यानी कि ही फॉर शी, दैट इज रियली ब्यूटीफुल थिंग। और स्वामी जी हमें हमेशा कहते हैं आध्यात्म में कोई जेंडर नहीं होता है, हम सब स्त्री पुरुष लिंग भेदभाव कोई होता ही नहीं है, हम सिर्फ आत्मा है। तो आपके प्रवचन में, आपके गुरु कार्य में उसकी झलक दिखी होगी, तभी उन्होंने आपकी बातों को सुनकर आपको ये अवार्ड दिया। हाँ, और हेतल के जो यूनाइटेड नेशंस में जो कार्य हुआ, या यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में जो इनवाइट किया गया 100 वुमेन्स पे जो उसका सिलेक्शन हुआ,
हाँ जी, उन हाँ जी। सब में भी लोगों ने बोला कि आपका सपोर्ट था, तो उसके कारण हम आपको ये अवार्ड देते हैं। बहुत फिर सुंदर। मेरे मेरे इंटरेस्ट का विषय है कि ये सारे जो आप जो आर्टिकल्स देख रहे हैं, हाँ वो जी, लोगों ने मुझे पूरा फ्रीडम दिया था कि आप अभी के दौर पे बताइए कि गणेश भगवान क्या है, माने उनके साथ क्या, माने वो देव क्या है, और उसके साथ तो मुझे पूरा फ्रीडम दिया था। तो मैंने उसके, आप टाइटल भी देखेंगे तो एकदम टाइटल सबके एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइटल है, और ऐसे मैंने सब त्योहारों के ऊपर, आध्यात्मिक आध्यात्मिक स्तर पे समझाया उसको। हाँ, फिर वो जो अभी के दौर में जो चाहिए, अभी अभी के दौर में गणेश भगवान उनको किस स्तर पे चाहिए, कैसे चाहिए उनको, उस तरह उसको समझाने की कोशिश की है, विथ एनर्जी फॉर्म के, एनर्जी में कैसे क्या क्या काम करती है गणेश जी की एनर्जी क्या है। तो ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट विषय, जैसे अपने गुरु शक्ति धाम को बताया था, जीवंत स्थानों के बारे में बताया है। वेरी फिर ब्यूटीफुल। हेलो गुजरात में भी मेरा इंटरव्यू लिया था इन्होंने। फिर यहाँ के जो डिफरेंट सेक्टर है, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे बुलाया गया था, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर भी बताया गया था। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये है एक जो ऐसा है कि इन्होंने पुस्तक, इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और बहुत, लाइब्रेरी का सही अर्थ क्या है, कैसे समझना चाहिए, बच्चे लाइब्रेरी में क्यों आएंगे। पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए, तो इनके ऊपर मैंने बताया था। फिर ओरा के ऊपर समझाया था कि हर एक जगह का एक ओरा रहता है, तो ऐसे डिफरेंट सेक्टर में अलग अलग ऐसे हुआ है। ये है योग दिन के ऊपर था, तो इसमें मैंने 2 अलग अलग सेशन लिए थे, राजपथ क्लब अहमदाबाद में था। तो योग के बारे में मैंने वो भी ध्यान के बाद पता चला, जिससे पहले योग जो करते थे तो जिससे होती ना भस्त्रिका वगैरह, तो जिस टाइम पे मैंने ध्यान शुरू किया उसके बाद पता चला, जितने भी कोर्स किए थे, जिससे भी सुना था, तो वो सब ऐसे जो है किसी रोग को कम करने के लिए है या किसी बीमारी को ओवरकम करने के लिए। फिर ध्यान में आने के बाद पता चला कि अगर आपकी कुंडली में जागृत है और आप भस्त्रिका करते हो और आप ये करते हो, धीरे 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 करके ऊपर जाती है। तो ये सब इसलिए दिए गए थे कि हमारी अंदर की शक्तियां ऊपर की तरफ उठे। तो ये योग दिन के ऊपर मैंने ये वहां पर उनको समझाया था कि सही अर्थ में प्राणायाम का सही अर्थ क्या है। सही सही है, वेरी ब्यूटीफुल। तो इस स्वामी जी भी कहते हैं कि योगासन सिर्फ योग सिर्फ योगासन नहीं है, सिर्फ प्राणायाम नहीं है, उससे भी ऊपर उठ के है। जब आप अंतिम 2 चरण में जाओगे तब ध्यान और समाधि के स्तर पे पहुंचोगे। वेरी ब्यूटीफुली सेड। मैं थोड़ा समराइज करता हूं अगले प्रश्न पे जाने से पहले। कैन यू गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट, उनकी जो स्लाइड है। हाँ, तो मोहित जी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड by the Tima Award, he for she, because he stood for her, that is Hetal ji, and gave her equal importance in her life. Very few people in India give this kind of support, moral support to their spouse, especially the female spouse. That's the reason why he was recognized here. And as the award says, in his spiritual and devotional speech, he has always advocated gender equality. Yani ki he was not just promoting the male character or husband personality, he was also promoting the Nari Shakti or the female power. And that is very, very important in the modern society. That is why he was awarded this. He got interviewed by Manisha Sharma on the Hello Gujarat station. That was the flyer for that. And he has written many articles in Gujarati, Mirror, and other newspapers. He has given many talks on the radios and TVs also. His focus, as here we see in the news article with the photo of Lord Ganesha, about the material and spiritual world, how they are getting connected through the worship of Lord Ganesha, how we can go beyond the logic
and go into the spiritual realm. There are many other awards, but we'll go on the next slide, where the importance of knowledge based on reading. The knowledge, Gnan Adharit Vanchan, knowledge-based reading. This is the library where they have so many different books, and he gave the talk about importance of aura in this place, how that attracts and influences the children and the readers. So very, very beautiful achievement. And last but not least, on the International Yoga Week celebration, he and Hetal ji have explained that yoga is not just breathing. Yoga is not just for physical health benefit, but there is an importance of yoga through meditation, and that can awaken the kundalini or the life force, and it slowly rise above and help you progress spiritually. Very beautiful Gurukarya through both of you. And now the importance of Ayurveda in the conceiving of baby, and how we can program a design baby in our life. We want to request Mohit ji to give a small Guru Katha from the life of Swamiji, how Swamiji surrendered his entire life in this mission of preparing eligible and suitable souls, young parents in the society, so that they can conceive the baby who can bring the divine souls of Gurus, of Swamiji's Guru. And these souls are waiting, as Swamiji says. But let us hear in the words of Mohit ji himself. He is going to speak in Hindi, and I am going to translate it later. Jai Baba Swami. Mohit ji, गर्भ धारणा के बारे में स्वामी जी के जीवन का ये जो उद्देश्य है, यह एक मिशन है जो गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया इस कार्य में। तो उसका क्या महत्व है? ये जो फोटो हम देख रहे हैं उसमें क्या है, आप जरा समझाइए। ये स्वामी जी जब हिमालय में, स्वामी जी की जो 16 साल की हिमालय की जो यात्रा है उसके दौरान का ये फोटो है। केवल ये कुंभक योगियों की गुफा है। स्वामी जी 2 बौद्धिस्ट संत के साथ उस गुफा में उस गुफा की ओर जा रहे थे, माने उस जंगल से जा रहे थे, और रास्ता वो लोग भटक गए ऐसा उनको लगा। तो उनके साथ जो केवल्य कुंभक, उनके साथ जो दूसरे 2 जैन, उनके साथ जो दूसरे बौद्धिस्ट मंक थे, वो रात्रि को किसी सेफ जगह ढूंढ रहे थे, और उनको एक गुफा से ये प्रकाश आता हुआ दिखा। तो ये उस प्रकाश की तरफ गए, और स्वामी जी को वहां से वाइब्रेशंस फील हुए, वहां से एनर्जी फील हुई। ये है ना गुरु और शिष्य का ऐसा एक संबंध है। अगर शिष्य कहीं आत्मा से जुड़ा हुआ है, शिष्य कहीं एनर्जी से जुड़ा हुआ है, तो सामने कहाँ पर एनर्जी है तो वो पूरी उसको उस तरफ खींची लेती है। तो वो स्वामी जी अपने आप उस तरफ खींचे चले गए, और रात्रि के दौरान फिर वहां पर उन्होंने विश्राम किया। फिर सुबह के दिन देखा तो उसी गुफा के अंदर से दूसरी तरफ और एक गुफा जा रही थी, माने तो वो अंदर की तरफ गए, और अंदर जाके देखा तो 2 युवा मुनि थे, वहां पर तपस्या कर रहे थे, और उनके साथ वहां पर स्वामी जी ने वहां पे बैठे, और फिर वहां पे ध्यान लगा, और उनके साथ ध्यान लग गया तो उनको वहां पर बहुत अच्छा लगा। फिर वो वहां से बाहर आए। फिर वो जो 2 बौद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने बताया कि हम शायद कहीं से रास्ता भूल गए हैं, और हमको जाना था किसी और जगह पर, और हम किसी और जगह पे आ गए। तो स्वामी जी ने बताया कि मैं तो यहीं पे रहूंगा, और मुझे यहीं पे रहना है। माने उनकी आत्मा ने उनको फील कर दिया कि यही वो जगह है जहां पर मुझे आना था, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो वो यही तो मजा है ना कि अगर शिष्य पूरा गुरु से आत्मिक स्तर पे जुड़ा हुआ है, और कहीं से भी थोड़ा सा भी गुरु के साथ अपना आत्मिक कनेक्शन हो, तो बराबर शिष्यों को एक बार तो जीवन में अनुभव होगा ही
कि यही वो जगह है जहां पे मैं आना चाहता था, यही वो स्थान है। और उससे जगह फिर ना सारे के सारे रहस्य धीरे 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 खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अपने को पता चलता है कि हम गुरु के लिए इतने तड़प रहे हैं, उससे ज्यादा तो गुरु अपने से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तड़प रहा है, सही है। अपने को अपनी तड़प पहले दिखती है, पर अपने से भी ज्यादा तड़प उनकी रहती है। पर ये सारे के सारे है ना ऐसे ऐसे जो संबंध है, जो शिष्य अगर गुरु से जुड़ा हुआ, अगर आत्मिक कनेक्शन हुआ, तो धीरे 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 उसको वो सारी की सारी बातें अनुभव होना शुरू हो जाएगी। अब शिष्य गुरु से प्रेम करे उससे पहले रियलाइज हो कि गुरु मुझसे कितना प्रेम कर रहे हैं, कि मैं कहाँ पे था, कहाँ दूर था, कुछ पता नहीं था, ना कोई ठिकाना था, कुछ भी नहीं था। और आत्मा के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं था, क्या आत्मा रहती है, क्या एनर्जी रहती है। तो वहां से लेके आए, यहाँ तक पहुंचाया, आत्म जागृति करवाई। तो इस बात से पता चलता है, जिसे मैंने पहले भी सुना था, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस थे, तो वो अपने जो घर था उसकी टेरेस के ऊपर चढ़ के सब शिष्यों के नाम बोलते थे, नरेन आ जाओ, लाटो आ जाओ। माने जो नहीं आए थे उनके भी नाम पुकार के बोल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। माने गुरु शिष्य को अपनी तरफ खींच रहा है, अपना रास्ता क्लियर कर रहा है, वो बुला रहे हैं। इसका मतलब उसके रास्ते में जो हर्डल है वो सारे के सारे हर्डल गुरु दूर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी शिष्य गुरु के साथ पहुंच सकता है, तभी एक आत्म साक्षात्कारी गुरु के साथ में पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे गुरु के पास पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा की यात्रा यहीं से शुरुआत होती है। हमारे स्तर पे देखे तो आत्मा की यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। बाकी अब तक तो सारी की सारी जो यात्राएं चली थी वो सारी की सारी शरीर की यात्राएं चली थी, एक से दूसरा बदला, दूसरे से तीसरा बदला। पर ये ही एक रहते हैं जिनके जीवन काल में आत्मा की यात्रा होती है। वो केवल ऐसे सिद्ध पुरुषों के सानिध्य में और ऐसे अवतार पुरुषों के सानिध्य में ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए लगता है कि सारी प्रगतियां हो सकती है, पर एक ही प्रगति है जो इनके हाथ से हो सकती है, वो है आत्मिक प्रगति। तो ये ना एक प्रकार का कनेक्शन है। अगर गुरु भी आत्मा लेके बैठे और शिष्य भी वहां पर अपनी आत्मा लेके जाए ना, तो फिर एक कनेक्शन बनता है, एक रिलेशन बनता है, एक तार बनता है गुरु और शिष्य के बीच में, जो बहुत सॉफ्ट रहता है और बहुत ही पतला ऐसा तार रहता है, जिसमें गुरु और शिष्य के बीच में कुछ वार्तालाप होती रहती है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारे स्तर पे, हाँ, ये फोटो में बहुत सुंदर तरह से प्रभाकर जी ने डिपिक्ट किया है कि एक पतली सी बारीक रेखा आत्मा से उस गुरु के साथ जुड़ जाती है। तो ये उनके साथ फिर स्वामी जी वहां पर उनके साथ संपर्क हुआ। फिर स्वामी जी को तो लगा कि मेरा तो जन्म लेने का उद्देश्य ही खत्म हो गया, यहीं पे आना था, यहीं पे पहुंचना था। फिर केवल कुंभक योगियों के साथ मिलना हुआ, फिर उनके साथ संपर्क हुआ। फिर स्वामी जी बताते, हिमालय के समर्पण योग में लिखा है कि पहले तो मैंने बहुत प्रयास किया कि उनके साथ संपर्क हो, फिर पता चला कि ये गुरु का क्षेत्र है, यहाँ प्रयास से काम नहीं होगा, यहाँ समर्पण से काम होगा। तो फिर केवल कुंभक योगियों के साथ उनका ध्यान के उच्च स्तर, जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी रहती है ना, वैसे फ्रीक्वेंसी रहती है, वैसे ही ये सारी फ्रीक्वेंसियां ही है। जैसे अपना गुरु शक्ति धाम है, वहां पर भी एक फ्रीक्वेंसी है। पर स्वामी जी बार बार बताते हैं ना कि यहाँ पे आओ तो कुछ मांगो मत, कुछ मांगो मत, ये जगह मांगने के लिए नहीं है, ये जगह पे कुछ, क्योंकि वहां पे है ना, मुझे ऐसा माने वहां पे हर वक्त सतत कोई एक एनर्जी बह रही है, जो सीधे से सीधी जाकर सामने वाले की आत्मा को स्पर्श करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आज से 100 साल के बाद कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हुई होगी, सब पूरा हो गया होगा और कोई इच्छा नहीं बची होगी। ऐसा इंसान अगर मंगल मूर्ति के सामने आके खड़ा रहेगा तो वो डायरेक्ट वहां से सीधी वो आत्मिक एनर्जी वहां से ले लेगा। और तब अपने को पता चलेगा, अरे वो भी बोलेगा, अरे 100 साल से ये खजाना यहाँ पे पड़ा हुआ था, क्या कि उसकी कोई विश नहीं रहेगी, खाली स्वामी। माने इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ बताते ना स्वामी जी, सिर्फ खाली हो जाओ, कुछ करना नहीं है। तो वो खाली अपने को अपनी आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि आत्मा के पास कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ लेन नहीं है, कुछ देन नहीं, कुछ नहीं है। तो वही खाली है। अगर उसके सानिध्य में आ गए तो हम अपने आप खाली हो जाएंगे और फिर अपने को पता चलेगा कि अपने गुरु कौन है, हम किसके साथ जुड़े हैं। फिर धीरे 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 स्वामी जी के बारे में पता चलेगा, तो अपने को पता चलेगा, अरे मैं इनके सानिध्य में हूँ, ये कौन सी सत्ता है, ये
एक एक फील अपने को ये करवाता है कि ये कौन सी सत्ता है। जैसे इस अनुष्ठान में थे तो यू वॉन्ट बिलीव कि अनुष्ठान में पूरे का पूरा हिमालय नीचे उतर गया था। मेरे 2008 के भी 2008 में जो दूसरा अनुष्ठान हुआ था ना, उसके भी फोटोग्राफ है। वो दांडी के समुद्र किनारे के पीछे वो दिव्य भास्कर न्यूज में भी आया था कि पूरे का पूरा हिमालय बन गया था। तो वहां के आसपास के लोगों को लगा कि ये समुद्र में से पहाड़ कैसे निकल गया, ऐसा पिक्चर बन गया था। तो इनकी फोटो खींची थी उन लोगों ने। तो ऐसा लगता है कि उस वक्त स्वामी जी तो वहां पे होंगे ही नहीं, स्वामी जी होंगे वहां पर, और वो वहां पर है, इसलिए वो वातावरण यहाँ पर आ रहा है अपने को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो एक गुरु का आगमन, एक गुरु की स्थिति, फिर बाद में जब गुरुदेव की फ्रीक्वेंसी चित्त शक्ति से इन गुरुओं के साथ जुड़ गई तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने उनकी उम्र 20-25 साल की ही पाई या ज्यादा पाया? क्या हुआ? ये फिर पता चला कि ये यहाँ से 800 सालों से यहाँ पर ये साधनारत है। और इन्होंने, इनकी ऐसी इच्छा थी कि इनके गुरु माने इनको इनके गुरु के जीवन काल में इनके गुरु का सानिध्य प्राप्त करना था। तो उनको उनके जीवन का इनके गुरु का सानिध्य प्राप्त करना था, पर उनके गुरु इतनी उच्च कक्षा पे थे कि उनको कोई इनवाइट कर सके ऐसे माँ बाप धरती के ऊपर नहीं थे। इसलिए फिर उन्होंने स्वामी जी को कहा कि आप समाज में जाओ और आप ऐसे माँ बाप का निर्माण करो जिनके माध्यम से उनके गुरु इस धरती पर आ सके, और वो उनके गुरु के सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनके गुरु के सानिध्य में आना चाहते हैं। तो इसलिए आप उन गुरुओं को जन्म दे सके ऐसे माँ बाप का निर्माण करो। तो फिर स्वामी जी को जीवन में एक उद्देश्य दिया और उसी उद्देश्य के साथ स्वामी जी समाज में आए और पुण्य आत्मा अवतरण जो मिशन है उस मिशन, हाँ। और इन सब में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारी घटना है उसमें ना पुरुष का और ना स्त्री का किसी का कोई रोल नहीं है पुण्य आत्मा अवतरण में। उसमें सिर्फ क्योंकि वो रहता है ना, मैं कई बार ऐसा लगता है जैसे अपने को नरेंद्र मोदी से मिलना है तो डायरेक्ट जाके बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, पर अगर उसके पीए के साथ अपना रिलेशन है और उसको बोलेंगे ना कि जरा मिलाओ ना, तो उसका पीए उसको बोलेगा ना तो अपनी मुलाकात उनके साथ हो जाएगी। काम बन ठीक इसी तरह ये पुण्य आत्मा है ना, वो अपने से नहीं आने वाली है, अपने से कुछ नहीं होने वाला। पर अगर अपना संपर्क गुरुदेव के साथ है, अच्छा संबंध है, अच्छा रिलेशन है, और हम उनको प्रार्थना करेंगे कि जरा हमारे घर पे पुण्य आत्माओं का हमें उसके लायक बनाइए ना, पुण्य आत्माओं के लायक, तो जैसे तो वो पुण्य आत्माएं आ सकती है। तो अपना सिर्फ, और ये जब तक स्वामी जी इस धरती पर है तब तक ये संभव है, क्योंकि ये उतनी उच्च कक्षा पर है, वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, उसके साथ कनेक्शन तो होना चाहिए। और ये सारी की सारी स्वामी जी के कहने पे आ रहे हैं। हमारी तो स्थिति नहीं है कि ऐसी पुण्य आत्माएं हमारे धरती पर आ सके। तो ये बोलते कि इनके घर पे आओ, इनके घर पे आओ, तो ऐसे ये आते। तो सिर्फ अपने को एक ही पहल करनी है, अपनी शुद्ध इच्छा रखनी है स्वामी जी के पास। सही है, सही। ये पुण्य आत्माएं हमारी है। बहुत खूबसूरत। तो जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में हम कहते हैं कि गुरु को हम गुरु जब मानते हैं तब गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान दे देता है गुरु दीक्षा में। अपनी जो आध्यात्मिक स्थिति है, तो हिमालय में एक गुरु सिर्फ एक शिष्य को ही देता था, वैसे दीक्षा के बाद उस शिष्य का कर्तव्य क्या बनता है? तो कर्तव्य यही है कि गुरु को दक्षिणा दे, और दक्षिणा में क्या दे? अपना जीवन समर्पित कर दे। अपने जीवन का बाकी का जो योग है, काल है, समय है, क्या बोले, ज्ञान है, संपत्ति है, उस सब को गुरु के उस उद्देश्य के पीछे लगाए जिसमें गुरु को भी तृप्ति मिले, संतोष मिले कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे शिष्य के द्वारा मैं कर रहा हूँ। वैसा ही कुछ गुरु दक्षिणा स्वामी जी ने इन गुरुओं को दे दी जो हिमालय की इस गुफा में मिले। फिर बाद में स्वामी जी को समाज में आके पता चला कि ये कैवल्य कुंभक योगी है जो कई सालों तक, हजारों सालों तक जी सकते हैं। हमारे लिए लॉजिकली ये सोचकर समझना बहुत बहुत कठिन है, लेकिन यह स्वामी जी के जीवन का
एक लाइव एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये हुआ है। और उसके बाद स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पण ध्यान के ज्ञान के प्रसार से ऐसी आत्माओं को तैयार करने में लगाया जहां पर युवा साधक साधिका ध्यान करते करते अपनी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी बना ले कि वह ऐसी पवित्र आत्माओं को, जो इन योगियों के गुरु हैं, जो अभी धरती पर अवतरित हो रहे हैं, और स्वामी जी ने इधर तक कंफर्म किया है कि कई आत्माएं ऐसी अवतरित हो चुकी है, न सिर्फ हिंदुस्तान में लेकिन हमारे अमेरिका में भी हो चुकी है, जो हमें गुरुदेव की कृपा से इसके आशीर्वाद मिले हैं। और वो आत्माएं आगे चल के समर्पण ध्यान और ऐसी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बहुत प्रचार प्रसार करने वाले हैं। और धरती का जो स्तर है, वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी का जो स्तर है, उसको ऊपर ले जाएंगे ऐसी आत्माएं, क्योंकि उनका प्रकट होना, उनका जन्म लेना, यही उस भूमि के लिए, उस समाज के लिए आशीर्वाद रूप है। तो बहुत बहुत सुंदर। मोहित जी, आपको मैं एक अनुभूति बता दूं, उसी पे रखिए, लेट्स स्टे ऑन इट। तो आपको मैं अनुभूति बता दूं कि ये स्लाइड हमने इंक्लूड नहीं की थी हमने गर्भधारणा के क्वेश्चन में। आज सुबह 3 बजे मुझे स्वामी जी ने ध्यान में उठाया और मैंने चश्मे भी नहीं लगाए, ऐसे ही टाइप करके रसिका जी को बोला कि ये स्लाइड डाल दो, क्योंकि ये स्वामी जी और गुरु शक्तियां चाहती है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है स्वामी जी के जीवन से, हम सबके जीवन से और आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए ये आपकी गुरु कथा का भी हमें लाभ मिल गया इसके जरिए। So I am going to share this in English थोड़ी देर के लिए। Thank you very much for sharing this, because this is the essence of Samarpan meditation. This is the essence of our life. This morning, 3 o'clock, I woke up in meditation, and Swamiji gave me the message that this slide should be included in today's program. So that is how it came, and we got the gift of Guru Katha, live Guru Katha by Mohit ji in this program. I am going to summarize this, okay? Swamiji, while passing through the border of Bhutan and India, he was walking with two Buddhist monks, and it was almost like evening time, and they felt that we should take rest. And while passing by, they felt that there is some beautiful, cool vibrations, energy coming from the top. And they said that we should go and check if we can stay overnight over here. When they went, it was a cave. So they decided to stay over there. In the morning, there was light coming from the inside of the cave as if it was leading to another cave. And that light was nothing but the aura of yogis who were meditating. And Swamiji said that then he was surprised that, my goodness, these yogis are sitting here and doing meditation. So in the morning, after those Buddhist monks says that now we will be going forward to continue our journey. And Swamiji says that I don't feel like leaving this place. I want to stay here. Swamiji stayed there, and he was trying to attempt connecting with this right side guru who was visible to him. And Swamiji, when he was attempting, it was not establishing the connection because the frequency was not matching. Swamiji says in Himalaya Samarpan Yoga, in his book, autobiography, when Swamiji's frequency matched with the frequency of that guru, automatically the connection was established, and that connection was like a very minute thread of energy which connected to that guru. And Swamiji felt like asking, who are you? What are you doing here? Can you tell me more about you? And Swamiji said that that person on a physical level looked like 24-year-old young man, but he said that I am here, and along with me there are 24 more gurus, yogis, who are meditating inside in the other caves. As you can see, 2 more are visible in this picture, but some more young looking gurus were sitting there. So they said that Swamiji asked, how old are you? They said that he said that he is almost like 800 years old. He is here.
And it was totally surprise for Swamiji to accept this information, because we know that ordinary people live maximum 100 years on average. So that was a how you say, new information, new knowledge. And then they told, Swamiji asked, what are you doing? He says that we are doing meditation here for more than 800 years, because some of our gurus have left their body and they are not here at this time, but they want to come back on the earth. They want to come back on the earth, but they are not finding suitable souls or mothers who can give birth to them. So Swamiji says that I surrender my life to you. Tell me what I can do for you. And they said that if you can go back to the society and encourage young couples, young children, young boys and girls to develop their spiritual level to such an extent that they can bring the divine souls of their gurus on the earth, then probably our mission will be completed, because we want to meditate with our gurus in this earth, on this earth. And Swamiji says, in that case, I am dedicating all my life to you. From today onwards, when I go back to society, I am going to start teaching this meditation to the society, to the young people, old people, everyone. And I will encourage youngsters to become such parents. And today, it is such a beautiful mission that Swamiji has started, that there is a marriage bureau that unites such young couples, regardless of their background, regardless of their religion and financial status or religious status, nationality, language, nothing. Swamiji looked at the energy of boy and girl, and then he gave them opportunity. We are very lucky to have Mohitji and Hetalji, who were one of that couple. And they have been blessed to have the children who could be, and we believe that they are the divine souls blessed by Gurudev like this. This is a very divine mission that we are working on, to bring highly evolved Guru Shaktis or evolved souls, ascended masters, you can say in English. Those ascended masters want to come down and help the humanity to raise the vibrations of the earth, to bring the spirituality to the next level, so that people will live happily forever, to create the paradise on earth. That is what is happening. And now that Hetalji is here, we can go on the next part of the Garbha Dharna, or conceiving the baby. Hetalji, I would like to understand Garbha Dharna, or receiving the baby or conceiving the baby in the womb. Can you please tell us what is the significance of Garbha Dharna in the Hindu tradition or Ayurveda, and our 16 different sanskar that we call? What is the importance of Garbha Dharna? There is a very good definition in Sanskrit scriptures of Ayurveda. Sanskar, what does it mean actually by sanskar according to Ayurveda? Sanskaro hi gunantara dhanam. So later, after practice of meditation and in proximity of Parampuji Gurudev and Guru Ma, I came to know, and we all came to know that sanskar is not just a kind of ritual or any kind of process. The same thing was told earlier, I think thousands years earlier in Ayurveda, that sanskaro hi gunantara dhanam. Guna means quality. Sanskar means qualitative changes. And see, quantitative changes and different kind of breeds are very easily, we can manifest it, or we can invent some kind of new species in laboratory. But while it comes to human qualitative changes, there is no laboratory or there is no science yet developed on earth that it can plan or it can work for human qualitative changes. So there are 16 sanskaras in ancient Hindu culture. Among them,
one and the most important is Garbhadan Sanskar. As I read that Vivaha Sanskar, just one Sanskar earlier to Garbhadan Sanskar, was very pious in ancient times, and would-be mother and father were like each and every process of Vivaha Sanskar was in the intention to bring or to invite divine souls. And later, the Garbha Sanskar was a part of life in India before thousands of years. And later, it forgotten. So again, spiritual scientists, rather I should say, like Param Puja Swamiji and these Kevalagumbat yogis, with whose blessings so many divine souls already born in India and across the globe. Those who have again make alive this Garbha Sanskar. This is a subtle process. It's not just for physical pleasure only. It's with a selflessness, a deep feeling that one saint or yogi or Mahatma or such kind of master, we should invite them for the well-being of others, well-being of the people, not for our own selfish purpose that our socio-economic situation and other problems should resolve. See, these are the byproducts. As always, Param Puja Swamiji says that while you meditate and while you go for Gurukarya, and I think this is the topmost Gurukarya one can ever do in life. Absolutely. That, just one example I always share in my seminar, that if we have a small bulb, it can lighten our little room. But if huge halogen is there, it can give light to many houses. So the same thing, we have our capacities, but those whom we are going to invite, they are full of energy, much more than us. They have the subtle body more developed than us. And recently in this Anushthan, Parapuji Guru Ma put light on this topic, that there are some guidelines, spiritual guidelines for those who step forward for this mission. And since last many years, people practice there, some of them success, some of them have to wait for some time. But things, the essence and the key of this sanskar by Puji Guru Ma is that see, some days are allocated, that these are the best one, and these are the good one you can take chance for conception. What Puji Guru Ma said, that days and dates and premises and all things are very important. This is the best day, this is the best time, you are aware about it. Have you ever thought, are you at the best of the spiritual status every time? See, those divine souls doesn't see that this is the auspicious day or full moon day or anything like that. You should be in the best status, and the best spiritual status. They don't see that for this 1 hour or this 2 hours you are in good or best spiritual status. They observe that 24/7 you should be happy, you should be cheerful, and you should be in the good surrender status. So this is the most important thing for this Garbha Sanskar regarding spiritual latest guideline. As far as concerned to Ayurvedic Garbha Sanskar, there are some procedures for detox. Those we call them panchakarma. It has to eradicate heat accumulated in body and chakras because of excessive thoughts and because we come across too many aura. So it is indicated in Ayurvedic science that first we should go for panchakarma of would-be mother and father. Later, after detox, we should prescribe them some medicines before conception for good, or rather we can say better quality of sperm and ovum. And later they should go for conception. There are many much do's and don'ts in Ayurveda regarding it. I do advise as much applicable for patient. But one thing I observed, that some kind of color of the bed sheet and everything. Garbha Sanskar is practiced nowadays at many places. I appreciate their effort, really indeed. But
the thing which is missing from this Garbha Sanskar right now in this era, that is the thing. One mantra is given in Ayurveda regarding invitation of divine soul. It is in Sanskrit, Ahirasi, Ayurasi. So this mantra is instructed to chant and then then to invite the souls. It is instructed. But now, after practicing meditation, we came to know that only mantras are not important. As already Mohitji said, that one should have the capability to reach that frequency. And that frequency, we need the medium, we need the master for that. So if we combine Ayurvedic procedure, medicines, and meditation, and if we surrender at lotus feet of master, it results in really, really wonderful babies. Many healthy babies have already born with this combination with Guru's grace and Ayurveda. And I hope that I have a wish that this mission should spread across the globe until Swamiji is here with us on earth. We have to put our most effort for this, that these divine souls, this earth should be filled with divine souls. Absolutely. So these are the procedures, and these are the subtle science behind it. Yes, if you can keep the same slide, just want to comment on that. So I agree with you, and that is the reason why we have included this slide also, to give more detailed explanation of 16 sanskar, Sodas sanskar, or 16 different values, which are not just like, as you said, literal information, but it is qualitative information. And here it is not in words. It is more than one practice to develop the overall consciousness, because consciousness cannot be, how you say, transferred in the laboratory, cannot be created in the laboratory. Consciousness is something which happens through the divine grace. And to create that level of consciousness, we need some spiritual practice, which Hindutva, I will not use Hinduism, Hindutva has so many different sciences that were developed tens of thousands of years ago, not yesterday, not today. This Hindutva is bringing the elements and science of light, consciousness, love, so many different values which you can learn in the science of even Tantra, Mantra, and Yantra, along with all these different practices that we do. So we are considering ourselves very evolved and intelligent, knowing whatever we know from the medical science today. But all the problems that medical science cannot solve, they have the solution and resolution sitting tens of thousands of years of knowledge in Hindutva, in all these different values. So as we know that there is no pills that can stop your thoughts, but consciousness and meditation, grace of Guru, can help you evolve in all this path. And this is the reason why we are learning Samarpan meditation and spreading Samarpan meditation. As Hetalji and Mohitji have mentioned, we want to bring more and more divine souls. We want to create a family of soulful people to have love, peace, joy, and harmony in this world. That is the mission of Swamiji, Vasudhaiva Kutumbakam, one world, one family, full of love, full of soulful love. That is what we are working on. Let's go on the next slide. So this is the interview that was taken. Both of you were there in that Ayurveda and Garbha Sankar. We have one video also that we played part of it in the beginning, but those who join later, we can play that video. थैंक यू हेतल जी फॉर शेयरिंग सच ए ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन. हेतल जी ने इतनी सुंदर तरह से हमें समझाया है कि आइए और थोड़ा जानते हैं. ये हिंदी में इंटरव्यू है तो आपको मजा आएगा सुनने का. એ વિભાગમાં આપણે સમજવા માટે વેચીએ કે એક તો છે ને એવી આત્માઓ કે જેના માટે માં અને
પિતા બંને તૈયારી કરી હોય. એટલે કે એ એવી આત્માઓ કે જેને આમંત્રિત આત્માઓ કહેવાય, જેના માટે જેમ મેડમે કહ્યું કે ગર્ભધારણાના 6 મહિના પહેલાંથી તૈયારી કરે. હવે એના આધારે એમાં થોડી આધ્યાત્મિક તૈયારીઓ પણ એમને કરવાની હોય છે કે જેનાથી એના વિચારો શુદ્ધ રહે. જેમ કે જ્યારે બાળક જ્યારે માના ગર્ભમાં હોય અને જ્યારે એમ કે ને 4 મહિનાનો હોય ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે જીવ પડ્યો. હવે જ્યારે બાળક માના ગર્ભમાં આવે છે એ સમયે જો માએ એવો વિચાર કર્યો કે અત્યારે તો હું ખૂબ વ્યસ્ત છું, અથવા અત્યારે મારે આની જરૂર નહોતી, હજી મારે ઘણું બધું કામ છે, એવો કોઈ પણ નકારાત્મક વિચાર કર્યો તો બાળક તો શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે, એને તો કોઈ વિચાર નથી એના સુધી. માનો સીધો વિચાર એ બાળક સુધી પહોંચશે અને બાળકની સફળતા ત્યાંથી જ રૂંધાઈ જશે. એટલે કે માએ ખૂબ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે કે મારે ત્યાં એક પવિત્ર શુદ્ધ બાળકનો જન્મ થઈ રહ્યો છે, તો મા પણ એ સમયે સકારાત્મક રહે, મા પણ એ સમયે ખૂબ એક સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા રહે અને બંનેની તૈયારીઓ કરે. બંને જો સાથે મળીને તૈયારીઓ કરે તો એ થયા એ આમંત્રિત આત્માઓ થઈ. મેં કીધું ને, વાતાવરણમાં બંને પ્રકારની આત્માઓ છે. તો આપણે જો ઉચ્ચ કક્ષાએ હશું, આપણે સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા હશું, તો આ સારી એનર્જી આપણે ત્યાં આવશે ને. આપણે જ જો સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા નહીં હોય તો પછી એ આત્માઓને આમંત્રિત નહીં કરી શકાય. એક વસ્તુ એ થઈ, એક પાર્ટ એ થયો કે એ સારી અવસ્થાએ સારું ધ્યાન કરીને બંને પોતાની એક સારી અવસ્થા બનાવી રાખે. બીજું કે એ લોકો છે ને વાતાવરણમાં એક ઉચ્ચ કક્ષા પર છે, એ કક્ષાએ એમને પ્રાર્થના કરવી પડે. મા અને પિતા બંને પ્રાર્થના કરવી કે અમારે ત્યાં એ લોકો આવે, પ્રાર્થના કરે, એમને ઇન્વાઇટ કરે. એટલે મેં કીધું આમંત્રિત આત્માઓ એમને ઇન્વાઇટ કરે ત્યારે એવી આત્માઓ એમના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે, માતાના ગર્ભમાં. એક એ પ્રકારની હોય છે. એક જે કહીએ છીએ કે એ મહેમાન આત્માઓ, જેમાં મા અને પિતા બંનેનું સંજોગોવશાત મેરેજ થયા પછી બંનેની ગર્ભધારણા થઈ, એટલે એમાં મા અને બાપની કોઈ તૈયારી નથી. એટલે એમની ત્યાં જે આત્મા આવી એ મહેમાન આત્મા, એમની કોઈ તૈયારી નહોતી, એમનું સ્તર એટલે કે એમની તૈયારી નહોતી અને એના આધારે પછી એ નોર્મલ બાળક જે રીતે જે હોઈ શકે. તો જો આપણે કોઈ શ્રેષ્ઠ આત્માની તૈયારી કરવી હોય તો મા અને પિતાએ બંને પણ પહેલેથી જ તૈયારી કરવી પડે. અને આના સંદર્ભો આયુર્વેદમાં પણ મળે છે. આયુર્વેદમાં છે ને બ્રાહ્મકાય, તામસ પ્રકૃતિવાળા રાજસકાય, રાક્ષસકાય, આવી બધી આવનારી આત્માઓની કેટેગરીઝ આપેલી છે કે એમાં એના સબ્જેક્ટિવ પેરામીટર્સ કેવી રીતના આપણે નક્કી કરી શકીએ આપ્યું છે. કે જેમ એમણે કહ્યું કે આમંત્રિત આત્મા છે એટલે ઉચ્ચ કક્ષાની પવિત્ર ઉર્જાવાળી આત્મા છે, તો એ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હશે ત્યારે માતાને પવિત્ર સ્થળોએ જવાની ઈચ્છા થશે, માતાને એવા હોમ યજ્ઞ કે કોઈ પણ પવિત્ર દાન કરવાનું, એવા બધા કાર્યો કરવાની ઈચ્છા થશે. માતાની ખુદની જ પ્રવૃત્તિ એ તરફ થશે, કારણ કે એના ઘરમાં એક ઉચ્ચ કક્ષાની આત્મા આવેલી છે. અને બીજું જે તમે કીધું કે મોડર્ન સમયમાં શું કામ આવશ્યકતા છે, તો અત્યારના સમયમાં આપણે બધું ડિઝાઇનર જોઈએ. વી વુડ લાઈક ટુ ગો ફોર ડિઝાઇનર વેર્સ, ડિઝાઇનર. Very beautiful video. Here what we learn, I just want to summarize for our international audience that we are living the time when everything is designer. Our clothes are designer clothing, our furniture is designer furniture. Everything that we have in the physical amenities or our life is very pre-designed, and materialized things. But we never think about if we can have designer children also, and how Ayurveda or the Vedic knowledge can help us. So Mohit ji explained it so beautifully that there is an effect of thoughts, as Swamiji also taught us. The thoughts of mother who is pregnant and who wants to nurture the baby in her womb, if those thoughts are divine, those thoughts are pure, then the life of the future of the baby is going to be totally different. But it does not start after being pregnant. As Mohit ji was explaining, it starts even 6 months before or earlier than that, that you start practicing spiritual practices like meditation and yoga and so many things to purify your entire physical, mental and emotional body. You elevate the vibration to such a level that, as you know, the law of attraction works. Positive thoughts, positive energy will be attracted through your positive status, positive aura. And if you develop that state, then automatically the soul that is going to enter in the mother's womb will be a positive soul.
highly evolved ascended master soul that will be coming, and that is going to change the future of the child. If a mother is thinking, as Swamiji says in his discourse, if mother is thinking that, oh, I did not want to become pregnant this time, I wish I did not have this baby this time, then the Vishuddhi or the throat chakra will be blocked for the child, and it takes long time. Of course it can be cleared, but it can take long time of sadhana or practice of meditation and other things to purify that chakra. So there are many different chakras in the body of a child, of the infant inside, and if that can be cleared through positive practices, then it's amazing. Hetalji explained it further that that helps the child to develop in the later stage also, that when the mother has received the positive soul or the divine soul, then she will be willing to go to the divine places like church or temple or place of worship. She will be interested in eating the different food than what normally she eat. For example, my wife, when she was pregnant with second boy, Raj, she said that she always wanted to eat only fruits, because probably this child who was coming was a sage or saint in the past life, and he did not live in the city or populated the civilized world. So he always have the desire. Always had the desire for fruits, and even today, Raj, my second son, is almost 25. He still likes fruits more than other food. So these kind of things happen. It is not something that we are telling you just for the sake of giving the program, but this effect comes as a sanskara or the values that a soul is bringing from their past life. Okay, so this is very, very, very powerful knowledge and insight that we are bringing through Sanatan Dharma or Hindutva. Let's go on the next part of the program. વિદેશમાં હવે બહુ જાગૃતિ આવી ગઈ છે. વિદેશમાં લોકો ડિઝાઇનર બેબી માટેનું પ્લાનિંગ એને લાવતા પહેલાં કન્સેપ્શન એટલે ગર્ભધારણા પહેલાં કરે છે, કે ધારો કે કોઈ તમારે સ્પોર્ટ્સ પર્સન કે સાયન્ટિસ્ટ બનાવવું છે તમારા બેબીને, તો એ પહેલાંથી એવા વિડીયો જોવે, એવું વિષયોની ચર્ચા કરે, એવું ચિંતન મનન કરે, પછી કન્સેપ્શન થાય, ગર્ભધારણા થાય, પછી પણ એવા પ્રકારના વિડીયોઝને એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરે જે માતા પિતા બંનેમાં ઇન્વોલ્વ, અને બાળકના જન્મ પછી પણ એને એ તરફ સ્પોર્ટ્સ પર્સન બનાવવું હોય તો એને બચપનથી એ બતાવે, એ ધીમે ધીમેની તાલીમ આપે, તો એ એક આખી છે ને આખી એક સિક્વન્સ પૂરી થાય, અને પછી જ્યારે એ બાળક મોટું થાય અને જે તે ક્ષેત્રમાં પ્રદાન કરે તો ત્યારે એનું વિલક્ષણ પ્રદાન થાય ને, કારણ કે એ ઓલરેડી પ્રોગ્રામ ચાઇલ્ડ છે, કે તમે એના માટે પ્રોગ્રામિંગ કરેલું છે. આપણે સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામિંગ કે આપણા બધા પ્રોગ્રામિંગ માટે બહુ એલર્ટ હોઈએ છીએ કે આ તમારું પ્રોગ્રામિંગ હોવું છે, કે મારે ડિઝાઇનર ડ્રેસ જોઈએ છે, ખાસ માતાઓને કે ડિઝાઇનર ડ્રેસીસ પહેરવા બહુ ગમતા હોય, તો ડિઝાઇનર બાળકો લાવવા કેટલા જરૂરી છે. અને વૈજ્ઞાનિકો આજકાલ સંશોધન કરી રહ્યા છે કે આવનારા સમયમાં કદાચ આપણને સંશોધનો દ્વારા ખ્યાલ આવે કે જે ડીએનએ છે ને, મનુષ્યના મૂળરૂપ એની શું કહેવાય લાક્ષણિકતાઓના મૂળરૂપ રંગસૂત્રો, એ ડીએનએમાં પણ આ ગર્ભ સંસ્કારની સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયા દ્વારા કદાચ પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે એવી શક્યતા છે, સંશોધનો ચાલી રહ્યા છે. અને સાયન્ટિસ્ટ કોલ ધીસ ચાઇલ્ડ એઝ સ્ટાર ચાઇલ્ડ. આવા બાળકોને સ્ટાર ચાઇલ્ડ કહેવામાં આવે છે, કે એ લોકોની આખી મેં કીધું ને વિલક્ષણ પ્રદાન કરે, આખી લાક્ષણિકતાઓ જ અલગ હોય છે. તો આપણે આપણી કોઈ પણ લેવલે હોય, કે આપણે ગામડામાં રહેતા હોય કે શહેરમાં હોઈએ કે વિદેશમાં વસતા હોય, આવશ્યકતા શું છે મોડર્ન સમયમાં આપણી, કે આપણને એક સારું બાળક જોઈએ. અત્યારના જમાનામાં જે બાળકોના પ્રશ્નો છે, કે જે બાળક માનતું નથી ને ખોટા રસ્તે જાય છે ને એટસેટ્રા એટસેટ્રા, તો મોડર્ન સમયમાં શું કામ આવશ્યકતા છે, તો અત્યારે સૌથી વધારે છે ને બાળકો અત્યારે તરંગોથી વધુ ને વધુ પ્રભાવિત થાય છે, કારણ કે એની સંવેદનશીલતા વધારે છે. વિચારોના આખા તમે વાત કરી એમ એના ઉપર આખું બાળકોનું બહુ પ્રદૂષણનું આખું ઇફેક્ટ થાય છે બાળકો પર. પ્લાનિંગ એટલે કેવી રીતે પ્લાનિંગ, કે આજના સમયે શું સમસ્યા છે? આજની સમસ્યા છે કે વિચારોના સમસ્યાથી ગ્રસ્ત છે, સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, આત્મવિશ્વાસનો અભાવ, આ આજના સમયના પ્રશ્નો છે. પણ એ જો ગર્ભ સંસ્કારની વિધિથી બાળકને જન્મ થાય તો આ બધા પ્રશ્નોનું નિવારણ થઈ જાય છે. અને આનું પ્લાનિંગ છે ને બહુ પ્રાચીન સમયમાં પહેલાં આપણા શાસ્ત્રોમાં આપેલું જ છે. જેમ કે જે શ્રી કૃષ્ણદત્તજી મહારાજે કહ્યું કે ભગવાન રામના જન્મ પહેલાં
હું ઉદાહરણ તરીકે તમને સમજાવીશ કે એ લોકો કેવી રીતે પ્લાનિંગ કરતા. તો ભગવાન શ્રી રામના જન્મ પહેલાં એમની માતાએ તૈયારી કરી હતી કે જ્યારે પણ ખબર પડી કે ગર્ભધારણા થઈ છે, એટલે કે ને પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ કરાવ્યો હતો. આપણે છે ને એને બહુ નાના સ્વરૂપમાં લઈ લઈએ કે પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ એટલે કે કોઈ એવી હવનની વિધિ કરાવી હશે. એ યજ્ઞ નહીં, આ છે ને એક લાંબી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં માતા અને પિતા ખૂબ પહેલેથી તૈયારી કરે, અને માતાની તો ખૂબ પહેલેથી તૈયારી થતી હોય. તો એક સારી આત્મા આ ધરતી ઉપર આવે એના માટે એ લોકોએ પહેલેથી તૈયારી કરી હતી કે એમને ખબર હતી કે રાજ્યમાં રાજસિક ગુણો હશે, મહેલમાં રાજસિક ગુણો હશે, તામસિક ગુણો હશે, આવું હશે, તો મારે મારા બાળકને એક સાત્વિક સંસ્કારો આપવા છે, સાત્વિક ગુણો આપવા છે. તો એમણે એમની માતાએ પહેલેથી તૈયારી કરી હતી કે એમનો જન્મ, ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ હું મહેલમાં નહીં આપું, હું એનો જન્મ કોઈ નેચરલ પ્લેસે, કોઈ ઋષિમુનિ, કોઈ એમના સાનિધ્યમાં આપીશ, કે જે એમના સાનિધ્યમાં, કોઈ ઋષિ મુનિના સાનિધ્યમાં નિર્વિચાર અવસ્થામાં જો એ બાળક આ ધરતી ઉપર આવશે તો એની પર કોઈ પણ વિચારની ઇફેક્ટ નહીં હોય, કોઈ પણ નકારાત્મક વિચારની ઇફેક્ટ નહીં હોય, કોઈ પણ આત્મવિશ્વાસનો અભાવ, ટેન્શન, તણાવ, એવા કોઈ પણ વિચારનું એની ઉપર અસર નહીં હોય. એટલે એ જે બાળક આવશે એ બાળક શ્રેષ્ઠ હશે. સમાજમાં ચાલેલા વિચારોની જે કહે ને કે અત્યારે એવી કોઈ દવા નથી મળી, હાલમાં તો સાયન્સ પાસે એવી દવા કોઈ નથી કે એવી દવા ખાવાને વિચારો બંધ થઈ જાય નથી. ત્યાં સુધી આ એક ઉકેલ છે, શ્રેષ્ઠ ઉકેલ છે. આપણા બધા પાસે એક અવસર છે, જે લોકો પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે એમના પાસે અવસર છે કે આજના સમયમાં તમે જે ચિંતા અને સ્ટ્રેસ રહે છે ને મા બાપને કે બાળકનું ભવિષ્યમાં શું થશે, એને આગળ કેવી રીતે વધશે, એ સર્વાઈવ કરી શકશે કે નહીં કરી શકે, તો આ બધા જ પ્રશ્નોનો જવાબ જો પ્રાચીન ગર્ભ સંસ્કાર વિધિ અને એમને કહ્યું એ મુજબ આયુર્વેદ, આ બંનેના કોમ્બિનેશનથી કરવામાં આવશે ને તો એક શ્રેષ્ઠ આત્માને આ ધરતી ઉપર નિશ્ચિત પ્રમાણે આમંત્રિત કરી શકાશે. એટલે એમણે જે કહ્યું ને કે એ એક પવિત્ર સ્થાન પર જન્મ આપવા માંગતા હતા, તો એ છે ને પર્ટિક્યુલર સ્થાનનો પણ ઓરા હોય છે, આભા મંડળ હોય છે. તો કયા સ્થાને બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યાંનું આભા મંડળ કેવું છે, એટલે ત્યાં કયા લોકોએ કેવા વિચારો કરેલા છે અને એના મુજબ ત્યાં કેવી ઉર્જા સ્થાપિત થઈ છે. તો આયુર્વેદમાં એના સંદર્ભો છે. આયુર્વેદમાં બાળકના જન્મ માટે ગર્ભ સંસ્કાર અંતર્ગત એક અલગ જ ભવન બનાવવાનું વિધાન છે. Most of us could probably understand this in English also because there were English subtitles, but there is an importance of place, there is an importance of thoughts, and there is importance of what is the spiritual state of parents. That is very important before conceiving the baby, and it has been tradition in our culture that mother and father invest a lot of time and preparation before bringing the baby. As most of us might have seen that this time is such that babies are accidental babies. And sometimes, as currently going on in America, there is so much fight going on about changing the abortion laws. Okay, so world is going in totally different direction. World is going in totally materialistic way of looking and on physical way of pleasure. But we have to understand that even a bird, before bringing the baby, prepare the nest, then it conceive the baby or lay the egg. How come we human beings are going so down, so low, that we are not preparing and planning for our children before even bringing the baby on the earth? If we look in the nature, we can learn so many things. These are the natural values. These are the spiritual values, moral values that can help us grow and evolve spiritually. So that is the reason why we included this concept. Somebody is asking if we can get to know about this video more. Yes, you can go on Soul Satsang channel. Today's program is going to be available to you, and we will also include the link of the original video that we have included in this program. Okay. Yeah, one of the program conducted by Samarpan America too. It is in English in YouTube channel. And another one is in Hindi, Garbha Sanskaras Punyatma. I think it is on collective meditation YouTube channel. So you can explore that. And if you can find it, you can text. I'll message the links. Yes, Sonalji has already added the link. Thank you very much, Sonalji. So these are other programs that you both have given, and
promoted this Gurukarya in different parts of India. And I think this was 60th All India Congress of Obstetrics and Gynecology, where you have promoted this concept of Garbha, Dharna and Ayurveda. Let's go on the next. So you want to add any additional comment about this topic, or we can move on next? बड़े ये लास्ट क्वेश्चन ही है. चलो फिर, समर्पण ज्ञान ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन किया, उसके बारे में थोड़ा बता दो जल्दी जल्दी. मुझे ऐसा लग रहा है कि जीवंत गुरु जीवन में आने के बाद अब तक के जो सारे के सारे जो शब्द थे, मैंने जो पढ़ा था या जो अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा था, उसको जो समझने की कोशिश कर रहे थे, उससे ज्यादा जीवंत गुरु आने के बाद उन सारे शब्दों में जान डाल देते हैं, उसको अनुभव करना सिखा देते हैं. ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक सिर्फ शब्द के बारे में पता चलता है, ये उसको अनुभव करना सिखा देते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. फिर किसी भी धर्म की पुस्तक हो या किसी भी कोई भी ग्रंथ हो, उसको जीवंत कर देते हैं. ये बहुत बड़ी बात है. तो मुझे लगा कि जीवन गुरु का जीवन में आना, ये सबसे बड़ी सिद्धि हमारे लिए यही है कि हम सारे के सारे शब्दों को अनुभव करना शुरू कर देते हैं. ये जिसने चखा है वही समझ सकता है, ऐसी बात है. ये ऐसी बात है कि दूध है, दूध के बारे में हम स्वामी जी कहते हैं ना कि जान सकते हैं कि भाई गाय दूध देती है, दूध सफेद होता है, दूध मीठा लगता है, लेकिन जिस दिन पी लो ना तो ये प्रश्न और ज्ञान सब मिट जाएगा. अरे इतना मजा आता है, इतना पेट भर जाता है, इतना अच्छा लगता है, तंदुरुस्ती शक्ति मिलती है. तो दैट इज द खुशी, that is the happiness that you get out of it, and that is amazing. Jivanta Guru, living Guru's presence in our life, it is a matter of experience or अनुभूति. Beautiful. यही इम्पोर्टेंस है ना कि आज तक देखा जाए तो परमात्मा सुनते थे, पर परमात्मा को अनुभव कहाँ किया था इससे पहले. तो वो जीवंत गुरु आने के बाद अनुभव हो रहा है. अब भी अनुभव हो रहा है. हम जहां भी जाए, किसी भी जगह पे जाए, तो यही एक यूनिक चीज है. हम किसी भी जगह पर जाए और अगर हम अपनी आंख बंद करके अपने हाथ आगे करें तो अपने को वो चैतन्य महसूस हो रहा है, वो वाइब्रेशंस महसूस हो रहा है, क्योंकि इस वक्त परमात्मा इस धरती पर है. इसलिए सही है. और हम कनेक्टेड हैं चेतना के साथ. हाँ, जो बहुत दूर का है, वो केवल और केवल एक समर्थ गुरु के कारण, एक माध्यम के कारण, अवतार के कारण एकदम नजदीक का हो गया, अपने पास का हो गया. सही है. तो ये तो केवल इनके ही जीवन काल में हो सकता है. इसीलिए लगता है कि इनके जीवन काल का एक एक क्षण का लाभ हम सबको लेना चाहिए. मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, हर बार, हर गुरु कथा में कहता हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ. तो ये एक अवसर है. आपने एक दूसरी बात भी कही थी कि जीवंत गुरु के अपने जीवन में आने से हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है. हमारे जीवन की सही दिशा जीवंत गुरु के साथ ही होती है. वो जरा थोड़ा आप उसके ऊपर इलाबोरेट कीजिए. वो जीवंत गुरु को वो जीवन में आने के बाद अपने अंदर क्या पड़ा है, अपने अंदर कौन सा गुण है और कौन से गुण में अपनी मास्टरी है, वो जीवंत गुरु निकाल सकते हैं. वो अपने से भी ज्यादा अच्छा अपना अध्ययन वो कर सकते हैं. सही है. और वो अपने से भी ज्यादा अध्ययन करके अपने को बता सकते हैं कि ये क्वालिटी तुम में सबसे श्रेष्ठ है. और उसको, उसी क्वालिटी को, उस जैसे क्वालिटी तो रहती है, पर उसके साथ उसको सही दिशा भी देना चाहिए ना. वो सही दिशा भी देते हैं. सही कि वो क्वालिटी के माध्यम से वो आत्मा मोक्ष की तरफ जाए. वो आत्मा ऐसी क्वालिटी ना हो जिसके कारण वो आत्मा कहीं और फिर से बंध जाए. तो दिशा जो बहुत जरूरी है कि तुमको एक मिलने के बाद तुमको ऐसी दिशा में लेके जाए जहां पर मुक्ति हो, जहां पर तुम्हारा द्वार खुलता हो आगे का. ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसी भीड़ से हम कहीं और अटक जाए. तो ये केवल वही कर सकते हैं. एक तो अपने अंदर से गुण भी निकालते हैं और एक सही दिशा भी देते हैं. ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा very beautifully केवल यही कर सकते हैं. So I want to say that in English, that in my personal life, I have moved from Navsari to Mumbai for my further studies in college. Then after marriage, I moved to Montreal in Canada. Then after I met Swamiji,
and my family was coming from India to support them. I moved to Raleigh in North Carolina, USA. I struggled a lot, and there were times that I was totally lost. I was totally confused, and it is like walking in the dark jungle. But in the dark tunnel, you see a ray of hope. For example, when we were watching the picture of Swamiji, that in the night time, they stayed in the cave, and while morning took place, Swamiji saw a ray of light coming from the inner cave, and that ray of light was the Guru's energy. That is the energy that guides us in our life. I have never worried about what will happen and how I will manage, but my Guru always guided me. My Guru always told me, go in this direction. Whatever is needed, you will be provided. But take this step. And without worrying, without even thinking, I jumped into that. When Swamiji came for the first time, same situation happened. I did not know who is this Shivkrupanand Swami. I didn't know who is this Guru. I didn't know what is Samarpan meditation. But my inner voice was so strong. My connection with Swamiji from the past life was so strong that I said that I want to meet him. I want to bring him to this world. And even though Gujarati Samaj or my society did not support me, even though my wife was not ready, I sponsored Swamiji. And today, rest is history. Today, if Samarpan meditation is spreading so well in Americas with so many sadhaks, soulful collectivity, it is because I listened to that soul's voice. And that soul's voice was coming from Swamiji's guidance, Guru Shakti's guidance, which is changing the life of thousands and thousands of people all over the world. We have to listen to the voice from inside that Jivanta Guru, living Guru, is giving us. And I want to correct one thing that you are saying, that it is happening only because Swamiji is living right now. Yes, this is the starting point for us in our lifetime. It started 800 years ago, and it is going to continue for next 800 years through Mangal Murti. So we are at the point of junction. We are at the point while Swamiji came back in his life as a human being for the last birth. Okay, but the intensity, the strength of this vibration, this Chaitanya, this consciousness is at the top at this time, because Swamiji is living during this time. It is going to continue for next 800 years. Anybody who wants to get the spiritual awakening, they will be able to find it through Mangal Murti for next 800 years. Thank you very much, Mohit ji. Or Hetal ji, I want to know from you also, what is your special message for our sadhaks and those who are practicing Samarpan meditation and those young parents? I'd like to say that as a professional, as a parent, and as a human being, if you would like to live your life at the full content, happily, and with some enhancement of your internal qualities, one should practice meditation regularly. And another short verses where you have got we have got the chance to interact. We had a group of ladies and interact with Guru Ma in the last Anushthan. So I'd like to conclude with that. Can I share it in Hindi, or Yes, shall I translate it? Because it's the pure words of Puji Guru Ma. That's why. Absolutely, absolutely. There was a group, and as we all know, Puji Guru Ma interact with groups in Anushthan, and at the end of, I think, some days interaction with the group of girls or ladies, many people asked few questions to her, and she explained very well some of the concepts. She explained in detail that we are not aware about the detailing of these words like collectivity and other things. But the essence, what I have found from that is that once she shared that हम बाकी कुछ सीखे ना सीखे, समर्पित होना सीखना चाहिए. समर्पित होना सीख लो तो ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है, स्थिति भी अच्छी हो सकती है, समस्या भी ठीक हो सकती है.
आप हर चीज के लिए प्रश्न पूछते हो, लेकिन समर्पित हो जाए क्या, ऐसा नहीं पूछते। सही है। Then those who were listening it, they were really went inside. That this is the question we have never asked to Puji Guru Ma since last few days, and we have never asked to ourselves that shall we go for surrender and like that. And somebody asked that samarpit hona yani kya, सब कुछ accept कर लेना. Then Puji Guru Ma replied that हाँ, लेकिन कुछ भी नहीं करना समर्पण नहीं है. Then she has given an example. मराठी में कहावत है, असेल माझा हरी तर देईल खटल्यावरी. उसका मतलब ये होता है, यानी कि मेरा हरि है, वो मेरा हरि है तो वह मुझे खाटले पर बैठे बैठे सब देगा. सही है. She said, लेकिन उसके लिए मेरा हरि चाहिए ना. सही है. पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली मराठी में था, फिर उन्होंने समझाया कि मराठी में ऐसा कहते हैं कि अगर मेरा हरि है तो वो मुझे बैठे बैठे सब देगा, पर लेकिन उसके लिए मेरा हरि चाहिए ना. मेरा हरि है तो सब खाटले पर मिलेगा, तो उसके लिए मैं 100% विश्वास करती हूँ तो होगा. उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे नरसिंह मेहता को उनकी भाभी ने उबलता हुआ पानी दिया था नहाने के लिए और कहा कि बुलाओ, अगर कृष्ण है, अगर वो है तो वो तुम्हारा पानी आके ठंडा करेगा. और नरसिंह मेहता ने भजन गाना शुरू किया तो उतनी ही जगह पर बारिश हुई जहां पर वे खड़े थे और पानी गर्म था. क्या बात. फिर पूज्य गुरु माँ ने कहा कि ऐसा होने के लिए आपका हरि होना चाहिए ना, तो उसके लिए आपका समर्पित भाव होना चाहिए. तो समर्पित होना मतलब कुछ नहीं करना नहीं है, आपको अंदर से जो सॉल्यूशन सूझता है वो करो. प्रार्थना करके हर एक कार्य की शुरुआत करो कि स्वामी जी जो योग्य हो वो करवा लो. फिर उन्होंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना की थी, वो एक डिश बनाने जा रही थी कि स्वामी जी आज मुझसे बनवा लो, तो वो बहुत अच्छे बने थे. तो ये मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है पूज्य गुरु माँ की ओर से कि असल माता हरि पर देल खटल्यावरी पर हमारा हरि होना चाहिए. Yes, very, very true. I think this is the essence of Samarpan. This is the essence of our life. We, as Swamiji says, are always मुझे दे दे, मुझे दे दे. We are begging, we are asking. हम मांगते ही रहते हैं, लेकिन गुरु तो देने के लिए तैयार है. ऐसे ही हाथ रहता है. देखो आप सूक्ष्म शरीर की फोटो को देखो, वो ऐसे हाथ देके तथास्तु ही करता रहता है. He is there to give you. But what we are asking, we are not asking for the surrender. We are not asking for the spiritual progress. We are asking for the material thing. So if we want to learn something, what we want to learn, what we should ask, God, Swamiji, teach me how to surrender myself. That is the most important thing that you can learn. And I will also add one more thing, that problems are going to remain in our life. It is not going to go away. So I always tell God, before I met Swamiji, no matter how much problem you give me the courage and strength to accept them and to go through that, okay, to pass through that, because I have such a strong faith in God and my inner soul that if He put me here, He will put me through this. If God is putting you in the trouble, He is going to get you out of also. But you don't get attached to the position. You don't. Swamiji says that some people are always getting so attached with their sickness that अरे मैं तो 25 गोली लेता हूँ, मैं तो 30 गोली लेता हूँ. अरे भाई तू बीमार है तो इसमें इतनी सब एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है? Rather, you want to have positive thoughts, and Samarpan meditation is going to teach you how to let go and accept anything and everything as it is, whether it is a person, it is a place, or any life situation. So that is the beautiful advice you shared with us, Hetal ji. We really, really appreciate. आज का जो ये इंटरव्यू था, इतने बिजी होने के बावजूद आप लोगों ने जो टाइम दिया, बच्चों के साथ इतना भागदौड़ चल रहा था, but from the bottom of our heart, I want to say thank you. और एक प्यार भरा आमंत्रण सारे अमेरिका के साधकों की ओर से आपको दे रहा हूँ. Please come and visit us in Americas, and we will do some Gurukarya together on this topic. Okay? We do thank you all, especially you and the team and those who are listening. And thanks
just not for listening, but for this Gurukarya of interaction and way you people are connecting with each other. It is a memorable session for us too. And thank you for invitation and Gurukarya collectivity. मैं सबको एक ही कहता हूँ, मेरे पास सिर्फ प्यार है और समर्पण है, बाकी मेरे गुरु का है। आप जितना जो कुछ भी लेना है ले लो, हम बांटते रहेंगे और इसी तरह हर महीने एक अच्छे प्यारे परिवार से मिलते रहेंगे। बाकी का मैं सोनल जी के हाथ सपोर्ट करता हूँ। ऑल द बेस्ट। जय बाबा स्वामी। कुछ और हमारे साथ क्षण गुजार लीजिए। आई नो यू हैव हैड अ लॉन्ग मॉर्निंग एंड इवनिंग, एवरीबडी इन यूएस एंड इंडिया एंड अदर कंट्रीज आल्सो। तो ये सेशन है, अगर जिसने भी आज का चैतन्य एंजॉय किया और ऐसा लगा कि मोहित जी, हेतल जी बस बातें करते चले जाए और समय थम जाए, तो उसी लाइन पे अगर आपको कोई भी साधक ऐसा पता है जिसने गुरु सानिध्य प्राप्त किया है और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो प्लीज reach out to us and tell us about those sadhaks who would like to tell more about it and spread the energy of Swamiji through them to us, to the world. So with that, we will move on to a little video. शब्द तो बहुत छोटे हैं, पर it is a way of expression from us, from our team to you, कि आज का सेशन आप लोगों ने इतना सुंदर हमको आनंद वर्षाया है कि ऐसा लगा कि कितने शब्द, कितनी कहानियां, कितना ज्ञान आज आपके थ्रू बहा है। आपने जो स्वामी जी का सानिध्य पाया होगा उस समय, और आज हम तक एक एक सेंटेंस हमको एज इज ला के दिया है और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम सूक्ष्म शरीर से स्वामी जी के कनेक्ट हैं। हम दिस इज समर्पण का प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पर भी यहाँ ध्यान होता है। अगर ध्यान में अगर एक आत्मा भी जुड़ती है तो ध्यान ऑनलाइन कंडक्ट होता ही है। तो आप हर छोटी छोटी चीजों से हम उसमें से ही रिचार्ज हो गए हैं कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है। और जैसे कि गुरु ने आपको आपके जीवन का ध्येय बताया कि गुरु कथा मोहित जी का ध्येय था और सब में बांटना, गुरु का संदेश सब में बांटना, और हेतल जी का आयुर्वेद was her probably the wish for from last birth की through आयुर्वेदा गुरु का जो सपना है वो सारी दुनिया में पहुंचाना। तो आज वी प्रे दैट जिस तरह से आपने अमेरिका के लिए प्रे किया था कि यहाँ पर भी गुरु सानिध्य और एनर्जी मिले, समृद्ध देश है पर फिर भी उस चैतन्य से परे है, तो आज उस तरह से आपने प्रार्थना की थी। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका जो भी सपना था, हम यूएस अमेरिका और सारे वर्ल्ड की तरफ से, कि वो पूरा होके रहे और आप जो देना चाहते हैं इस दुनिया में वो दे के रहें। तो thanks to you and thanks to Swamiji for this today's session, or thanks to the TIS. Thank you so much. I think we are much thankful to Swamiji. We all उनके कारण ही हम कनेक्ट हुए हैं, हम कहाँ एक दूसरे को जानते थे, we were not known to each other, and we too enjoyed the session. So we are really thankful to Guru Shakti. आप सब सुनने वाले थे, इसी कारण हमको फिर से स्वामी जी की वो समय में गए, वहां पे सब कुछ याद किया। पहली बार जो मुलाकात हुई थी तो वो हमको सब रिकॉल हुआ। तो थैंक्स टू यू पीपल कि आपके कारण हमको सब फिर से याद करने को मिला। थैंक यू। मोहित जी, हेतल जी, यहाँ की आत्माएं बहुत ज्यादा प्यासी है और बरसों से प्यासी है। तो हम यहाँ पे कोई आता है ना तो उसे बस खींच ही लेते हैं अपने पास। की जैसे शुरुआत हो रही थी, हम थोड़े थोड़े सब शरीर भाव में थे। कभी हमको बैकग्राउंड में नॉइसेस सुनाई दे रही है, कभी बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही है, पर जैसे जैसे चलना चालू किया हम दौड़ते चले गए और दौड़ते दौड़ते उठते चले गए इस सेशन के एनर्जी में। एंड वी वर इन इट, कि ऐसा लग रहा था कि बस आप जो कॉन्वर्सेशन जो चैतन्य बह रहा है वो उस प्लेन में ही उड़ रहे हैं। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड टीआईएस टीम को भी धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी पवित्रता की वजह से और उनके और यहाँ के अमेरिका के और सारी दुनिया के दर्शकों की चाहत की वजह से हम इस प्रोग्राम को इतना लंबा और इतना सुंदर सानिध्य पा सके और आपकी गुरु कथा का ग्लिम्स सुन सके। बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। तो ये छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए और टीम के लिए। I want all our team members to put their video on. जॉब करना है तो कर, पर फिर क्या होगा कि तू जॉब करेगा, कमाएगा, सब कुछ होगा, फिर तू बुढ़ा होके मेरे पास आएगा, फिर तू मुझे बोलेगा कि स्वामी जी मुझे गुरु खाई दो। ऐसा स्वामी जी ने बुढ़े की आवाज में निकाला। फिर
इतना कहा था कि उस वक्त मैं तुझे बोलूंगा कि भाग बुड्ढे, तू मेरे कुछ काम का नहीं है, तू आज मेरे काम का है, बुआ नहीं में तू मेरे काम का। फिर मैंने पापा को फोन किया कि मैं क्या करूँ अभी, ये ऐसा स्वामी जी मिले थे और मुझे बताया। तो माय फादर टोल्ड मी कि हम तुम्हारे देह के माता पिता है, हम तुम्हारे शरीर के माता पिता है, तुम्हारे सही माँ बाप जो है ना वो सदगुरु है बेटा। तो जो सदगुरु तुम्हें बोले ना वही तुम्हें करना चाहिए। એ વિભાગમાં આપણે સમજવા માટે વેચીએ કે એક તો છે ને એવી આત્માઓ કે જેના માટે મા અને પિતા બંને તૈયારી કરી હોય, એટલે કે એ એવી આત્માઓ કે જેને આમંત્રિત આત્માઓ કહેવાય, જેના માટે જેમ મેડમે કહ્યું કે ગર્ભધારણાના 6 મહિના પહેલાંથી તૈયારી કરે. હવે એના આધારે એમાં થોડી આધ્યાત્મિક તૈયારીઓ પણ એમને કરવાની હોય છે કે જેનાથી એના વિચારો શુદ્ધ રહે. જેમ કે જ્યારે બાળક જ્યારે માના ગર્ભમાં હોય અને જ્યારે એમ કે ને 4 મહિનાનો હોય ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે જીવ પડ્યો. હવે જ્યારે બાળક માના ગર્ભમાં આવે છે એ સમયે જો માએ એવો વિચાર કર્યો કે અત્યારે તો હું ખૂબ વ્યસ્ત છું, અથવા અત્યારે મારે આની જરૂર નહોતી, હજી મારે ઘણું બધું કામ છે, એવો કોઈ પણ નકારાત્મક વિચાર કર્યો તો બાળક તો શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે, એને તો કોઈ વિચાર નથી એના સુધી. માનો સીધો વિચાર એ બાળક સુધી પહોંચશે અને બાળકની સફળતા ત્યાંથી જ રૂંધાઈ જશે. એટલે કે માએ ખૂબ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે કે મારે ત્યાં એક પવિત્ર શુદ્ધ બાળકનો જન્મ થઈ રહ્યો છે, તો મા પણ એ સમયે સકારાત્મક રહે, મા પણ એ સમયે ખૂબ એક સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા રહે અને બંનેની તૈયારીઓ કરે. બંને જો સાથે મળીને તૈયારીઓ કરે તો એ થયા એ આમંત્રિત આત્માઓ થઈ. મેં કીધું ને વાતાવરણમાં બંને પ્રકારની આત્માઓ છે. તો આપણે જો ઉચ્ચ કક્ષાએ હશું, આપણે સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા હશું તો સારી એનર્જી આપણે ત્યાં આવશે ને. આપણે જો સારી એનર્જી સાથે જોડાયેલા નહીં હોય તો પછી એ આત્માઓને આમંત્રિત નહીં કરી શકાય. એક વસ્તુ એ થઈ, એક પાર્ટ એ થયો કે એ સારી અવસ્થાએ સારું ધ્યાન કરીને બંને પોતાની એક સારી અવસ્થા બનાવી રાખે. બીજું કે એ લોકો છે ને વાતાવરણમાં એક ઉચ્ચ કક્ષા પર છે, એ કક્ષાએ એમને પ્રાર્થના કરવી પડે. મા અને પિતા બંને પ્રાર્થના કરવી કે અમારે ત્યાં એ લોકો આવે, પ્રાર્થના કરે, એમને ઇન્વાઇટ કરે. એટલે મેં કીધું આમંત્રિત આત્માઓ એમને ઇન્વાઇટ કરે ત્યારે એવી આત્માઓ એમના ગર્ભમાં પ્રવેશે છે, માતાના ગર્ભમાં. આના સંદર્ભો આયુર્વેદમાં પણ મળે છે. આયુર્વેદમાં છે ને બ્રાહ્મકાય, તામસ પ્રકૃતિવાળા, રાજસકાય, રાક્ષસકાય, આવી બધી આવનારી આત્માઓની કેટેગરીઝ આપેલી છે કે એમાં એના સબ્જેક્ટિવ પેરામીટર્સ કેવી રીતના આપણે નક્કી કરી શકીએ આપ્યું છે. કે જેમ એમણે કહ્યું કે આમંત્રિત આત્મા છે એટલે ઉચ્ચ કક્ષાની પવિત્ર ઉર્જાવાળી આત્મા છે, તો એ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હશે ત્યારે માતાને પવિત્ર સ્થળોએ જવાની ઈચ્છા થશે, માતાને એવા હોમ યજ્ઞ કે કોઈ પણ પવિત્ર દાન કરવાનું, એવા બધા કાર્યો કરવાની ઈચ્છા થશે. માતાની ખુદની જ પ્રવૃત્તિ એ તરફ થશે કારણ કે એના ઘરમાં એક ઉચ્ચ કક્ષાની આત્મા આવેલી છે. ये है आपका समर्पण. बहुत ही खूब. And I want to thank our audience because without your love and support we cannot do such a beautiful Gurukarya and such a beautiful collective work together. It is not one person's effort, it is from everywhere. And we really appreciate from such a busy lifestyle and time these young children. It's not easy to dedicate for this program, but Mohit ji and Hetal ji, you made this and you gave it full heart. So I really appreciate. Good night and have a wonderful day to everybody. I would like to invite Sagar for a very, very Thank you, Sonalji. Acharya, can you play the Pranamji, can you play the blessings video,
please? Wow, very beautiful. One more time. One more time. Okay. And I think there's someone that wants to say something. Jaideep Jaideep ji, Kumar. do you want to say something? Jaideep Kumar, किधर गए भाई? We can stop. Can someone unmute? Let the people unmute.